Congratulations. Here's the award. Very well deserved, Aspas. Show it to the camera. Up next, we also want to present. To do what they want with you. You keep it pretty free-flowing and easy. And Boaster, I have to ask, you faced off both of these teams who are in the grand finals today. Who do you think is going to bring that X factor in? I'm hoping PRX. You know, like, I do like the EG boys, but PRX has got my son on it. It's Jing's last game. Like, I have to root for them. Divine stuff, super nice. Yeah. I mean, the storylines are just too good. Last question, then I'll let you guys go. What do you guys make of the vibes out here right now? It's kind of crazy. Like I'm not the celebrity here, clearly, but like they're going wild for him. You know, it's kind of crazy. It's just a bunch of people come to see some people sitting in their pants playing video games. In my opinion, yeah. Well, if you would do me a favor, make sure this gets into Alfier's hands. No chance. No, I would take it personally if I were you. Alfia won MVP of the year at EMEA. Do you think it's well deserved? I think so too. Yeah, Yeah? I think he's very good. He's got work to do for next year though. Back to the grind. Well, fellas, thank you so much for joining us. We're actually going to throw it to Bren and Sideshow, who are standing by with just a little bit more chaos. What's up, Brennan Sideshow here, seeing what the people are up to at the Fan Fest, specifically at the Red Bull Run the Racks. People are out here playing ball. It's a beautiful day. A lot of ballers. Bren, I want to challenge you. I want to find you an opponent out here. I don't want to play ball, but I want to see you get humiliated by one of the fans, which is one of my greatest passions in life. I'd like you to pick an opponent out of the crowd, and then we're gonna see if you can beat them. Okay, well, I'm gonna cheat and I'm gonna slip behind the curtains as well of production and not pretend like I picked out a person already. But I'm going with you, Brian. I want to compete against you, bro. How you doing? Good. How are you doing? I'm doing all right. I'm feeling good about this. Listen, you haven't warmed up, right? You haven't warmed up? Okay, neither am I. This is gonna be good. Okay, I don't know. Do you want me to take my mic? Give me your microphone. You need to be able to. You need to be able to go properly. All right, we got Bryn right now. Bryn. 3, 2, 1. Let's get it, Bryn. I mean, I'm hanging out. Oh, that is a terrible air ball. An unbelievable air ball. Go, Brian. All right. So, Chris, Brian's been playing a little bit. How good is he? He completed all of high school, so he's pretty good with the shot. Okay, all right. He's been playing all throughout high school. Bren, I don't think has ever played by the look of him on the ball. He doesn't look that bad. He's making his shots. He's throwing it pretty nicely. You're a lot kinder than I would be, I think. Have you been enjoying your time here? Yeah, I'm having a great time. Yeah, the vibes are immaculate right now. Well, let's go and catch up to them. All right, y'all, make some noise, make some noise. Who's it gonna be? Bryn or Dang? Oh, another air ball. How are you feeling about being here in LA? Oh, the atmosphere is so energetic. The fans here are so just passionate about the game. I think this has got to be up for contention for one of the best crowds in Valorant. These guys are killing it. All right, there are very serious allegations out against you right now that I feel like we need to address. Okay. In fact, it's currently out on a sign right now that it says, I'll read verbatim, Tarek eats corn the long way. Discuss. Yeah, you know, I saw that sign and I was really hoping you wouldn't bring it up, but now that you did, sorry, bro. No comment. You go, bro. Predictions. Who you got? You know, my heart is obviously with EG, but surprisingly enough, my brain is as well. I think I got EG winning it, but I love PRX, and I'll be happy no matter what because I think it's going to be a great turnout and it's going to be a new winner, so it's a nice side to it all. I think we can all agree with that. Thank you so much, Tarek. We're going to go on a quick break. Don't go away. We've got a lot more people to talk to.
हाँ जी हेलो हेलो। आज घर से नहीं आ रही है क्या आवाज? आ रही है। आ रही है, that's great. You may have seen our next guest on TikTok or maybe the Don't Watch Valorant Champions करते हैं video. It's Yolanda. भाई बस Hi. देख ही रहा हूँ मैं, Okay, तो you गेम worked तो with अभी तक Baby No स्टार्ट नहीं Money करा है। on that shoot. अभी तो 1.5 घंटा है। I'm sure there are probably some आधा funny घंटा है stories ना? from this. He's so अभी 1.5 funny. घंटा Oh my gosh. 1.5 He घंटा actually was है? dancing so hard he actually तो pulled आजा फिर something. गेम खेल लेते हैं। But yeah, and then but the shots look good, and देख I'm just लेता हूँ। happy that हम्म? everything इनका is fine. पेपर now. एक्स और Like, I ईजी है ना hope दूसरी they- इनका हुआ था पेपर एक्स Actually, I जीती थी respect that so पहले much. The fact that he just goes कौन hard in इजी जीती everything थी? he does पेपर is एक्स outrageously X? admirable. I want to get your सही thoughts है। on अभी the हुआ vibes. था I want to इसी get your में thoughts on the crowd, on the energy that's हाँ going वो on. तो What इससे have you पहले thought, ना given परसों। that you're relatively new to the community and you've been welcomed परसों with वाला open तो arms? देखा था मैंने, What तो has this been like फर्स्ट for मैच you? देखा Oh था, my फिर नहीं gosh, देखा everyone's था। been really nice, which is really आज तो cool. फुल Because like पेपर when एक्स you go सबको into something new, you're kind of like, oh, is everyone हाँ gonna be एशियन okay इसीलिए with ना, me? I'm बट just so मैं सही new. बताऊँ But ईजी everyone's जैसे been ऊपर आई है so ना, मुझे like देख करके awesome बहुत and just अच्छा like so लगा है। supportive. So that's really awesome. Yeah. And one last I question. support You EG, were but talking about being like पेपर the एक्स जीतेगा Vietnamese तो बढ़िया है। representation here. There's actually one more Vietnamese इतना फर्क player वैसे नहीं here. पड़ता, तू He's सोया from नहीं? Bleed Esports, crazy guy. Vietnamese player. First time we're going to see him in the Valorant Pro मैं वही सोचा circuit. तू कैसे With the सोने जा रहा है, realization आज तो winners. How do you मैच है feel about फाइनल। that? That's awesome. Go Vietnam. Go Vietnamese people. That's my people. I need support. Wherever he is, I will give him a high five. All right, crazy guys. She's going आज to be फिर रखा है looking मैं for संडे को रखा you. है For the other Vietnamese person संडे ही here. है आज। All right, we are going to go over to नहीं Brookside. So इनका I think सैटरडे they're कल getting a है little bit of a manicure. मतलब So इनका over संडे to कल them. होता है आज सैटरडे है उनका मैं तो आज तो हमारा भी सैटरडे है, लेकिन 12 बजे संडे हो जाएगा We're ना। here at a nail wrap हमारा booth 12 at बजे the होगा जब Fan 12 बजे के बाद ये Fest, 5 and ये I भी would होता है never 5 turn बजे down में an सैटरडे ही opportunity to चल pretty up my रहा होगा co-caster. I Oh. made him grow a mustache for a reason. He's getting his lovely nails ये फिर से आ done गया this ओए। entire time, which I've roped क्या him है into. ये बंदे Yeah, को fabulous. You देख look रहा है स्ट्रीम की fantastic. नहीं देख Well, रहा I है? mean, I publicly humiliated क्योंकि you by हाँ making you miss a bunch कौन of है 3 pointers. Yeah, I mean, अरे just वो उस massive दिन नहीं whiffs था all over the The place. thing is, though, जो तू I कह रहा था ये think लड़का है you लड़की है? divine. You I've got to like say. it. So there's a bunch of different packs that you can choose एक ना from. साइड है सवा घंटे का टाइम लगा तो रखा है Arbor, Killjoy, अबे Raze, अभी Neon, लगाया etc. इन्होंने, Oh, पहले not नहीं Neon, था। I think I made that up. I मैं think तो पहले वही वो तो बोल रहा हूँ 1.5 And घंटा है then 1.5 I've मिनट gone 1.5 for सेकंड Raze. 5 I think सेकंड that ऐसे I think कर the करके Raze दिखा उसके is रहा बाद है। भी ये nice. स्टार्ट नहीं होगा उसके बाद भी Let's 15-20 do it. मिनट Might की be पक्की seeing होगी some Raze चलेगी gameplay a little bit later तो today. आज Big फिर Grand वैलो ही Finals. खेल Might be seeing some लेते हैं। Yoru gameplay. Might be seeing some sorts of 12:30 gameplay. बजे का टाइम है ना We don't स्टार्ट actually know. Yeah, I'm kind of jealous actually as well. I don't really have nails. I can't really do this. Yeah, But maybe Yeah, we can actually, swap out. I mean, yeah, I got to be honest with you. मैं I've वो कर रहा gotta be था honest और मैंने myself, बनाया था ना this फाइल is ऑर्गेनाइजर it hides मैंने सोचा उसको what वो would कर दूंगा usually कहते be हैं not उसका GUI बनाऊं उसमें तो ऐसी तैसी होगी तो जियो बट है तो सीधी सी है। बनाई मुझे लगा नॉर्मल रहेगा कुछ नहीं बस वही फ्रंट एंड ही करना है वो एक अबे इलेक्ट्रॉन वो करके तेरा था बैकएंड ही नहीं है ना उसका सही, बैकएंड सही करना पड़ेगा। बट बैक एंड अगर या तू कोड ही चाहता तो है है सिर्फ बैक एंड वाली बात है क्या नहीं बैकएंड बस माइक्रो सर्विसेज बनाना, ये तो बिना माइक्रो सर्विस के हुआ ना। मैं फाइल ऑर्गेनाइजर बोल रहा हूँ हाँ मतलब जहाँ तू सिर्फ ऑर्गेनाइज करेगा या फिर उस पे रखेगा भी, सिर्फ ऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज फिर ब्राउजर से थोड़ी करेगा तू, ब्राउजर में तो मैंने बोला परमिशन ही नहीं ब्राउजर से होता करता है, तो फिर यूआई कहाँ बनाएगा? वेब है ना वो। सॉफ्टवेयर वेब थोड़ा है अबे तो जेएस से कर रखा है ना तूने? तो जेएस वेब थोड़ी ना है वो जेएस करा है तो मतलब जेएस यूज कर रहा है, मतलब वेब ही यूज होगा, वेब टेक्नोलॉजी यूज हाँ होगा। अगर तेरे को वो तो कंप्यूटर पे पता भी है चलाना है
तो वेब टेक्नोलॉजी ही यूज होगा। हाँ तो उसका था यार तरीके ऑनलाइन और हुआ ही नहीं। तो ना फिर निकल पाया। कोई ना, आजा खेलते हैं थोड़ा। स्मार्ट वॉच लेनी है दीदी के लिए। क्या लेनी पता है? है तुझे? स्मार्ट वॉच। यार देख, मैं सही बता रहा हूँ, पहले तो मैं ऑडियो बंद करता हूँ। हाँ, स्मार्ट वॉच लेनी जा रही थी। डिलीट कर दो वीडियो, अभी तो कुछ किया नहीं है। मैं बंद ही कर दिया जस्ट तुरंत। अब बात पे आते हैं। देख, स्मार्ट वॉच लेनी है, सस्ती वाली मत लियो, मतलब 20,000 से 15,000 से नीचे की जो आती है ना, वो मत लियो। वेस्ट ऑफ मनी है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, सुन सुन। मैं मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं, सैमसंग ले ले, सैमसंग वगैरह जो 15 17 18 20 24 ऐसे मिलते हैं। मैंने मैंने बोट की ली हुई है, 5,000 की है घड़ी। इतनी चूतिया घड़ी है, इतनी चूतिया सॉफ्टवेयर है इनका, साला ढंग से काम ही नहीं करता है। तो मैं पहनना ही छोड़ दिया, पड़ा हुआ है मेरे ड्रॉर में। मैं बहुत बहुत शौक से लिया था, क्योंकि मेटेलिक बैंड था इसका, तो मेरे को अच्छा लगा और दिखने में भी अच्छा है। बट भाई इतना टट्टी निकला ना। सर्च कर, फायर बोल्ट करके है। बोट बोट फायर बोल्ट एक ही है। अच्छा, पता नहीं बहन जो बोट है या फायर बोल्ट। फायर बोल्ट, सॉरी बोट नहीं, फायर बोल्ट इनविंसिबल। और और ऐसे वॉचेस में, मतलब लो सेगमेंट में, ये वन ऑफ द बढ़िया कंपनीज में थी, जिसके मैंने रिव्यूज अच्छे देखे थे बहुत जगह। बट भाई इतना टट्टी निकला, क्या बताऊँ। कि जब ये लॉन्च हुआ था ना, उसके अगले ही दिन ऑलमोस्ट हो गया, 3 4 महीने हो गए होंगे। 3 महीने तो हो ही गया होगा कम से कम। कब लॉन्च हुआ? फायर बोल्ट इनविंसिबल प्लस, सॉरी, फायर बोल्ट इनविंसिबल प्लस। इनविंसिबल प्लस में स्टील वाला। 15 मार्च, मार्च में लिया था, 15 मार्च से ना, उसी डेट को लिया था जिस दिन आया था, उसी दिन। मैं रुका नहीं उसके लिए। अब भाई अवेलेबल ही नहीं है। क्यों ही अवेलेबल होगी, चला ही नहीं चूतिया वॉच। स्टील वाले अवेलेबल। कैसे भाई इनको रिव्यूज इतने अच्छे दे रखे हैं, सब पेड होते हैं क्या? 10,000 रिव्यूज हैं और 58% 5 स्टार, व्हाट द फक। टोटल 4.2 रिव्यू। सॉफ्टवेयर बहुत घटिया, देख दिखने में अच्छा है, बहुत अच्छा है मतलब, लेकिन कंफर्टेबल इतना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खासकर वो मेटल वाला बैंड। भाई बाल फंसते हैं इतने ज़्यादा। मतलब तू 250-300 का भी जो खरीदेगा ना नॉर्मल वॉच अमेजोन से, उसका बैंड इससे फार बेटर होता है। मेरे पास पड़ा हुआ है अमेजोन का, एक 500 का बड़ा खरीदा था, उसका तो स्ट्रैप बहुत अच्छा था। और इसका स्ट्रैप इतना घटिया मेटल वाला, फोटो में दिखा रखा है एकदम चिपका चिपका क्लोज स्ट्रैप, और एक्चुअल स्ट्रैप में इतना गैप है मेटल बचाने के चक्कर में। ब्राइटनेस ठीक है, बट रिफ्रेश रेट बहुत बेकार है। 60 हर्ट्ज लिखा हुआ है, एक्चुअल में है नहीं। कुछ कुछ स्क्रीन पे। और ब्लूटूथ तो कनेक्ट करेगा ना, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कई बार सेटिंग्स कुछ रखेगा तो अपने आप शट डाउन होते रख जाएगा। मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर स्मार्ट वॉच खरीदना है, वेस्ट ऑफ मनी होगी तू। नहीं, एम आई बैंड अलग चीज़ है, देख। वो स्मार्ट वॉच नहीं है, वो फिटनेस ट्रैकर है, तो फिटनेस ट्रैकर ले ले एम आई वगैरह के, बहुत अच्छे चलते हैं। मैंने भी यूज़ किया हुआ है। नहीं है भाई, एक चीज़ बिलीव में ना, मैं एम आई के प्रोडक्ट मैंने भी यूज़ किए हुए हैं, एम आई के फिटनेस बैंड वगैरह बहुत अच्छे हैं, रियलमी के भी अच्छे हैं। फिटनेस बैंड्स बहुत अलग हैं, वॉच स्मार्ट वॉच बहुत अलग होता है। स्मार्ट वॉच में भाई लिटरली इतना सारा फंक्शनैलिटी डालते हैं, म्यूजिक वगैरह प्ले करने का। हाँ तो भी जो भी है, मुझे नहीं लगता वर्थ इट। मेरा एक्सपीरियंस खराब हो रखा है। मेरी भी बहन मांग रही है, बोल रही है कि स्मार्ट वॉच खरीदो। तो मैंने बोला कि अगर चाहिए तो बढ़िया वाला दूंगा, तो मम्मी मना कर रही है, बोल रही है इतने पैसे भी खर्च मत कर फालतू में। तो बोला चलो ठीक है, उसने भी बोला कि कुछ और दे दे फिर।
मैंने बोला अभी दूंगा तो सैमसंग वाला इतना महंगा दूंगा तो फिर वो देख ले संभालेगी नहीं संभालेगी, हॉस्टल टाइम है। वो भी बोलती है ठीक है कोई कुछ और दे दो। तो भाई स्मार्ट वॉच तो बेकार है, नॉट वर्थ इट। एप्पल वॉच बहुत अच्छा है बट अगेन एप्पल वॉच कौन ही लेता है जिसके पास पैसे नहीं। ए आज मैं फाइनल स्ट्रीम करूंगा। Match found. बट म्यूजिक जब जब आएगा तो फिर म्यूट करना पड़ेगा, फिर से कॉपीराइट पड़ेगा। Oh, let's go. क्या कर रहा है फिर तो? वो कुछ कैसे नहीं कर रहा है, कुछ तो देख रहा होगा स्ट्रीम वगैरह, कुछ तो देख रहा होगा। ये लैपटॉप खोल के बैठ गया। Reloaded. Just have a little mishap. Welcome, as a certain someone says, to my world. स्ट्रीम कर रहा हूँ, देख लो। Reload him. हाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ, देख ले अगर कुछ नहीं करता तो। I gotta wait. Yikes. Grenade. क्यों ही स्ट्रीम कर रहा है? हाँ क्यों ही कर रहा है? ऐसे ही। क्या करूँ, खेलना था मेरे को आज, काम बहुत था, अभी तक मौका नहीं मिला। खेलने ही तो कर रहा हूँ, तो आप तो सही। 3. आ जाओ लोगों। देख CDM में। आता हूँ खत्म कर। I gotta wait. Satchel out. Heads up. Blocking sight. Reloading. Night night. Got him. अरे यार बॉडी ब्लॉक करते हैं। 10 seconds until stage change. देखिए स्ट्रीम अच्छी चल रही है मेरी। Nice try. See ya.
Stage 2. Go, go, go. इतना गंदा कैसे खेल सकता हूँ मैं? One down. Headshot. Grenade! Stage 3. Reloading. Embarrassing. Lock in sight. Stay down. Enemy killed. Take this. Get out of my way. Reload. Gotta wait. Rampaging rays. Who? Like what? Give me the stuff. Reload him. Charge your ults. My territory, my rules. Gotta go. Kills to go. मजा खत्म हो
ये चेक पॉइंट क्या होते हैं? किंगडम क्रेडिट्स वगैरह जो मिलते हैं। लगा दे टीडीएम एक लगा रहा हूँ बिना हाथ फ्रेश किए खेलेगा फिर पिलाएगा। Match found. यार इंडिया में जब G20 हो रहा है तो हमें ऑफिस से छुट्टी मिलेगी? मेरे ऑफिस वालों ने तो नहीं दिया छुट्टी, एटलीस्ट दिल्ली वालों को तो मिलनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम है। हाँ वर्क फ्रॉम होम है, क्यों मिलेगा तुझे? एक रीजन बता मेरे को, क्यों छुट्टी चाहिए तेरे को? उसने क्या करेगा तू कि भाई तू ऑफिस नहीं आ सकता? नहीं ऑफिस आ सकता हूँ ऐसे तो। देख बैंगलोर में जब वोटिंग हुई थी ना, इलेक्शन अभी रिसेंटली, छुट्टी क्यों दी है कोई बता? G20 तो में बैंगलोर में जो रहने वाले थे उनको छुट्टी मिली, क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते ना, आ नहीं सकते। दिल्ली में भी जिसका वर्क फ्रॉम होम भी है उनका भी बंद है, प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक प्राइवेट सब ऑफ है, गवर्नमेंट इसका पब्लिक। पूरा ही ऑफिस मतलब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। अब ऑफिस जिनका दिल्ली में ही है वो बंद है ना। हाँ तेरा ऑफिस तो बैंगलोर में है ना, वो तो बंद करेंगे। तो अभी बैंगलोर में इवेंट होता है तब भी तो हमें छुट्टी नहीं देते हैं ये लोग। यहाँ पर बैंगलोर वालों को देते हैं, जो बैंगलोर में है उनको छुट्टी है, आज मत करो कुछ। और जो दिल्ली में है लेकिन वर्क फ्रॉम होम है उनको छुट्टी नहीं देते बैंगलोर के ओकेजन वाले सही दिन है, भी। यही होगा। तो भाई हमारा तो दोनों तरफ से कटा, इधर से भी उधर। ओकेजन क्या बोल रहे? फेस्टिवल? फेस्टिवल वाला नहीं, जैसे मान ले और इलेक्शन क्या? हुआ तो बैंगलोर में छुट्टी थी इलेक्शन के दिन। और तू ठीक, क्या करेगा बैंगलोर की छुट्टी का? तू क्या करेगा? क्यों सही जाएगी प्रैक्टिकली? तो दिल्ली के इलेक्शन में मेरे को तो छुट्टी नहीं मिलती ना, मैं तो। दिल्ली के इलेक्शन में तुझे क्या करना है? वोट देने जाने इलेक्शन, के लिए? हाँ वोट ही देने जाने के लिए, जैसे तो बैंगलोर वालों को भी मिलती है ना छुट्टी इलेक्शन के दिन वोट देने जाने के प्राइवेट लिए। कंपनी है, उसकी मर्जी जो मर्जी करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं लिया ना। अरे तो वो दे देना थोड़ा छुट्टी हमें भी। क्यों दे दे भाई? अबे इसमें तो बनता, G20 वाले में तो कोई सेंस ही नहीं बनती। क्यों ही देंगे इलेक्शन तुझे वाले में बनता है वो? ना, दिल्ली में वोट देने का हुआ इलेक्शन था, वाले में बनता है उसमें थोड़ा उसमें सा। भी छुट्टी मेरे को हाफ नहीं डे मिली। फुल डे छुट्टी? हाफ डे ही दो, कुछ तो दो। बैंगलोर में तो फुल डे छुट्टी थी, सबको छुट्टी मिली थी बैंगलोर में जितने भी रहने वाले थे। प्राइवेट रहती है। अब तेरी मान ले पर्सनल दुकान होती है, दुकान बंद करके वोट करने जाता है। सब जाते हैं भाई, मतलब सब नहीं जाते ऑब्वियसली, लेकिन जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा तेरा बिजनेस होता, तेरे अंदर एम्प्लॉय होते तो उनको चाहता कि वो। अरे भाई तू छोटे लेवल पे बात मत कर, इतने बड़े लेवल पे बात कर जहाँ कंपनी इससे ज़्यादा खर्च देती है, उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। करोड़ों रुपए भाई हमारा दूसरे दो और निकल जाता। Reload. अरे योरू का क्लोन है। क्लोन नहीं है, क्या आ गया यार? इससे मत मुझे क्या पता था शॉट ही लेंगे। वाह हील अप स्क्वाड, 3 एचपी हील करी है इसने मेरे को, 3। और बगल से मार दिया, बैठ गया। हाँ बगल से मार दिया उसने। भाई क्या कर रहे हैं? वो पागल है क्या ये? तो बीच रास्ते में फ्लैश कर रहा है।
मार्शल आ गया भाई ये जो एरिस लेके बैठ जाते हैं ना अगर नहीं हाँ यार हील लेने गया था मार्शल हम नहीं ले सकते ना इस गेम में बाय करके 10 seconds until stage change. Stage 3. Enemy kill. Here. Raiders on a rampage. मेरी स्टिंगर कुछ ही नहीं हो रही नहीं दबा भी नहीं हो तीन बैठे हुए अंदर वहाँ पे 130 88 Get out of my way. New stage in 10. My ult's ready. कौन आ रहा है इतना अच्छा ये 1-12 पे है Blocking sight. Hawk out. Reloading. Got him. Time to jump. See ya. करावट करके बैठे हैं 2-14 पे है Joke's over. You're dead. Yikes. मार भाई अल्ट करके मार इनको भूत बना इनको मार तो रहा हूँ फ्रीज भाई जो अल्ट लेके पूरा उसमें बैठा हुआ है क्या करूँगा हाथ में रिलोड और मेरी बहन को साला पूरी टीम को वो कर रहा है There's another. 4-18 Oh, I gotta wait. Hawk out. Reloading. मैं घुस रहा हूँ भाई सब स्काई इतना स्पीड से घुस रहा है मेरे आगे आगे 4 किल पे है और ये हमें फ्लैश कर रहा है मेरे को स्काई ने भी बहुत बार फ्लैश करा मैं तो स्काई से दूर ही खेल रहा था इसीलिए लेकिन कैसे मर जाते हैं 4-19 तो तेरे को पता चल रहा है कि हम आगे जा रहे हैं मरा तो ये मतलब जाते रहेंगे आगे रुक जाओ पीछे रुक जाओ थोड़ा टीम गई मां चुदाने टॉप फ्रैगर मेरे लोड़े पे पर के लिए Let's go. इतना लॉन्ग पे आए नहीं बंदे ने फाइट ही नहीं लिया उन्होंने बहुत भागा ऑपरेटर हाथ में थी कोई आ ही नहीं रहा कोई आ ही नहीं रहा छोड़ो
मैं आगे गया तो मरूंगा ही मरूंगा। ये देख सेज लिया है, ये बॉल करेगा कस्बा में। ओ भाई और बॉल वो है ना, हमें भी दिक्कत देती है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये तुम्हें हमें ऐसा भी तो थोड़ा देख कि देती है। हमें वो अटैक कर रहे हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं, वो हमारे पे आएंगे। वन वे कर दे तो वो अलग बात है। वन वे कर दे वन वे मार। वन वे है तो इसमें कस्बा में अभी तक सामने बसेस के नीचे देख रहे हैं, वो बना हुआ हाँ बसेस के एकदम नीचे वो है, वहाँ पे वन वे हाँ हो सकती है एंट्री वालों के लिए, वहाँ से एंट्री भी है ना डिश के हाँ नीचे। हाँ। भाई कौन करेगा। अरे एक तरफ से करोगे दूसरी तरफ से मरोगे, वो वाली बात है। लेफ्ट से पड़ेगा ना उधर सामने से। ये लेन बस योरू भी बेकार है, योरू फिनिक्स तो बंदे बस सही है कि ड्यूलिस्ट को समझ के ले लेते हैं। क्या बेनिफिट है योरू का। योरू का इसमें कुछ नहीं योरू है, इसमें कुछ नहीं हाँ, है। नियॉन क्या ही बहुत कर अच्छा रहे एजेंट है जितना इसके बढ़िया अंदर है। फिर भी। सबसे बढ़िया भाई, सबसे बढ़िया रहना। अबे रेना अच्छा है, फेड अच्छा है। गेको अच्छा है, गेको को ऐसे ही वो करते हैं, कोई नहीं लेता गेको। किल करनी है ना ज्यादा बस, क्या हेड हेड ही हेड करते हैं। चलो ठीक है ऐसे भी तो। अरे यार 135 लगा रही है तुम्हारा किल नहीं कर भी उसी टाइम वहीं पर। I gotta wait. Nailed them. Charge your ults. I gotta wait. Here. क्या नहीं यार ले यार। मिड में है। अभी तो स्टार्ट ही हो जाएगा। और लेफ्ट में है Rainer's got the bloodlust. दोनों को हेड पड़े हैं फिनिशर Charge your ults. See ya. Reloading. Blocking sight. My ult's ready. Reloading. मिले। क्या One down. मैं तो जिसको मार रहा हूँ तो कोई ना कोई मार ही दे रहा है, मैं फालतू में 30 का डैमेज दे रहा हूँ। 149 का डैमेज दिया मैंने उसको, कोई और मार गया। हाँ लग मेरे को ऐसे ही रहा है। बड़े चूतिए भैंचो दी सामने वाले टीम वाले, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। कुत्तों की तरह भाग रहा है बिना देख, मतलब मार ही नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं। I gotta wait. Enemy down. एक आया यहाँ पे राइट में है वो। Ultimate orb spawning. I'm out of here. The hunt begins. I gotta wait.
बंदे ही बदल गए। 10 seconds until stage change. आज तो पेंचर रिलोड हो गई तो बच गया मैं। नो बचा दिया। अरे भाई ये मारने से यार कोई रेफरेंस हो जाए। टॉप सही तो है। The rush. मर गया। अरे कहीं और चला जाए। तेरा इम्प्रेस है नहीं इसे। मैं जब जिसको मारने जाता हूँ कोई मार ही देता है उसको कहीं ना कहीं से। चल कोई ना बहुत मारे मारता रहता है। I gotta wait. I gotta wait. My ult's ready. Dominating. I gotta wait. Blocking sight. Phoenix kill. What's this? Give me this back. Give me this back. तो बड़े चूते बनने आए हैं बहुत मारे बे बहुत मारे इस बार बहुत मारे। अरे यार गन्नी की हाथ में कर भाई तू भी कर दे। क्या करते हैं नियम तो बोल रहा था हेयर एंड हेयर पीस। That's 3. खाना भी क्या कर रहा हूँ यार क्या कर रहा हूँ। ठीक वो किसी ने ना देखा हो। हाँ ओडिन नहीं चलती मेरे से। ठीक ओडिन नहीं आता। I gotta wait. Your fault. Kills remaining. I gotta wait. आहा कैसे इसने अच्छा मारा। इसमें से शॉट्स निकाल सकता हूँ। I gotta wait. Who? मर गया मैं कैसे बेटर 10 असिस्ट मिले यार। मेरे पता है 149 और 32 117 ऐसे मार रहा हूँ। मेरे को हील चाहिए या कोई और मार के चला जा रहा है या कुछ वो तो हील तो तेरे को मिलता होगा ना उस पे। जो भी चाहिए मतलब किल तो चली जा रही है। किल जा रही है लेकिन 117 149 और पता नहीं क्या 132 जैसे ऐसे मारे मैंने। मजा आया मेरे को इस बार। ये मैप अच्छा है थोड़ा मिलता है मौका। बहुत अच्छा मारा मैंने भी। मैंने देखा 12 एक बार में मारे हैं। पता नहीं हम गलत पॉइंट में चले गए। हाँ सामने पैरों पे मार रहे थे हमारे। मैं जितनी बार मारा हूँ ना वन फेस टू फेस एक या 2 बार हारा हूँ। एक बार मुश्किल 10 बार तो मारा हूँ टोटल। आई भूल गया इस बार लॉक करना। गंदा आदमी जेट गंदा जेट। गेट ले ले। जेट भगवान तेरे वन टैप ना लगने दे कभी। उसका नाम है ना वन टैप गॉड। फिनिक्स फायर वाटर गन। What a goal! What a goal, baby! Be quiet. किल के पीछे खेलना है। इसमें रैंडम मुश्किल ही है बहुत वो होती है। अच्छा कैसे चला भी सकते हैं ले लेते हैं। Let's begin. वही तो मैप है सेम। हाँ वही तो बोलते हैं। ये लगा वो है प्लाजा करके। पिज़्ज़ा प्याजा पनीर को प्याजा। मैं भूल गया था कि मैं भूल गया था कि मैं जेट नहीं हूँ। मैं डैश कर रहा था ई दबा करके।
इसमें पता क्या होता है, एक पीक को मैं मान लिया कि एंगल मैंने पकड़ा हुआ है, कोई नहीं आएगा। जैसे ही राइट से लगे मैं मुड़ूंगा वैसे ही उस एंगल से कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ तो रेडी रह ना, एक मार रिलोड कर फिर रेडी रह। रेडी वाली वो बोलता हूँ, जहाँ देख रहे होते हैं वहाँ से निकल राइट लेफ्ट से बढ़। भाई ये किसने मारा साइकिल बे? एनिमी का, ये अपनी टीम का होगा। अपने टीम का था भाई, पीछे से आया, पीछे तुम ही लोग खड़े। पर भी सेज है। देखो लेफ्ट में मुड़ा, हर साइड से बड़े। उसको मारा दिया, वो पीछे हट गया। Reloading. हम 1 किलोमीटर दूर में बैठ जाएंगे और बैठ करके एरिस चलाएंगे। जेट के बिना इतना मुश्किल हो रहा है ना मेरे खेलने में। Sit down. New stage in 10. Vaulting है next stage पे Stage 3. अपनी टीम आ गया। मैं भाई साहब ये क्या कर रहा है सेज? चूतिया बीच में वॉल बना रहा है मुंह के सामने। मेरा बॉल भी अच्छा नहीं है, बॉल किसी लंड काम की नहीं है वो बॉल। पता है वो। मैं बॉल के पता नहीं किसने खोला मेरे सामने वाले को, और वो छात्र से पड़ी मेरे को। Dizzy's up top. Somebody's there. Nice. I got you. Right there. I'm out. Reloading. Dizzy's down. Need healing. खेल कहाँ से आ गया? मेरे को किसने मार दिया? कैसे पड़ा? Joke's over. You're dead. Begin. तो पीछे से ज़्यादा पड़ती है। एक को मार निकलो, 4 बंदे देखते हैं। लाइन में मार दिया। Dizzy has targets. Run, little man. And you're done. Ultimate orb spawning. They're not ready. My ult's ready. Mosh pit. Get out of my way. Listen up. Watch this. Dizzy's up. Someone's there. Get God. You disappoint. Go get him, buddy. I shot my wingman. अरे मेरा उल्टा।
They're not ready. They will cover. No sweat. Joke's over. You're dead. क्राउच हो गया मैं एकदम चिपक गया उसकी पीठ को क्राउच ही हो गया स्प्रे मारते क्राउच करना कई बार बचा देता है जैसे Careful here. Get him, wingman. Saw you, little homie. Enemy down. Jet's grounded. I'm okay. लू आवाज क्यों नहीं आ रही है तेरी अरे बस कर भाई बहरा करेगा क्या Match found. दूसरा तू देख रहा है क्या मैं कुछ नहीं देखा गुड गुड कोई तो है हेलो व्यूअर आप कौन है जो भी है अच्छा है देखते रहिए एंजॉय द गेम भाई क्या लोग है भाई जेट कैसे इंस्टा लॉक कर सकते हैं शर्म नहीं आती इनको माइक में उठ कर बच्चों भी होता है सालों की तरह बात कर लिया हाँ हैं 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 आने आए 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 अरे भाई हाँ it's an expression bro just I'm trying to express that I'm not able to hear you properly do you understand that I don't think you do if you did you wouldn't have repeated what you repeated whatever क्या ले रहा है अबे NVIDIA ब्रॉडकास्ट यूज करता हूँ ना शायद आवाज इसीलिए कम आती है तेरे को धीरे सी बट इट्स गुड सॉफ्टवेयर बताइए क्या लीजिएगा तू ले ले भाई फिर बाद में बोलेगा मैं फिर ले लूंगा रेज फिर तू रोने लगेगा भाई एंट्री नहीं करा रहा भाई किल नहीं करा रहा रेज नहीं लेगा और एंट्री नहीं करेगा तो गलत है ना अबे एंट्री मैं करूंगा लेकिन मर जाऊंगा तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है और बंदे स्मोक नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या खेलता रेना पैस यार अबे रेना क्यों खेल रहा है रेज खेल लेना तू इसमें तो बनता है ऑलरेडी तो क्या बंदा है भाई तू क्या बंदा क्या
ऑलरेडी जेट है डैश और कूदने के लिए, कूदने भाई फाड़ने के लिए। साहब भाई साहब छी 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 छी। टॉप फ्रैग करियो ठीक है, नीचे झूलता हुआ मत दिख जाइयो, मेरे से तो नीचे बिल्कुल नहीं, ठीक है गंदा आदमी। अबे तेरे को पता है फर्स्ट एक्ट का ही फर्स्ट एपिसोड इग्निशन का फर्स्ट बैटल पास में था रोइंग डैगर। सेकंड में था। फर्स्ट में था बे। सेकंड में था। फर्स्ट में क्या था फिर वो फर्स्ट में ब्लू वो वाला ट्रॉन वाला था। जो शॉर्टी है मेरे पास, वो फर्स्ट वाले की थोड़ी है, सेकंड वाले की है ना। मुझे क्या पता कौन सा, वो ब्लू वाली। हाँ हाँ वो भी ब्लू वाली। सेकंड की है, वो भी अबे वही तो दोनों था। सेम नहीं है, नहीं तू वो तू थर्ड था, क्यों नहीं वो थर्ड मानता था, वो भाई, थर्ड फर्स्ट था, और वो थर्ड था, थर्ड था, बोल तो रहा हूँ। रुक 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 फर्स्ट ट्रॉन वाला था, वो ब्लैक वेंडल है ना जिसमें ट्रॉन वाली वेंडल, पता है ना तेरे को ट्रॉन क्या वो होता है? वैंडल के साथ हाँ बे, लेकिन उसके साथ कुछ तो थी, वो ब्लू वाली स्किन उसी के साथ थे। रुक जा, इग्निशन ब्लू कौन सी है? वही मेरी वाली, क्या नाम है उस शॉर्टी रून का? डैगर सेकंड एपिसोड था, थर्ड एपिसोड में तेरा वो शॉर्टी वाला जो मेरे को कह रहा मुझे है पर्पल लगता है वाला वो जो है फर्स्ट वो। में था, वो फर्स्ट में था। नहीं। इग्निशन एक्ट 1 बैटल पास। अभी देखता हूँ, साले तेरे को गलत प्रूफ करूंगा, अच्छा लगेगा। नहीं कर पाया तो वो बंद कर लूंगा और क्या। मेरे को इतना कंफर्म है कि वो सेकंड वाले में था, और फर्स्ट बैटल पास में बकवास सी स्किन्स थी, वो एक वाइट येलो वाली एक वो थी, और ये थी गंदा सा नाइफ था एकदम किया था। और नमक सेकंड का वाले में रून उसूल डैगर था। थे, तो कंफर्म हो। हाँ येलो वाला था उसमें। हाँ वाइट अबे वाली भी थी। यार मैं तो, मुझे तो याद ही नहीं है फिर। मैंने फर्स्ट तो एक्ट पूरा खेला नहीं है खेलना ना भी तो बाद में इसीलिए। स्टार्ट किया है। नहीं फर्स्ट एक्ट तो और मैंने ट्रॉन खेला भी वाला नहीं है था, ना। ट्रॉन फर्स्ट वाली एक्ट भी मैंने थी खेला इसमें कहाँ फर्स्ट है, वाला। फर्स्ट एक्ट मैंने खेला ही नहीं है वैलो। अरे फर्स्ट एक्ट में मैं मतलब मैं बैलो तो बीटा से ही मतलब फॉलो करता हूँ। तू फॉलो कर रहा पर है मेरे ना। पास मेरा लैपटॉप नहीं था ना, मेरा लैपटॉप हॉस्टल में रह गया था। अब मैं इसीलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि वीपीएन लगा के खेलना पड़ता था उस टाइम। वीपीएन लगा के कौन ही खेले। हाँ तो वैसे मैं तूने भी नहीं बोला भी खेलता था था। कि भाई जब हॉस्टल में थे ना हम, तब बीटा चल रहा था, तो तू बोल रहा था वीपीएन लगाना पड़ेगा। बोला यार वीपीएन से तो नहीं नहीं, हो पाएगा। हम हॉस्टल में थे तब नहीं आई थी ये। पे थे भाई, हॉस्टल में थे हम लोग। अब आई हो या ना आई हो, तू बोल रहा था खेलेंगे बीटा में, ऐसा कुछ आई नहीं होगी तब, आई नहीं होगी, बट मैंने बोला था कि जब रिलीज होगी ना तभी खेलेंगे। सेकंड में रून डैगर, तो थर्ड में तेरी शॉर्टी वाली जो बोल रहा है। शॉर्टी कौन सी बोल रहा है? ये ब्लू कलर है भाई, बताइए कलर ब्लाइंड है क्या लौड़े? अबे ब्लू पर्पल क्या बोल रहा है तू? ये ब्लू पर्पल नहीं है। पर्पल है ना, ब्लू और पर्पल में फर्क नहीं लगता? ओमन का कलर और रेना के कलर में फर्क नहीं है? अबे रेना तो मजेंटा कलर है, पर्पल थोड़ी है रेना, कैसी बात कर रहा है तू? रेना पर्पल नहीं है, मैजेंटा है। वो अंदर और व्हाइट नहीं तो कलर क्या में टच करा, भाई, मेरा मैजेंटा पर्पल है। मेट्रो से नहीं जाता तू। अबे मैजेंटा तो देखो, रेना और मैजेंटा लाइन और रेना का कलर सेम लग रहा है। और नहीं तो क्या फर्क है? वायलेट तो वायलेट है भाई, रेना वायलेट टैब दबा के रेना के बाल देख कौन से रंग के हैं। तो मैजेंटा मत पिंक बोलियो। कलर के हैं बाल के जस्ट नीचे। ठीक है, मैं अंधा हूँ भाई, छोड़ मैं अंधा हूँ। नहीं तू जीत गया। गाइस आई एम कलर ब्लाइंड, सेंड मी मनी टू गेट सम कलर ब्लाइंड ग्लासेस। हील लेगा रेना को, ले रेना टाइम से हील ले। कौन जा रहा है? मेरे को मार रहे हैं तेरे सामने। Spike planted. There. Satisfied. यहाँ पर गन है। कौन सी गन है? घोस्ट है, घोस्ट। One enemy remaining. मैं हील कर लूँ। Last player standing. मैं उधर अंदर जा रहा था, तो उधर बाहर से आ। वो बाहर निकल रहा था। अबे वो बाहर निकल रहा था, मैं अंदर घुस रहा था, तो बाहर उसको मैं अंदर था, तू मैं अंदर जाना चाह रहा था, तेरे को लेफ्ट में तेरे को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे अंदर घुस रहा हूँ, मैं यहाँ से अंदर घुस रहा हूँ, मैं इधर से फाइट ले रहा हूँ। मैं भी घुस इधर गया खड़े हो ना। ना। अरे तो इतना थोड़ी पता था तू अंदर घुसेगा। मैं घुस रहा था, मैं सोच रहा था मैं घुसूंगा अंदर। जीत तू गया, बाहर जीत है। गया। हाँ जीत गया। क्यों नहीं है? 13-0 स्कोर कर। 1-0 जीत गया। बंदे जीत गया। ये ऐसी बात कर रहा है भाई, 3 किल पर है, खुश रहे। कोई नहीं भाई, रेना पर्पल है, मतलब वो मैजेंटा है। जो भी है भाई, तेल लेने नहीं की भाई, रेना। तेरे को क्या करना है रेना से? छोड़ भाई, मैं रेना खेल रहा हूँ भाई। रेना लाइफ मैटर। रेना ठीक है भाई, ठीक है। मैं भी यही कर लेता हूँ, बंदे भी सेव करता है। आओ भाई, आते ही नहीं है।
अभी मैं ए गया तो बी आए, बी गया तो ए आए, मिल गया तो पता नहीं कहाँ ही आए। ले जा ले कुछ अरे यार तू हाँ भाई हाँ सही है बहुत सही बहुत सही ऑन साइड आ गया ऊपर एक पता है इसीलिए तो पीछे हूँ मैं। Spike planted. Jets ground. One more event. चलो रुक जा बात वो है तेरे पास कौन है? One enemy remaining. देख ले स्किन पड़ी हो मार दिया तो तुम देख अच्छा होगा एक बंदा मिड में मर गया था मार्शल में करके। Can you give me a shot? Over there. काल बेटा काल से वो मांग ले तू गन मांग ले बैंडल से दे दिया बैंडल दे देता हूँ। Can someone get this? देखा भाई डेडलॉक बोल ही नहीं पाया वो अरे उसमें ऐसा नहीं है ऐसे तू अबे लास्ट राउंड सेव क्यों गया था उसने सेव कर रहा था क्या जिगल पिक कर रहे हैं लोडों इधर तेरे को मारा क्या एक मुझसे 40 पर आता नहीं ये थोड़ा है जेट नहीं दिख रही इधर कुछ नहीं बी पे दो है बी हेड पड़ा है उसको 95 का पड़ा मैं फुल लेफ्ट राइट भाई साहब गंदा डेड लोग वहीं से सबसे गन नहीं है वो मिड में फाइट लेती मैं आगे गया कि चल उससे फाइट लेती मैं उसको हेल्प कर देता हूं वो पीछे भाग गई पर मैं आगे फंस और सारा उसका मतलब दोनों का ख्याल मेरे पे आ गया कभी है Last player standing. बहुत बुरा सीन है कम्युनिकेशन जीरो है ना फ्लॉलेस उसको हेड लग अब जिगल पिक कर रहे हैं मैं हेड में मारा 95 का पड़ा था Race it to the spike sites. जिगल अब उनका सबसे वो है फुल बाय है फिर भी जिगल तो करेंगे ही भाई डायमंड में खेल रहा है तो पहली बार खेल हां पहली बार खेल रहा हूं और तूने कितनी बार खेला डायमंड में बहुत बार फ्लैट से बाहर निकलना सही पता नहीं तो मैं क्यों जाऊं डायमंड जब मैं फ्लैट होकर के भी डायमंड के साथ खेल सकता हूं तो नहीं प्रॉपर डायमंड नहीं है प्रॉपर डायमंड अभी थोड़ा भाई डायमंड 3 के बंदे आते हैं क्या चाहिए और डायमंड 3 से ऊपर वाले बंदे चाहिए तेरे को तू फ्लैट में है रिस्पेक्ट हमारे पास बेकार है अरे यार बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इसको 120 मारा है और मेरा दो लोग गिर गया मैं ऊपर से काय 120 तेरी भी किस्मत खराब है I've got your trail. टीम बी पे अंदर घुस रही है वो वहां पे बैठा हुआ है ऊपर ठीक है पता क्या वॉल करके गया मैं हूं भाई मैं हूं गया अच्छा था फिसल गया ऊपर से अच्छा था चलना क्या अच्छा है उसमें भाई उसके उनके ऊपर चला जाऊंगा उनको पता भी नहीं चलेगा समझा इसके ऊपर चला जाएगा वॉल के ऊपर उधर वाली इस वॉल के ऊपर मार्क करता मैं कहाँ है बे ये वाली वॉल ये वाली नहीं जा पाएगा जो तूने अभी जो वॉल करी हुई है ना उससे तो कभी नहीं जा पाएगा कहाँ पर हूँ मैं ये वाली हाँ यही वॉल नहीं जा पाएगा अबे मैं पहुंच गया था गिर गया ऊपर से नीचे देखने के चक्कर में मतलब ऊपर पहुंच गया था मतलब खड़ा नहीं हो पाया मतलब गिर गया समझ प्रॉपर नहीं पहुंचा था इम्प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा वही बोल रहा हूं मैं वाओ वाओ व्हाट नाइस और ये तो गया No charges left. One enemy remaining. अरे भाई साहब अरे भाई साहब वो तो खड़ा ही हो गया था बिल्कुल ले मार ले
नहीं वो सोचा होगा एस बोलता हूँ और क्या को पता था मर तो वैसे भी जाएगा वो एसी दे देता हूँ सीधा एकदम खड़ा हो गया गन हटा कर सेव कर लेते हैं यार वो ऊपर आए इस बार भाई याद है Wall raised. Very bad wall. अरे बी पे एक जगह आओ दूसरी जगह बंदे पहुंच जाते हैं I can black oh blind Reloading for you. I cannot help him. Give me those back. जेट किधर है Here. जेट भी उधर है One enemy remaining. भाई कुछ भी बोलते हो यार मैं मरते मरते बचा Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. कौन कुछ भी बोल रहा है कौन बोल रहा कुछ भी जेट आया मस्त ऑपरेटर मांगने बढ़िया चला रहा है Fight. Barrier deployed. Cover going out. Stealing sight. Barrier created. You should run. Shadows traveling. Reloading. पीछे जा पीछे जा पीछे जा Over there. रीटेक करेंगे रीटेक Rest. The hunt begins. क्लोज है Spike planted. Weapon here. यहाँ कौन स्मोक करता है एक मिनट Weapon here. Blocking sight. Reloading. Healing you. ये मेरे को दिखा नहीं मैं उधर टीपी कर रहा भाई साहब मुंह के सामने खड़ा हो रहा है Last player standing. One enemy remaining. Don't rush me. नाइस ब्रो क्या है क्या है इसने मार्क इस तरफ राइट साइड में है वो इधर थोड़ी है मार्क कर देता ना फिर उठा लेता ना तेरे लिए Over there. मैंने सोचा फायदा नहीं है मैं ऑफ तो भाई इसको तो चाहिए ना तेरे को पता है जेट चला रहा है बड़ा अबे तो मैं ध्यान नहीं दिया मैं तेरे पे फोकस था कि भाई तू मारेगा ये करेगा वो करेगा और फिर तो उसने दिया, मार्क मारने का कर दिया diffuse कर दिया। उसने मार्क कर दिया तेरे पहुंचने के बाद मैंने देखा यार मैं तो उधर मरा हूँ इधर क्यों मार्क किया मैं मैप खोल के थोड़ी बैठा हूँ देखने कि कहाँ मार्क कर रहा है कहाँ जा रहा है बढ़िया मारा लेकिन Get out of my way. मेरे पास ये करा हुआ उसने केजे में मौली कर रखी थी मैं मौली में ही चला गया पता था मौली जेट नहीं करेंगे Wall raised. स्मोक चाहिए ए पे आ सकता है स्मोकिंग ए में बी पे क्या आवाज है क्यों जा रहे हो अल्ट क्यों वेस्ट कर रहे हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ Spike down A. One enemy remaining. अरे वाह ये अलग ही जगह मिला है देख इसको जेट की ऑफ जाएगी ऐसा लग रहा है क्लासिक से मार दिया वही अबे वो भी तो क्लासिक पे ही था सेव राउंड है उनका नहीं वो कैरिक पे था मतलब वही एक ही बात है
फिर भी शेरिफ का तो मिस होना बहुत इजीली होता है, ऑप है ना तो शेरिफ का। अब शेरिफ से वो मिस कर दिया तो बस क्लासिक से तू स्प्रे कर दे। वो भाग रहा था, उसने जरूर 6 गोली मार ली होगी, फुल स्पीड में भाग रहा था। सुन उधर से देखते रहिए, मैं इधर ना वो बना रहा हूँ। ओमेन टॉप स्मोक कर दे जहाँ पे मैं मरा था। कहाँ किसने ब्लाइंड किया मेरे को? मरा ही नहीं, मैं डिसमिस दबाने में जा वो फोकस हो गया। 120 दिया। तो सेफ है रिवाइव कर दे। क्या सेफ है, ऊपर बंदा है। तेरी वॉल पे चढ़ के आ गया बता। मेरी वॉल पे चढ़ के वो लंडूरी वॉल भैंचो। अबे मैं तो सही किया वॉल। बहुत अच्छी वॉल है भाई। एक बार नहीं देखा है उन्होंने वॉल। इस बार वॉल किया तो मेरे को अल्ट पड़ गया उसका। अल्ट ओमेन ने ब्लाइंड भी कर दिया और अल्ट भी पड़ गया। चूतिया ओमेन। अबे ओमेन तो ओपोनेंट वाले ने करा ना। मुझे तो लगा अपने वाले ने करा। मिड टॉप कवर देना। अपने वाला ने ही निकाल के रखा था इसीलिए मैंने बोला। मैं चला जाओ। ये तो रह नहीं दे, खासकर इस स्टेज पर। इस स्टेज पे कैप्चर थर्ड। भाई फुल बी को एम्प्टी छोड़ा हुआ। नाइस नाइस नाइस। बी कौन चुतिया छोड़ के गया? बी पे तू ही तो था। अबे मैं मिड से भी गया हूँ, तू पागल है क्या? ये यहाँ कौन मरा है? वो मैं मरा हूँ जाते समय। मेरे को पता नहीं था, खाली था एकदम। मैं सोचा जाके देख लेता हूँ, जाते ही मर गया। प्लेयर से बुलेट खत्म हो गई शायद। The enemy on the their hearts tell a different story. भाई ऐसे छोड़ के निकल जाते हैं, बताते भी नहीं है कि मैं छोड़ के निकल रहा हूँ, या कोई प्लेयर हो वहाँ पर दूसरा तो निकलो मुंह बंद करके। क्या पता, मैं तो इधर हमारे कुछ पता क्या करता है। अबे सीधी सीधी वॉल कर देना ये वाली, बकचोदी कर रहा है। छोड़ ना, एक दो ट्राई कर लेने देना, जीत ही तो रहे हैं अभी क्या। पापा ने कंधे पे बिठा रखा तो मुंह गई। टीम में भी कैरी करता हूँ। मैंने कब बोला कैरी करता हूँ? उतर भी गया उससे, क्या फायदा? उतरूंगा नहीं, उन्होंने देख लिया तो। कहाँ देखा? कुत्ते ने देखा ना। मैं तो तेज किया, वो रश कर देंगे तो मैं क्या करूँ? मैं हूँ बी में आ रहा है। निकलेगा स्मोक वो देता प्लेयर। राइट में बंदा है। One enemy remaining. ओ नीचा मिल गई ओनी। ओनी ही मिलेगी, बंदी नहीं मिलेगी। यही नहीं भाई। हाँ भाई तेरे को नीचे फिर रात में फोन करियो। क्या फोन करियो भाई? हेलो भाई, हेलो हेलो भाई। ये बोलता है कि भाई बंदी थी। मैं तू ऐसा क्यों बोलेगा? कोई भी ऐसा क्यों बोलेगा? वो बोलता है कि भाई एक लड़की चाहिए। मैं कई बार बोल सुना है भाई एक लड़की होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए तो भाई। होनी दलाल चाहिए कि मैं तो नहीं बोलता भाई, दलाल थोड़ी है, तू लाके दे देगा। आपने समझ के रखा है मुझे दलाल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवी का डायलॉग मार रहा था। मिड पे है स्काई का। यहाँ पे पता है वो ऊपर उस पे चढ़ते हैं। हाँ पता है मेरे को, तो जब चढ़ेंगे तो मैं वहीं पे क्रॉस कर रखा है। You should run. Headshot. Enemy spotted mid. हट जाओ, आ जाने दो उसको। नहीं है अभी पे। Over there.
पे आ रहे हैं भाई। अभी आए नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। The hunt begins. Spike कोई planted. नहीं जेट आजा आजा क्लियर कर दिया On my mark. Target spotted. भाई साहब इधर खड़ा था ऊपर। ये कहाँ से मारा बे? लेफ्ट साइड देखने तो मेरे को मारा। Pull them to their grave. Last player standing. उधर तुम खड़े हो फिर भी मार दिया। मैं खड़े क्या, घुसा ही था, लेफ्ट से मार दिया हूँ मैंने अंधा। और मैं रेना के पीछे था, रेना को मार रहा था मैं, उसके बिल्कुल सामने था दूर में। तो मैं इसको मारता हूँ और मैं जैसे ही अंदर घुसा लेफ्ट से रेना तो लेफ्ट में थी, रेना तो यहाँ मरी, यहाँ पे खड़ा है ये जेट। हाँ यहीं पर, तो मैं उस साइड था ना, मैं उधर से घूम के आया हूँ। ठीक है, तो उधर था और रेना उधर था और वो उधर था और उधर से मर गया। उस साइड घूम के कहाँ से आऊंगा? रुक मैं बताता हूँ। मैं बी लॉबी से ऐसे घुस के आया, बी मेन पे मैं खड़ा था, रेना यहाँ। देख दोबारा सुन। पहले मैं मरा कि पहले तू मरा, बस मेरे को ये बता। पहले मैं मरा। Cover going out. Get out of my way. Spike planted. देखा क्या? One push city. क्या? अल्ट है। ले। Still inside. मैं तो यहीं से स्पैम पड़ता है। Parasite. वॉली पे है खड़ा। पता है मुझे क्या करूं, सामने से केजे मार रही है। Last player standing. I've got your trail. Don't rush me. टाइम ही नहीं है, क्या करूं? पता है मैं तेरे को थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मैं टरेट को कह रहा हूँ। Switching sides. क्या करूं टरेट को? पे। ऐसा भी नहीं, लगातार मारता है। टो। अच्छी बात है, लगातार मारता फिर क्या करता था? कुछ नहीं, इरिटेटिंग साउंड नहीं होता ना, इरिटेटिंग साउंड ट्रिपल बर्स्ट का। टो। अच्छी बात है ना, डायरेक्ट लगातार मारा था फिर। अबे धर नहीं बना दे उसको। अबे धर नहीं, ऐसे ओडिन बना देते हैं। ऑपरेटर के डैमेज और उसका ऑपरेटर का डैमेज, ऑपरेटर का डैमेज और स्ट्रिंगर का वो फायर पे। अरे वाह वाह वाह। No heroics. Follow protocol. Caution here. है समझ गया, उसको ब्लॉक करने से बढ़िया ऊपर वाला ब्लॉक करना है। ऊपर में Reloading. आई मार के दे। Cutting their vision. पहले घुस रहा है बिना स्मोक। वही चाहिए मार। अबे कहां जा रहा है? पीछे आना, मैं भाग। तू अंदर दिखा मेरे को मैप में, अजीब इंसान है भाई। ये तेरे सामने डिस्मिस करके जा रहा था, दिख नहीं रहा हूं मैं मैप में था। मैप में था? कैप्स लॉक आके खेलता है क्या? हां कैप्स लॉक दबाया। पीछे आ जा, फायदा नहीं है, मल्टीपल थे यहां पे राइट। वो लेकर बैठा हुआ है। आ जाएगा। It's a kindness. Clean kill. आएगा भाई डेडलॉक। किस्मत ही खराब है मेरी भाई साहब। Last player standing. One enemy remaining. Spike down A. Backstab आया था येमेन से। I have the spike. तो मैं तेरा भी। हाँ पता है मेरे को, मैं तेरा गेम स्टाइल समझ गया, मेरे को पता है तू कब क्या। पर तू मेरे साथ भी वही करता है। 30 seconds left. अंदर चल जा, बोट हाउस पता नहीं चलेगा। बोला चल अंदर चल। And 11. They don't have a single life worth saving. Full form.
वो डिसमिस करके आया, मेरे को क्या पता चलेगा, मैं तो स्मोक के अंदर था, ऊपर से मैप खोल रखा था। भाई वीसीटी की क्यों पड़ी है इतना लोगों को? फास्ट भाई ओमेन से बोलना फास्ट स्मोक्स, ओमेन फास्ट स्मोक्स। भाई हमें ही ये ब्लाइंड कर रहा है क्या ओमेन है यार? प्लांट कर ले भैया। उसने वो बना रखा है, तूने भी वहीं पे बोल रहा है। उसने अब अबे मेरे होने के बाद उसने फेंका है, कैसी बात कर रहा है? इसमें आया हुआ तेरे बॉल के पीछे ऊपर से मारा है, मतलब तुझे कहना चाह रहा है? तेरे बॉल हाँ के उस साइड ऊपर है से वो। फेंका है, उसके गिरने से उससे पहले। से आया हुआ था। सामने सामने देखा, आगे जाके मर गया मैं तो स्टिंगर अपना ही डंडे में। बाकी जो Enemy down. Cover going out. One enemy remaining. हाँ भाई Weapon here. शॉर्टी लेके बैठे थे अंदर। हमारा शॉट गेट बंद करा मैंने, आगे क्या गेट के 80 से आगे इतना मारा मैंने उसको। वो तेरे को स्काई ने मारा होगा, 88 पड़ा था उसको उस टाइम पैर पे। मतलब गेट पूरा बंद, थोड़ा सा भी लेट बंद होता ना वो मर जाता। Reloading. भाई बिना हील दिए 11 असिस्ट है, क्या कर रहे हो तुम लोग? Reloading. 19 किल्स है मेरे, असिस्ट मिला लो तो। अरे पड़ा उधर। अबे हट जा भाई साहब, कौन बॉल बहुत ज्यादा ले। Still in sight. Cutting their vision. Problem solved. बैक चला Spike down B. बाइक पीछे स्पाइक स्पाइक रन बॉल कर दे। Last player standing. 178 One enemy remaining. बड़ा ऊपर से ऊपर बोला ना, मेरा ध्यान वही चला गया कि ऊपर यहाँ पे है तूने, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मेरे को लगा मिड मार्केट है। मैं तो जेट की बात कर रहा था। अरे मर गया जेट तो मार दिया ना, फिर तो ऊपर पता नहीं क्या बोल रहा है, उसे ऊपर सुनाई दिया वर्ड और कुछ सुनाई नहीं दिया है। मेरे को लगा बॉल के ऊपर बोल रहा है कि मेरी आवाज धीरे कर रखी है क्या तूने? धीरे तो मैंने कर रखी है पर फिर भी थोड़ा बढ़ा ले क्या? मैं कम बोलूंगा। अरे कुछ भी हो, तूने क्या बोला तू बता मेरे को। मैं बोला वॉल के ऊपर से मारा था। अब ऊपर से अब मर गया ना, हो गया। वॉल के ऊपर तो मेरे को दिख रहा है ना, नहीं है तो। I will rip the light from them. अंधा मत घुस। मैं तो घुस ही नहीं रहा, ड्रॉप ही नहीं। उसको 3300 अंधा तो मैं पिछले बार भी नहीं घुसा हूं। मैं चल ना, बिना स्मोक के घुस जाता है तू। मैं तो घुसा ही नहीं हूं, बहुत बाद में घुसा हूं मैं। दो दिन मर गए थे हमारे। बी वाली राउंड में नहीं, ए वाली राउंड में, इससे पिछले से फ्लैश है ना। बे तो फ्लैश टूट जाता है और फ्लैश तेरा हर एंगल कवर भी नहीं करता है। शॉर्ट ही हो सकते हैं अंदर। लगाई था। Spike down A. शॉर्ट है कि वो है। एक ही बात है भाई, बहुत फर्क है भाई कोई फर्क नहीं है। अगर पहले शॉट से मर रहे हो ना, अगर पहले बाकी टीम तो पुश करेगी ना, अगर शॉट किया तो मार देगी, जज होगा तो बाकी टीम नहीं मरेगी। हाँ तो मैंने बोला, पहले ही बोला था ना, मरने के बाद तो बोला। हाँ ठीक है, मैं बता, मैंने कुछ बोला थोड़ा तेरे को, मैं थोड़ा बोल रहा कि भाई तूने क्यों गलत क्यों कॉल दी है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला, जज है। बिल्कुल जज है। इसने शेरिफ को ले रखे तू। सेव करना पड़ेगा इस बार। I'm saving. सेव नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब लाइट बाय हो जाएगा, लेकिन फिर फायदा क्या है? नहीं हो रहा ब्रो, नहीं हो रहा मुझसे, क्या करूँगा? कुछ नहीं ब्रो, सबका बैड डे आता है, चिल कर। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा इंसान है तू। चलना था तेरी तरह थोड़ी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अच्छा इंसान है, यही तो बोला, तारीफ तो कर रहा हूँ बॉल का इतना बेहतरीन उपयोग करते हुए। अबे भाई उधर से क्यों मारेगा कोई मेरे को? बंदा था उधर, रेज अपना, क्या नाम है, जेट अपना। मेरे को कुछ भी पड़ यहाँ काटा है,
स्काई का कुत्ता यहाँ काटा जब आगे दो बंदे थे। अबे चूतियों की तरह वॉल क्यों करता है ऐसे लड़ने जैसे? वॉल से क्या मतलब है? सेव राउंड है, कुछ मतलब भी है ना, करूं। मत करना वॉल, क्यों कर रहा है चूतियों वाली वॉल? नहीं, उस वॉल से तेरे को क्या दिक्कत है ये बता। दिक्कत है मुझे। क्यों वॉल वेस्ट कर रहा है? वहाँ भी वॉल वेस्ट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। मार ले थोड़े। हम मेहनत करके कर रहे हैं भाई, 18-22 किल पे हैं, बाकी तुम भाई 9-4 पे बैठे कंधे भाई बैठ के सेज भूख पर रहे हूं हो। मैं, ठीक है सेज हूं मैं। वो क्या हो गया? मैं सेज पे 9 किल पे रहता हूँ तो क्या मार ना, ये बॉल तू कर रहा है तो एफर्ट तो डाल। तू कह रहा भाई वो है, तुम जीत ही रहे हैं, कहीं जीत भी ही रहे करने हैं, दे। ओ जीत ही रहे हैं। वो मैंने डिफेंडिंग में कहा था, तू बोल रहा था वॉल इधर कर। उधर वॉल करने से क्या हो जाएगा? 2 मिनट में तोड़ देंगे। मैं उधर कर रहा हूँ, कम से कम चांस तो रहेगा कि मैं पीक करके हेवन मारूंगा। कैसी बात कर रहा है भाई? अगर मैं वॉल वेस्ट कर रहा होता तो अलग बात है। जीत गया ना भाई, मैं हार गया। तेरे से नीचे हूँ ना मैं। नहीं, मैं तेरे से नीचे हूँ ना, मैं हार गया। मेरे को डर लगता है। गेट बंद करना पड़ेगा। One enemy remaining. Go back to back. गेट ही बंद नहीं करा किसने, अगर मैंने नहीं करा तो। तूने नहीं करा तो और क्या? तेरी गांड बचाई थी, भूल गया तू थोड़ी देर पहले। वरना तेरे को हेवन से जो पड़ता ना। किससे पड़ जाता? ओमेन से। स्मोक के अंदर बैठा था मैं। मैं ऊपर से जब तू घुसा अंदर। तो करेगा यार। चलो वापस चलो। पुलिस चला रहा होगा। Snack time. Sorry, only brought enough for me. और तो हमें बोल रहा है, सामने वाली टीम में देख 17-13 हो रहा है। अच्छा ही खेल रहे हैं, बुरा थोड़ी खेल रहे हैं। सब अगर सेम किल पे होंगे तो अलग ऐसे थोड़ी होगा। सब एंट्री थोड़ी दे रहे हैं। जो एंट्री लेगा वो जल्दी मरेगा, उसके डेथ ज़्यादा होंगी। जो पीछे खेलेगा उसका डिपेंड करता है। मैं लेट ही शॉट आ रहा हूं। Over there. There. I have the spike. Reloading. होगा जल लेके। Fall back. जा ही नहीं रहा। Fall back. Reloading. पक्का जल लेके। ये बना लो, ये बना लो, ये वाली बना लो। My ultimate is ready. Wall raised. Spike dropped. Reloading. राइट साइड में एक। 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। I've got your trail. एक राइट साइड में, एक ऊपर है। तो अरेना बहुत है। आजा। चलो वापस आओ, वापस आओ। अरे यार मैं उसको रिवाइव कर सकता हूँ। होल्ड करो, होल्ड करो। साल बाद स्मोक करेगा ये। भाई हम खड़े होके वहाँ बैठे हुए हैं इसके स्मोक के लिए। 30 seconds left. पहले बोल रहे, पहले मैं चल के आऊंगा, मेन ए में घुसूंगा, उसके बाद स्मोक करूंगा मैं, क्योंकि वहां से तो मैं कर नहीं सकता पीछे से। साइड टीम पहुंच गया तो 3 मारेंगे। Last player standing. ओ भाई मार कैसे सकता है? गन भी नीचे नहीं करी उसने। ऊपर कर रहे थे तो मैकेनिज्म। ओडी ने भाई, ओडी का स्प्रे ही इतना गंदा है, कहीं भी बुलेट जाती है, कहीं भी। तो जहाँ मारेगा वहाँ नहीं जाएगी, उसके अलावा बहुत जगह जाएगी। फिर से करना पड़ेगा। I hate to say it, but probably best to play as a team. बी में जान सकते हैं। को यहाँ पे बॉल अप करेगा क्या बी में पे? देख ये वही बॉल अप मांग रहा है, देख रहा है कहाँ पर? अबे ये मांग रहा है वो, ये मार्क तो कहीं और किया था उसने। ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसको क्यों वॉल अप करूँगा मैं? Keep up. बी पे कमेंट मत करना। ओडिन चलेगा ना सामने से, भूत बन जाओगे।
Still inside. Reloading. Barrier created. Here. Pull them to their grave. Reeling them in. तो गया। अरे बच जाएगा ये चंदा। हां हूं मैं मारो इसको मारो लेफ्ट में। Cutting their vision. अरे स्पाइक लिया। Someone's in defender spawn. No surprises. What the No fuck? charge. One enemy remaining. केजे की तरफ साइड केजे पर की आवाज मेन था। Yeah. Planted. यहाँ था ये रिश्ते के तरह। अरे भाई साहब इम्पॉसिबल। Stealing sight. Shadows traveling. एक बंदा आगे जाके मरता है ना तो पीछे वाले को एडवांटेज रहता है बहुत। वो ओडिन था, वो कर दिया उसने स्प्रे। ओडिन में नहीं मिलता बॉडी, एक तो तुम्हारा एम बिगड़ता है वो अलग, मूवमेंट जाती है वो अलग। मैं स्पाइक प्लांट कर रहा था, 5 ये सारे मतलब 4-5 जिंदे हम जिंदा थे। बोल्ट वहां पे सिटी मार्क कर रहा हूं मैं, वहां कोई नहीं गया सिटी। मैं खड़ा था तेरे उधर ही था। मैं यहाँ खड़ा था। नहीं वैसे अरे ये पूछ रहे थे ना कि भाई कहाँ है आखिरी बंदा बताओ, हम मार के आएंगे। मैंने मार्क करा दो और कोई नहीं गया सिटी। मैं यहाँ खड़ा था, मैं फालतू में आगे नहीं जाता जब तक अकेला मतलब 2 बंदे ना जा। मैं चलाऊंगा। अरे Can someone get this? Thank you. मैं स्पाइक इधर छोड़ा हूँ, तुम लोग ले लेना। Over there. Forward. No. Here. Reloading. Here. Here. I have the fight. Here. Still inside. बहुत बैठे हैं भाई वो लेफ्ट राइट। जनरेटर पे हो सकता है। Spike down A. नंबर 1 का हेवन स्मोक कर दे मैं। लो हेवन स्मोक दे। Cover going out. सामने जज वाला मारेगा। अबे last player standing. क्यों घुसना है मेरे को समझ नहीं आ रहा है चूतिया ओमेन को। छूट पता है वो जज लेके रुक जाओ ना। क्यों घुस रहा है वो ओमेन? टीपी करने की जरूरत क्या थी? उसके चक्कर में मेरे को मारना पड़ा उसको मारने गया मैं मर गया दूसरे बंदे से। अरे मैं बोला टीपी करूंगा, तुम लोग पीक क्यों नहीं दिए? अबे पीक किया इसीलिए मैंने मारा उसको, तेरा ट्रेड लिया। लेकिन क्यों घुस रहा है? 5 बंदे हैं वहां पर, क्या फायदा घुसने का? अंधा टीपी कर रहा है। ऐसा भी नहीं है स्मोक कर रखा है तीनों चारों तरफ, कुछ हो जाए ना। खड़ा है रेड लॉक। जाओ लाइन करता हूं। Barrier deployed. Cutting their vision. Reloading. चलना पड़ेगा मेरे पास है जज। मैं तो क्लासिक से मार रहा हूं। Over there. भाई जेट घुसेगा भाई, मेरे पास क्लासिक है। Last player standing. मैं तो चूते को एंट्री नहीं आती भाई। क्लासिक है भाई, क्लासिक से फर्स्ट पिक लिया फिर भी ये चूतिया ओमेन स्मोक ही नहीं कर रहा है। स्मोक तो कर रखा था, कोई घुसा ही नहीं थोड़ा। ये चला जा Cover going out. Thirty seconds left. Shadows traveling. तो क्या चाहता है ये करना? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना चाहता, राउंड थ्रो करेगा, राउंड थ्रो करेगा और क्या करेगा?
10 seconds left. One enemy remaining. कॉमन भाई लर्क कर रहे थे थोड़ा सा जल्दी। अबे जल्दी भी क्या है, ये चले जाना था ना, भी ये क्यों नहीं गया? पता है दोनों बंदे बी पे हैं, स्पाइक बी पे मिड पे बैठा है, एक नहीं गया। घुसे ही नहीं, मैं लर्क कैसे करूं भाई? तुम लोगों को घुसना पड़ेगा लर्क करने के लिए। वहां पर रहने से मैं मर हाँ जाऊंगा भाई। आराम से। अच्छा छोड़ रहने दे इस बंदे का कुछ देख देख भाई, वो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये यहाँ डायरेक्टली आएगा। मेरा हो नहीं रहा इसलिए मैं लर्क कर रहा हूँ। लोग मरे जा रहे हो यार। एक घुसो, साइड घुसो। Reloading. यार घुसो, मैं तो स्मोक करके डैश करे लोड़ा। घुस लो मैं चौदह अब। क्या ही कर लेंगे भाई, एक लेफ्ट से मारेगा एक राइट से मारेगा, कोई फायदा ही नहीं है। Down A. Out of charge. One enemy remaining. Dead. Match point. 112 दिया था। But all that was good. Now, we end this. Over there. मेरे चलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बिना स्मोक के कहीं नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। उधर शॉटगन लेके बैठा है, उधर ऑडिन लेके बैठा है, क्यों घुसना है मेन से? मिड चलो भाई, मिड चलो। ओमन स्मोक कर दे मिड टॉप। मिड क्यों कर रहा है? ये स्मोक नहीं ना, मिड टू ए। बी पे तो ऑडिन है ना, ए पे शॉटगन है। पर कोई नहीं, जाने का टाइम मिलेगा। मैं लेफ्ट देख रहा, तू राइट देख। 3 2 जाना क्यों है? क्यों नहीं जाना है, मारना नहीं है बंदे को। I've got your trail. शॉटगन लेके बैठा हुआ। You fought well. Spike down mid. I have the spike. मिड जेट और मेन इधर है कोई? स्काई। हां इधर है मेन। मैं देखता हूं जेट मिड का। मैं प्लांट करता हूं। Spike planted. मैं ऊपर जा रहा हूं। One enemy remaining. प्लीज केयरफुल हो क्या? रुक के खेच। ऊपर आया, ऊपर आया। Your tactics failed. Attackers win. देख पता है वो बंदा बहन जो हर बार वहाँ पे जज लेके बैठा है, तो वहीं से घुसना है। फिर भी जाओ भाई, मिड से जाओ, वहाँ पे ऑडिन है, वहाँ पे जज है, फिर भी हम या तो ऑडिन वाले के पास जाएंगे या तो उस वाले पे। वीसीटी स्टार्ट हो गया होगा क्या हो गया? हाँ क्या हो गया फिर? ठीक है, मुझे लगा देखना है। चल लास्ट मैच देख लेंगे या स्कोर ही देख लेते हैं। वीसीटी लगी है फिर। Match found. मेरा अभी तक क्या दिखा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पता है? अभी तक स्टार्टिंग हुआ है। तो मैंने बोला था 12:30 बजे स्टार्ट होगा, उसके बाद ही 15-20 मिनट बच्चे होती चलती है। फिर मैप वेप सेलेक्ट होगा, वो करेंगे, एजेंट लेंगे। अभी मेन इवेंट है भाई, स्टार्ट होने में अभी टाइम है क्या? 1 बजे लगता है, 1 बजे पे होगा शायद। टाइम लगेगा भाई। क्या सैड कहानी स्टेज पे आ गए हैं, पर कौन सैड कहानी? I don't know what's like. एजेंट I ले ले, have to go to army. ले सेज ही ले ले जाए वापस। एसएमटी आया है तो रेज ले ले फिर भाई। एंट्री चाहिए, लास्ट वाले एंट्री कर नहीं होता। डिफेंड मैं तो वो नहीं कर रहा था ना, मैं तो वही डाल ही रहा था। ले ले, मैं तुमसे मैसेज लूंगा। एंट्री या फिर जेट ले लेता हूं। वो डैश नहीं कर रहा था। दो बंदे एंट्री भाई किल होनी चाहिए, टॉप 2 पे होना चाहिए मुझे इतना। अबे टॉप 2 पे मैं सेज लेके भी नहीं था, कैसे बात कर रहा है? चैट लेके बोल रहा हूं ना, अगर तो चैट तेरा तो टॉप 2 पे रहेगा। तू रेना लेके टॉप 2 में रह लेगा क्या? अरे आई लो राई है बस। रेज ले ले फिर। मैं क्यों लूं रेज? मेरे को नहीं चाहिए रेज, जब एक है वो कूदने फाड़ने वाला बंदा। मैं सेज लेता हूं, चल क्या रेना लूंगा। तो रेना क्यों लेगा? क्यों ना लूं? वो डुएलिस्ट है तो तू भी तो ले। तू क्यों ले रहा है डुएलिस्ट? यही तो बोल रहा था तू।
तू रेज और जेट ले रहा है। You know, it really shapes your mental. अब मैं तो ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को फील करनी Going थी through all those ज्यादा, ruts. 10 से किल ज्यादा। का तो कॉन्फिडेंट तो था ही नहीं ना, किल का भी मैं बोल रहा हूँ टॉप 2 में किल का है। कॉन्फिडेंट नहीं था इसीलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो बस फिर बात खत्म। मेरी फट रही थी बहुत ज्यादा कि भाई गाली नहीं सुनना मेरे को डुओ से। ड्यूलिस्ट एक फ्लैश और बम से ये है वो है। अब वो तो कूदने मारने वाला है, वो तो डैश बूस्ट पे निकल जाएगा। एक चाहिए ना स्ट्रांग जो फाउंडेशन। ओहो क्या बात है, क्या बात है। ये सुनने को मिलेगा फाउंडेशन। अबे अगर दोनों ही कूदने वाले थे जेट और वो होते हैं ना, वो एकदम एंट्री लेंगे, वो घुस जाते हैं आगे, आगे जाके मर जाते हैं वो तीन, फिर पीछे साइड होल्ड नहीं कर पाते। रेना ज्यादा आगे नहीं घुसेगी, वो आगे घुसता भी रहेगा, मैं कम से कम साइड पे रहूंगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेडीज टेलर है सुबह सेम टाइम पेंट हटा के काकाशी 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 काकाशी। मतलब कैसे कैसे नाम रखते हैं बंदे, जस्ट बताओ। बॉसअब कैसा नाम है, कचरा सेट कैसा नाम है, उर्मिक क्या मतलब, क्या है उर्मिक। हटाके, हटाके क्या होता है, पटाके काकाशी हैं, एनिमे के खोदे। चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे खेलते हैं गोल्ड लेवल पे प्लेयर। हाँ संचिता तेरे को सिखाऊं। ओ कचड़ा वाली गाड़ी 150 रुपये में देगा अपनी गुलाबी कार्ड। ओ पर्पल, ओ पर्पल, ओ पर्पल एस। कितनी पर्पल पर्पल। चलो 50 बूस्टा दिए बाइक ले। वाह 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 वाह। ए जा 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 सोवा जा 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 लेकर आ। Bro, your wife, Paul and Shield first. भाई उनका प्रीम बहुत नो प्लेयर। ओके नोटेड। I have the spike. मैंने वॉल क्यों नहीं बाय करी बेस रहा है भाई, थोड़ा सा टूट गया। बढ़िया बहुत बढ़िया। स्काई एक शॉट है उसका रेस मत करियो वॉल। नहीं है मेरे पास। मीनवाइल सोवा साइड के अंदर शॉट डाल करता है भाई साहब। Spike down वो लोग कर क्या रहे हैं पीछे, पता नहीं। तुम भी तुम ये पता क्यों हारे राउंड, स्पाइक नहीं लेके आए जो स्टार्टिंग में। जा जा सोवा जा जा वो कर रहे थे। मैं तो चला गया था, तेरे घुसने के बहुत लेट आए हो तुम, मेरे घुसने के बहुत बार आए हो। तेरे जब तू ऊपर पहुंच रहा था ना उस टाइम मैं तेरे नीचे था। अरे तो मैं वहां नीचे भी तो मैंने बकचोदी करी है, मैं कौन सा एकदम सीधा ही आ गया कर ली ना था। गया वो डोर वगैरह का था, गन स्विच करी, फिर क्या था। अबे सोवा आधे रास्ते से जाके वापस लौटा है, मैं जाने लग गया, तो यही तो गलती है। सोवा को इसीलिए मैं बोल रहा था जा जा जा, हो गया ही नहीं, वापस लौट आया। वापस तू ले आ, फिर ले आया ना, मैं ही तो लेकर आया, तेरे बाद मैं ही तो वहां पर था, बाकी सब तो पीछे मरा रहे थे और मैं गन लेने की कोशिश कर रहा था, उतने में मतलब वो कर दिया। ये प्रीम ओडिन अच्छा चलाता है। Go, go, go. Reloading. सामने देख लो एक बार, क्या लगता है शॉर्टी? क्यों जा रहा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? इसलिए जा रहा हूँ, शॉर्टी वाला है तो उससे मर जाऊँ थोड़ा। रन ये पास कर देगा फिर बाइक देखना है। Let them push, let them push. Right here. Reloading. Now 122 थी भाई, बच गई। Scanning ahead. Last player standing. Spike down A. 30 seconds left. I have the spike. टच लेके ही बैठ जाना चाहिए। बैक स्टेप पता है उसे, फिर भी ओपन जा रहा है। Their lives are so meaningless. Might as well be.
आज फील नहीं आ रही है गेम में, स्किल्स नहीं है। लास्ट राउंड में केडी क्या था लास्ट में? अरे स्किन देना For you, hermanita. मैं फ्लैश करेगा? तूने म्यूट कर लिया क्या मैंने? I'm out of here. Go go. We tend to pass. उड़ के तेरे ऊपर। अरे मैं वो कर रहा था, मेरे ध्यान से टॉन वगैरह में चला गया। और टॉन नहीं है जो वो मैंने तोड़ा तुरंत और ये तेरे ऊपर से आया। मैं वही देख रहा था कहाँ गया, और क्योंकि रिवील कर रहा था वो, मैं देख रहा कहाँ है भाई, कहाँ है। ध्यान मेरे से चला गया, नियॉन क्या चीज़ मैं हिल देते हैं। एक शॉट एक ऊपर है। हेवन है एक। नीचे देख रहा हूँ। अरे यार। थ्रो हो जाएगा अब ज़्यादा वो मत करो। अपना सुबह का डांट था, मैंने देखा नहीं सही। मत कर, कहाँ करेगा? मैं बीच में कर रहा हूँ उसको बस डिसओरिएंट करने के लिए। तेरी लोकेशन बता दी तो तुमने। अबे ऊपर नहीं था अभी, मेरे ऊपर नहीं था वो, दूर था। पता तो चल जाता है। उसको लगा होगा मैंने उधर से मारा। One enemy remaining. बचा लो, गन बचा ले। सेव गन हिट। मैं जब ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था मैं वही हो गया। एक स्टेप हो गया। Now. Gotta go. Right here. I'm out of here. शरीफ ले ली। We go. Go go go. Need a drop. Thanks. Give me My ult is ready. Hey. Revealing area. 3 of them are here. Come. Let's go. Shadows traveling. Defeated. Reloading. Enemy spotted me. Shot down. Shot down. Right here. Past two. Just go. Barrier created. Careful side. Right here. ऊपर कैसे चढ़ गया उसके? हद है भाई साहब। 137, 120, both 1 HP. Last player standing. क्या कर रहा हूँ? बोला उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। किसके ऊपर चढ़ा? मेरा देख थोड़े ना, ऊपर चढ़ा हुआ है। ऊपर कैसे चढ़ गया? मेरा ध्यान थोड़ना है। मेरे पीछे तो 15 पड़ा मेरे को। तेरा ऊपर चढ़ा के देखो। One enemy remaining. ऐसी तो वॉल कर दी तूने वो। भाई और क्या करूँ उसमें? वो वॉल पे चढ़ेगा ही ना, वहाँ पे डब्बे हैं पीछे। वो याद नहीं था चढ़ जाते हैं। सब कुछ याद ही नहीं। वर्टिकल करता होगा। My advice: don't get shot. Gotta go. Cover me from short. I will ult mid. So I will ult mid. Cover me from short. I will try, bro. If I die, I'm not responsible. Come here. Come here. Cover going out. Here we go. Reload. He's on, man. Enemy spotted. Healing you. Can go B. There's one guy B, guys. Yes. Fire in the hole. Last player
standing. How I'm dying? कुछ चेक नहीं कर रहा पीछे. अरे how we throw this man? इसको कौन बताएगा कि ये सेव राउंड था हमारा? अबे सेव राउंड में भी तो एडवांटेज मिल ही गया था ना. नहीं था एडवांटेज. अब नहीं है तो कोई समझ नहीं आया. मैंने यहाँ पे ए पे मैंने इसको पिक निकाला, ठीक है. वो ए से वहाँ मिड से वहाँ घुस गया है. नियॉन यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है. और टीम बी पे जाके क्यों मर रही है, मरा रही है? बी पे मरा रही है. वो गया था मराने सोवा. मैं सोवा को हिल दे रहा था. वो मर गया तो मैं सोचा ट्रेड ले लूं क्योंकि उसको क्लासिक से मारा था. तो मैं क्लासिक से मार लेता हूं. बंदा अल्टी कर दिया. यहाँ पे तुम्हें मिल गया एडवांटेज, पिक मिल गया. दूसरा ना इको है तुम्हारा. हाँ तुम क्या करोगे? टीम को छोड़ दूं क्या? बता. Reloading. क्या ही करूँगा मैं? There they are. ब्लाइंड कर. क्या ब्लाइंड कर? और उसमें घुसेगा. तो नेड के ऊपर क्यों कूद रहा है तू? मैं नेड के ऊपर क्या? नेड से बचने की कोशिश कर रहा हूँ. उधर मेन में ओपन था. मैं क्या ही कर लूँ. Your duty is not over. Scanning ahead. One enemy remaining. Where is the other guy? Wall raised. 30 seconds left. अरे यार door. Spike down A. Wait, let me drop. I don't die so easily. अब ये बता लास्ट बंदा तो ऐसे डोर बंद क्यों नहीं करा? पता नहीं. सोवा चूती है थोड़ा सा. और मैं क्या बोल सकता हूँ. लास्ट में तू आया ना. तेरे पीछे मैं आया हूँ. मैं सेकंड आया हूँ, ठीक है. सोवा था तीसरा. मुझे नहीं पता. अभी भी सोवा मैं लास्ट में माले को सामने तेरे को मारा तो वो अंदर बैठ गया. प्लांट नहीं हो रखा है सामने. प्लांट हो रखा था नहीं हो रखा था? नहीं मैं प्लांट करने ही गया था. मेरे को मार दिया. मर गया ना. प्लांटेड नहीं है. नहीं है. उसने तेरे को मारा तो निकल के भाई पीक करे ना. अंदर बैठ गया कोने में. मैं भी फाइट ले रहा हूँ, अंदर बैठा हुआ है. मैं तो हार ही मान चुका. मैं तो सेज खेलता हूँ. बस बैठे रहो बस. दुनिया को कर दिया. क्या करेंगे मैच यहाँ पे? आप इस फ्लोर पाएंगे, वो मॉली आएगा 1 सेकंड बाद. तब तक वो रोटेट कर देंगे. हाँ वो वॉल पे तो वेट कर रहा है. I got spike. Cutting their vision. Still in sight. Just go B from. हाँ 10 गो भी. हम यहीं पे घुस गए. चलो 10 गो भी. ये मेरा तो ले डोसा. अब मैं आगे खुद जा रहा हूँ. गांड बना लिया मैंने. ये बस आधी गांड बना लिया मैंने. आधी किसी और से मरा हुआ. ये मरवा लिया पूरी. What is happening? उधर जा क्यों रहा है? पाइप प्लांट कर वहाँ जाके. Last player standing. Thirty seconds left. 8 बुलेट में तीनों मारेगा. एक ना हिल रहा है इससे. सोवा भोसड़ी का यहाँ गांड बनाने गया. सोवा लोडू है भाई. वो पता नहीं कैसे 7 किल पे है लेकिन वो लोडू है. अभी ट्राई करते हैं. इनको ये जाना है. Going B. ये पे वही होगा. वो बॉल करेगी, स्लॉप करेगा. No prisoners. मिड से जाना चाहिए. मेरे बॉल आती ही नहीं है. दो बंदों ने मार लिया. मतलब गवा बनेगा साथ में. Cover going out. Reloading.
Reloading. क्या करूँ नियॉन अलग ही खेल रहा है उसके बिना तो वो है ना मार्शल ले लिया उसने नियॉन और मार्शल भाई बेस्ट कॉम्बो था ना डैश करके मार्शल का वन टैप मारे तो लाइट में 5 घंटे लेट One city. बॉल कर दे ऊपर Last player standing. वो क्यों दूसरे की गांड बचाने जाता हूँ मेरे को समझ नहीं आता चूतिया हूँ पहले अपनी तो बचा अबे अपनी मैं डोर करा मैं सोचा उसको बचाऊं उसके पीछे भागा है वो सोवा उतने देर में सामने से मार दिया ब्रिम ने मेन खेल रहा अल्ट मार के मार देगा सबको छोड़ मोमेंट तो अलग ही चूतिया होते हैं वहीं से चला जाता 3 killed. एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से नहीं जाना चाहिए नहीं जाना Blinding. One enemy remaining. ठीक है वाह एम कहाँ है और बंदा कहाँ है वो भी ऐसे पिक करता था अबे तब नहीं जब बंदा पता है कि मेरे को वन टैप कर रहा है वो मतलब मार नहीं रहा है वो स्पाइक वन टैप कर रहा है Don't give them time to reposition. 4-5 राउंड हो गए लास्ट राउंड गन आई थी वो भी चली गई फ्री में बिना खेले एक बुलेट नहीं चलाई मैंने उससे Guys, let's save one round, please. ठीक ही नहीं करते मार्केट का फायदा ही Spike down B. I got spike. मुझे गन कहाँ से मिल गई बे मारा ब्रिम Healing you. उसको ले रहे ना कुछ पता नहीं है Weapon here. Go. Stay calm. One is mid. Last player standing. मेन राइट में Spike down mid. बस कौन अपने Remove. One back side. एंड जो लेफ्ट राइट कर क्या रहे हैं सेज सही में क्या कर रहा था वो मैं उसके हेड पे एम करा वो लेफ्ट से राइट हो गया तो मेरा एम लेफ्ट में लगने लग गया ये क्या चल रहा है मैं अपने स्पॉन में क्या कह रहा था तो यहाँ से मारा ना अपने स्पॉन में बंदा था इधर बंदा था मेरे को मिड से मारा Let's just play mid, guys. यहाँ पे स्टॉप करके जाएंगे ना ये कूद के डैश करके नहीं जाएगा ना पोटली वाला तो वो नहीं मारेंगे वो वॉल वगैरह नहीं करेंगे ये करना है इसको तो स्टाइल मारना है ये वॉल हो गई अब पीछे आ जाएगा भागकर कांडू The hunt begins. Prepare for hellfire. Spike down mid. Healing you. Reloading. Revealing area. Nowhere to run. Guys, multiple mid there. My ultimate is ready. You can press it. Last player standing. Spike ग्रीन down वाइट mid. नियॉन मादर चौथ का बच्चा ए पे यहाँ पे डैश क्यों कर रहा है भाई ए पे शिफ्ट वॉक करे वो नहीं करेंगे वॉल क्यों करेंगे वो वॉल और उसको डैश करके पहले बोल रहे बता देगा उनको भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ वॉल कर दो जल्दी और कोई काम का डैश नहीं है वो कोई काम का डैश नहीं है ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है Go. My ult's ready. उस टाइम ये रहता चूतिया इधर ए साइड बी साइड तरफ तो बी मेरे से को अगर कवर बी नहीं मिलता है मिड होता ना बी टू मिड होता है One enemy remaining. 30 seconds left. गांडू को ऐसे किल मिल रहा है मैं क्या बोलूं कुछ भी मिल रहा है इससे ब्रिम बढ़िया तो राउंड चला गया Gotta go. Oh, I'll keep going. टॉप में टॉप ही होगा यहीं तरफ से मारा था उसने Gotta go. I've shortcut. 10 seconds left. अल्ट्रा ये बढ़िया है
ये बहुत बढ़िया। हाँ ये और बढ़िया है। डैश कर लो हमने। डैश कर लो। ब्रेन डेड है भाई ये। ऐसे ही बंदे भाई खेलते कौन हैं। सा बोलना वहाँ पे डैश क्यों वहाँ पे साउंड क्यों देता है? अरे छोड़ मेरे को खड़ा रह गया उसने कुछ किया नहीं। लोड़े आदमी है ये बंदा है ना तू मैं इसको बोलूंगा ना इसका उल्टा ही रिस्पॉन्स आएगा मेरे को 100% एक्सपेक्टेड है। सामने वाले भी लिख रहे हैं Take Neon, wait for the team to die, lurk, get frags, lose them. Guys, can you come with this and wall? Quiet. See ball every time. I'm out of here. Oh, every time you dash, every time that's why you ball every time. Brain dead है भाई. ओ मैं ले ले ये काम आएगा तेरे. Here. ओ मिनवा. Here. I am not the hunter. अब बोलेगा वो इसका टी वाला अल्ट मारा इसने ऐसे वाला 80 ब्रो इसको चाहिए रिवाइव वाला पक्का बोलेगा मैं तो निकलने वाला मार चला है Cutting their vision. नहीं जा सकते रहने दे सुन वॉल करूं लेफ्ट वाला अरे ऊपर भी है भाई ऊपर भी है छोड़ नहीं फायदा है मैं पीछे छोड़ना जो वापस आया या तो मैं अल्ट करके जाके डाइव करूं एक को मारने का ना छोड़ आ जा वापस आ जा इतना है तो जल्दी रोटेट ही कर जाओ अब मैं अकेले रोटेट करूंगा मरूंगा रोटेट करी मैं पता नहीं क्यों लग रहा है पीछे कोई ना कोई होगा वेट गो भी ना वो रोटेट कर ले वहीं रुके रहो देखो क्या पता एंट्री हो जाए don't take one let's go Guys, why 30 seconds left every time we can go B now बोल भी कौन रहा है भाई साहब अरे जो पता ही था लगा ही था यहाँ पर लास्ट प्लेयर इतना प्यारा ट्रेड दिया ना फोन है मेरा 10 seconds left क्या कर रहा है कीबोर्ड वॉरियर Why you dash every time and announce to the world that we are coming here? Guys, and like, don't be scared of smoke. Like we can use rain on flash. Last round in the half. दो ऐसे एजेंट है वहाँ पर जो हर राउंड रोकेंगे तुम्हें औकात नहीं है कोई जा पाए वहाँ पर जेट के अलावा भाई क्या कर रहा है वो ले लेना हाफ शील्ड ले ले भाई तू तो हाफ शील्ड पे भी खेल लेगा ले ले अपने से पैसे है ना लास्ट राउंड है गार्ड में लेके जाएगा जो नहीं देने वाला Cutting their vision. They will cover. Take this. Coming through. Scanning ahead. भाई बहन से इतनी लंड बॉल बनाई ना अभी ये मैं बॉल पे खड़ा हूं मेरे पे ही बॉल बना दी किसने बनाई है बॉल ये लंड ये भोसड़ी का नियॉन हाँ वो मैंने देखा मैं भी बिल्कुल डिसोरिएंट हो गया था मैं तेरे पीछे आ रहा था तेरे को कवर देना गन नहीं थी क्या सोवा पे सोवा ने मेरी बुलडॉग पे उठाई है पता नहीं switching sides Flash with entry. Okay, now Stand tall. We are Valorant. We are fighters. भोसड़ी वाला तो है बहुत बड़ा ये नियॉन क्योंकि अब नियॉन भी भोसड़ी वाला है सोवा भी भोसड़ी वाला है दोनों गांडू है हम दोनों बॉटम फ्रैगर है मैं क्या ही बॉटम फ्रैगर है 2 किल और 3 किल से क्या ही फर्क पड़ता है 2-4 राउंड मैं लर्क कर लेता हूँ देख 3 किल लेके दिखाता हूँ तेरे को अगर उस टाइम तक गेम बची तो नियॉन ने कैसे मारे हैं तूने देखा नहीं है क्या और सोवा ने कैसे मारे तूने देखा नहीं है क्या मार तू अबे तो मैं वो करता ही नहीं हूँ मैं सामने से घुसता हूँ चूतियों की तरफ पीछे नहीं जाता मैं पूरी टीम के साथ होता हूँ मैं मरता हूँ मारना तेरा किल करने का काम है हाँ अब क्लासिक से मारूं यही तो बात है 2 राउंड बाद गेम ही खत्म है चुप हो जा राउंड स्टार्ट होने के बाद ही बोलता रहता कैन बी इधर हूं Sage watchman all cat ole hale Enemy A. Kill. Many enemies A. Spike planted. Reloading. Backstab. Can you
हील मांग रहा है। अबे कहाँ से दूं भाई, इधर बंदे हैं मेरे। Last player standing. क्या कर रहा है ये चूतिया सेज भोसड़ी वाला? तू गांडू है क्या थोड़ा सा? क्या कहाँ क्या कर रहा है तू? मैं मरा रहा हूँ अपनी। मैं वहां पर था, उसको देख रहा था तो हील। किसे देख रहा था? अच्छा वो देख रहा था, मैं कैसे मर गया फिर? अबे तो हील क्यों चिल्ला रहा है तू बार-बार? हील वो तो मर गया, न्योन मर गया। अच्छा अबे तो फिर क्या करूं मैं? पीछे मैं नीचे आ चुका था उसको हील देने के लिए। मरने के बाद हील देने के लिए नीचे आ गया, ठीक है बराबर। मैं उससे पहले ही आ चुका था। नहीं, उसने भी बोला था हील चाहिए, तू अकेला नहीं है बोलने वाला। उसी को चाहिए थी, मुझे चाहिए भी नहीं। उसी को देने की बात कर रहा हूं मैं, नीचे उसी लिए आया था। भाई जाके स्ट्रीम देख मेरी और बता मैंने क्या गलत किया है, ठीक है? अपना अबे तू यहाँ पे खड़ा है, तू यहाँ खड़ा है, तू यहाँ सुन, यहाँ खड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ खड़े होके तू मेरे को वहाँ नहीं था, मैं उससे लेफ्ट था। और मैं उससे लेफ्ट था। क्यों था वहाँ पे? क्योंकि उसको हील देने के लिए उल्टा मुड़ा था भाई चूतिए। चूतिया भाई, तू लंडा है तू। हाँ ठीक है, चूस ले फिर मेरे को। मम्मी को बोलो। नहीं, मेरी मम्मी ऐसे काम नहीं करती। करा होगा ना तभी तो बोलो। मुंह में लेने से बच्चे होते हैं। वो ऐसे ही लग रहा है मेरे को, ऐसे ही हुआ है। तेरे जैसे तो मुंह में लेने से ही होता है। अच्छा स्कूल में काश पढ़ाई। हाँ तेरी मम्मी क्या ट्यूशन में बिजी रहता? तब भी इतना कम रैंक है। पढ़ाई नहीं होती थी ना सिर्फ। बट मेरी मम्मी तो पढ़ाई करी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं होती। वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ाई तो होती नहीं थी। वो तो तेरी नहीं होती थी। हाँ तो तेरी मम्मी भी नहीं करा पाती थी ना। अबे मेरी मम्मी कराए ना कराए, उससे तेरा क्या लेना क्या देना है? मैं जाता था ना ट्यूशन। तू कराती थी भाई। थोड़ी जाएगा। जाता था ना, जाएगा क्यों नहीं? जाता था। बता कहाँ जाता था? चल कहाँ जाता था मेरी मम्मी के ट्यूशन में, बताइए। मम्मी भाई, मम्मी आती थी। कहाँ पढ़ाती थी बता ना मेरी मम्मी। मम्मी से पूछना, इतना नहीं पता तू बता मम्मी का मुंह लग रही है। अरे तू बता ना, तू बता कहाँ पर आता था वो। You fought well. Rest. Spike planted. Bro. Yeah, come bro, what are you doing? Shadows. Why are you hiding? Because I have a fucking Bucky, you know. One enemy remaining. I'm out of here. Gun here. Can I ask why you were hiding in garden all that time? Can you explain? Listen, I was not hiding. I thought you were watching for someone here. Yeah, bro. That's the only place where I can watch. Bro, I literally I thought that you are just hiding for someone. I'm out of here. Mid. Barrier created. Go, go, go! Go, go, go! Reloading. Spike planted. Fire in the hole! Last player standing. Gotta go! My ult's ready. चलो Attackers चलो win. रेना लूंगा मम्मी। भाई कौन बोल रहा है रेना से अनइंस्टॉल? कौन है चूतिया? टैब दबाओ, बॉटम फ्रैगर देखो, सपोर्ट बॉटम फ्रैगर के बाद लास्ट टाइम क्लेम करो कि गेम के बीच में तो गाड़ मर जाएगी अगर बोल दिया था। किसको? इनको? सुबह को कह रहा है? मेरे को क्यों बोला उसने?
मैं तो अच्छा खेल रहा था। इतना प्यारा खेलता चलना तो अच्छा Match ही है found. क्या कर नियॉन इतना लंड नियॉन था ना। वो तो था ही, वो तो था ही। इस गेम में नियॉन, लास्ट गेम में जेट मेन के पास जाके खड़े होकर बैठ जाते हैं। जेट ने तो फिर भी अच्छा खेला था, किल तो बहुत करे थे बहुत उसने। अच्छा खेला। अबे किल कर रहा है बंदा अगर घुसते हुए मैं तो एंट्री की बात ठीक है। कर रहा हूँ, कोई खुशी नहीं है तो वहां जाके बाहर बगल में खड़ा था। मैं क्लासिक से मैंने पहला पिक निकाला तब भी बैठा हुआ है, देख रहा है कि मैं जाऊंगा आगे। मैं जेट मेरे ले रहा दोस्त के लिए मैं फ्लैश के बाद फ्लैश कर रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ मैं जेट ले रहा। कम से कम मैं चूतियों की तरफ पीछे नहीं मरता हूँ, साइड में घुस के मरता हूँ। तो खेल सही अब दिखा दे सेज की शक्ति, धूम मचाए बाकी सारे मचो। कुछ और खेल ले, डेडलॉक खेल ले, डेडलॉक खेलता है ना गेको, सॉरी डेडलॉक। आई एम लाइव ऑन ट्विच, कम सपोर्ट माय स्ट्रीम। भाई किसका स्ट्रीम देखना पड़ेगा? पॉप नॉट AWPNOT। ट्विच वाले अलग ही लेवल के होते होंगे ऐसा सोच रहा हूँ। AWPNOT यूट्यूब पे भी है, गूगल पे ही सर्च करते करते आ गया। ट्विच TWITCH ट्विच ट्विच AW है या AWP है? AWPNOT AWPNOT Oh my God. उसके बाद 1080p स्ट्रीमिंग इनेबल्ड है, इसको 1080p कैसे दे दिया बे? ओए जिंदा है मर गया? I will stop anyone who tries to come through. I must keep my किससे बात secrets कर रहा with है? me. तेरे से बात कर रहा हूँ और किससे बात करूंगा? ट्विच के बारे में पूछ रहा हूँ, तेरे से ही पूछूंगा, और कोई है? तो 2 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, 22 उसके ऊपर। इसको 1080p का स्ट्रीम कैसे दे दिया करने? बड़े चूतिया ट्विच वाले। Spike down B. Here. स्पाइक ले गए? स्पाइक पीछे ही था, यहाँ तो नहीं था। गिरने की आवाज आई थी बहुत पीछे। लग रहा है गए आजा। 30 seconds left. उधर से आया तो गए कहाँ से? One enemy remaining. Spike down A. नहीं है सामने, प्लांट करने का। Spike spotted A. 10 seconds left. Here. Watching here. Reloading. Good. Again.
ये स्पाइक मैं ये छोड़ नहीं सकता, छोड़ देता हूं। अरे भाई साहब 8 पूरे बंदे बैठे हुए हैं, ये भगवान। स्टिंगर मिल गई उनको, 2 रहे। Stim beacon down. Someone's there. Right there. Last player standing. Spike planted. सेव करेगा क्या? मैंने किया उनका तो वैसे ही फुल बाय आएगा ना, इसको वैसे ही स्पेक्टर ही खरीदनी पड़ेगी नेक्स्ट राउंड। या सेव करना Buried. Human or not, that omen can be killed. मेरा तो फुल बाय है। This is our home. Keep them out. मैं क्या उधर? Smoke's down. Need healing. I've got your trail. ले ले बंदे मेरी, ले ले। Spike ले planted. ले भाई, मेरी भी ले ले। Lock in sight. आजा थोड़ा इधर। उसका ट्रैप खत्म हो गया। Smoke's down. एक यहाँ पर है। Who trained you? Launching smoke. One enemy remaining. कितनी स्प्रे करी है तूने गने? अबे एक बंदे को मारा है, तेरे को गन दे दिया है। तूने ही करी है जो स्प्रे करी है। Gun here. Reloading. I'll teach him to respect their 105 मारा मैंने। वही ना, तूने ही स्प्रे करा है, मैं थोड़ी स्प्रे करा। मैंने अभी लास्ट में करा बस। हाँ तो मैंने तो शुरू में बस एक बंदा मारा है, कितना ही बुलेट लग गया होगा, 10 बुलेट, 12 बुलेट, 15 बुलेट। Need a drop. Thanks. उनका फुल बाय था, इस बार हमारा वही फोर्थ साइड था। जब उनका ही तो था वो। This is gonna be fun. Taken down. Spike planted. बस तो है पाए। अगले सबके पास ही है, इसके तेरे पास ही तो नहीं है। तेरे पास है। Fall back. सेव कर ले, क्या को सेव कर ले। चल कर ले ट्राई, कोई ना 2v3 है। Launching smoke. Reloading. हट गया। अच्छा एक बंदे को अगर बाय करवा दिया तो वो तो काफी है। Right there. यहाँ तक तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? नहीं आएगा। डिपेंड करता है, अगर इधर प्लांट होगा तो आ जाएगा। देखो भाई को देखो। सेव करने का मतलब नहीं हुआ।
तीनों मर गए मेरे पे। तुम मरे वो तो किसका किल्ला? मैं तो मरा डबल पीक के चक्कर में। वो भी तो कुछ ही करा। यहाँ से बाहर पीक क्यों कर रहे हैं बेटो? वहाँ हर बार एक बंदा आता है तो मैं मार देता हूँ इसीलिए। ये तीसरी बार था। तीसरी बार 2 बंदे आए तो मैं नहीं मार पाया। मैं एक ट्रैप लगा के चला जाए इधर। Spike down A. Behind you. Enemy spotted A. One enemy remaining. TP. मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हद से ज्यादा। कहीं भी हो सकता है। टीपी तो इसका इधर ही आया था। मेरे को यहाँ से टिक पे आता है देखा शायद। यहाँ है तेरे साथ मेन है। नहीं है भाई पता नहीं। मेन है मेरे स्मोक में है। वो नहीं तब दिखाना है वही तो बात है। दिखाई नहीं। तो अब तो पता चल गया। मेरे बनने क्या बोल रहा है भाई? नहीं है भाई पता नहीं कहाँ है। क्यों बोल रहा है? नहीं दिखा मेरे को इसीलिए बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ी पता तुझे कहाँ से। मुझे पता है तेरे को नहीं दिखा। नहीं दिखा होता तो तू मार देता ना। ऑब्वियस बात है। तू बोल रहा है भाई पता नहीं भाई कहाँ है। मेरे मरने के बाद तू ये बोल रहा है भाई पता नहीं कहाँ मेरे पर पीछे से भी तो आ सकती है। ये थोड़ी पता है वहीं पर है। अरे उसने वो डाला क्लोन डाला। मैंने क्लोन को तोड़ दिया। मैं इसको बहुत पहले मार दिया लेकिन मैं बहुत वो हो गया। अब तो मिल गया था क्योंकि 2 मारे उसके बाद फिर 30 अल्ट करा फिर स्मोक करा फिर वो सामने था। तेरी फट ही नहीं हो जाता ना। हाँ भाई फट ही नहीं। फटने क्या है भाई रियल में? मतलब डर गया भाई थोड़ा कि अब पता नहीं अब हो जाएगा। राउंड स्टार्ट होना चुप हो जाएगा। बोलता है वही तो बोलता रहे। मैं मोस्टली राउंड स्टार्ट होने के लिए बोलता। तो मिनी मैप में दिख रहा था वो। साइफर को उस पे भी स्मोक कर रहा था। दिख रहा था इसीलिए तो मैंने स्मोक किया कि फालतू में मरे ना उससे पंगे लेकर के। वो मर गया उससे पंगे। मार ना वो उससे फाइट ले रहा। तू पिक करके मार। उसको स्प्रे कर रहा है तो स्मोक कर रहा है। निकला तो डैश करे वो कर गया अपना डिसमिस कर गया। रेना की बात नहीं कर रहा। साइफर की बात कर रहा। और कौन सा बंदा था? रेना ही तो मैं था। अपने इधर साइफर बैठा हुआ था कोने में जिसको तूने उसको कैसे मारने? स्मोक ही कर दिया उसको तो। जीत गया। ठीक है खुश हो जा। जीत गया ना। तू कुछ बोला तू जीता है। मैं तो खुशी हूँ भाई। मैं तो खुशी हूँ। मेरे को क्या दुख रहेगा? तू ही दुखी रहता है जिंदगी भर। मैं भाई और खुश रहता हूँ। वैलोरेंट खेलते टाइम रुपया गया। मैं कहाँ मम्मी बनाने जा रहा है रेना? 3 सेकंड में क्लच करेगा। बचा ले पैसे। शेरिफ से कहा One of my cameras is broken. Oh, wait. रेना भी मेरे पास तो बाय है। बाकी सब जाओ मार चुराने। मेरे पास भी बाय है। चाहिए तो ले ले। ये तो ले भाई। ये दे दे चल मेरे पास। तो मांग लेना प्रॉपर गन। जब मैं अल्ट पे खेल रहा हूँ तो क्या फायदा? बाकी वो है ना। बाकी को कर रहे हैं तो क्यों लेना? तूने क्या मांगा वैसे इतना सस्ता? कुछ भी नहीं मांगा। Blocking sight. What's this? मेरे मैंने छोड़ रखा है। वो हो गया था। साइड स्कैम। बता दिया उधर कोई आए तो। I've got your trail. तो क्या देख रहे हैं ये दोनों बैठ के? वो आ रहे अंदर आके मार के चला गया मेरे को साइड। दोनों बैठे हुए हैं। है वहाँ। वाह। Spike planted. भाई साहब मेरी किस्मत ही चूतिया है। Enemy 100%। Last player standing. सबसे पहले का बैठा है साइड में ये। One enemy remaining. क्या कोई रिचार्ज हो जाएगा? तो निकल जाएगा। इसके पास हो गया। अरे मुझे लगा पता नहीं उठा है। Wind, show me where to go.
Reloading. अरे मैं इधर बैठा हुआ था वहां से आगे मारे इधर आगे मुझे लगा एक रेना यहाँ है क्या 2 मेरे को लगा देख रहे होंगे मेन Reloading. वॉक के थ्रू आया वॉक करा मार के चला और मेरे को अलग ही खुश हो गया ऐसा लगा मेरे को। Smoke's down. Dim beacon here. Who's next? मेरे पास है आखिर मेरे पास है ये कौन तेरे पास है ये मेरे पास आ गई पीछे गया Spike down B. One enemy remaining. Got 5. That's big. Where will they go this time? Need a drop. I need this. Thank you. My thanks. Safety's off. Right there. Enemy spotted me. Run, little man! Shot my wingman. One down. होल्ड करके आगे मत जाइए साइफर मीन वाले पता नहीं क्या कर रहा तेरी हेल्प के लिए आया था पीछे ले जा जा One enemy remaining. Spike down A. Last player standing. ले गया वो 30 seconds left. चोरी कर रहा था यार ये चुपचाप जाके सेफ प्लांट दे दे We do what we do. Get back to chilling. Equipment. Reload. Thanks. Alright, push, second one, push. Kind of. It's all you, little homie. डिफेंडिंग में क्यों प्लांट करते टाइम पे करता ना इतना ज्यादा बढ़िया रहता। चल ठीक है अभी वो उठा ले सकता है Dizzy has targets. Nice. The hunt begins. अरे वो उठा ले सकता है Dizzy has targets. Nice. The hunt begins. अरे Yikes. My ult's ready. One enemy remaining. Spike down A. Spike spotted A. करो फने आएगा Aw, thought to try harder. किधर जाके वो कर स्पाइक ऑडियंस है Pay attention. अच्छा वो वाला अच्छा अच्छा ऐसा तो पता नहीं तो क्या करने को बोल रहा है उसके अंदर। Thank you. Right here.
टाइमिंग हुई ना मेरी, जैसे ही वहां से कूदा हैस का ही है। One enemy remaining. Side. करने दे प्लांट प्लांट फिर तो हां पता ही नहीं। हां मतलब करने दे उसको अपना मतलब एक एंगल Right there. है बैक ऑफ साइड Blocking sight. Enemy B. 82 Last player standing. 44. अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन ये जा रहा है वो। भागने की बात नहीं है बची है। Last round before the switch. वो ज्यादा है राउंड ये वाला ना। हां मैं भी मर ही जाता, वो जंप किया था ना जब क्योंकि वो लो था इसीलिए। हां मैंने फ्लिक मारा, लो ही था, उसको बॉडी पे लग गया। नहीं अपना टीममेट भी लो था उधर। अच्छा वो दूसरा वाला पहला वाला हेवन पे जैसा गैको। I've got your trail. Reload. Dizzy's up. ये रोटी की है। Get him, wingman. प्लांट नहीं कर एक हो गया 120 कहाँ ही प्लांट है? Spike planted. Last player standing. तो दिखा इसने उसे शूट नहीं करा। Camera taken out. सामने से रहे और उसको नहीं मारेगा। फ्लैश तोड़ूंगा। फ्लैश भी नहीं तोड़ पाया है, जमीन में देख रहा था, फ्लैश से ऊपर ही एम था। तब पीछे हो गया था, पता नहीं जोरों से मरने के लिए कौन कौन गया आगे। मिड से चलें। Going B. Here. साइफर मोस्टली ये लगेगा फर्स्ट राउंड, समझ रहे हैं। Here. स्काई होगा फिर इधर। ठीक है चल। Right there. मैं घुसूंगा अंदर, आ जा, मैं डैश करूंगा, मेरे बाद घुस। इधर आ ना। Reloading. मैं देखने गया था कोई है तो नहीं। Enemy kill. Launching smoke. Reloading. Wingman's gonna plant spike. प्लांट कर रहा है। ओके ज्यादा। Enemies are mid. जस्ट आजा वापस आ जा देखो। One enemy remaining. No charges left. Is this too easy? It feels easy. Yes. इसको हेड दिया योरू 46 का पता बस। किसको? योरू 46 बॉल गन। रीलोड। मैं ये चलना चाहिए नहीं? ना ए पे वो है साइड। Going B. टीम उधर है। आने सबको आने दे। तो मैं उधर मिड डोर से आ रहा हूँ। रोक नहीं करना चाहिए। मेरे पास स्टिंगर है। इधर है। इधर है।
ये क्या तो मैं इधर हूँ भाई Thanks, little man. I got eyes here. हेलो मौत वही रहता है I got eyes here. Reloading. Enemy spotted B. One enemy remaining. नहीं यही रहा वही क्या जाएगा Run, little वापस तो man. उधर ही बचने जाना है Shot my पक्की wingman. है क्यों जा रहा है क्लोज पता नहीं क्यों जा रहा है पता है बक्की फिर भी मैं जाऊंगा भाई आगे अपने बुलडॉग दबाने हैं जो भी करना है अब ये जाना Sorry. Going A. मिड पे भी जाना चाहिए मेरे एक बंदे को मैं जाऊँ या तुम लोग में से कोई जाएगा मिड नहीं फास्ट पुश है साइफर आजा जल्दी आजा हम पे वो है ना चैंपियन को हम पे बेकार कर लेना यार कुछ वाई नहीं कर लिया भाई क्या मजाक है Stim beacon here. ट्रैप्स होंगे वो Launching smoke. Cutting their vision. Wingman's planting. I have retrieved the spike. Gotcha. Reloading. Last player हेडशॉट standing. क्या चूतिया टाइमिंग हुई मेरे साथ अभी थीम तब जिगल पे इतना देख रहा हूँ कोई नहीं जैसे ही राइट हुआ वैसे ही आ गया तेरे को तो जज से बड़ी लेफ्ट से हाँ तभी पड़ी ना तब एक ही देर से देख रहा था तब कोई नहीं था क्यों प्लांट कर रहा है वो Hey, little man. रुक जा Fuck 2 this up. सेकंड Let's hear it. ओए बे सही बात Reloading. सारे बैठे बैठे पे देखो आजा बी लॉन्ग आजा फाइट लेके पी जाऊंगा लॉन्ग का प्लांट दियो ओ बेटा भाई हाँ बेटा मैं कुछ और चल रहा था तो होता है ना मसल मेमोरी टाइप रास्ते याद होते हैं कि हाँ उधर I ही got गए eyes here. Enemy B. वो कर दे सामने वाला Reloading. दो तो होंगे ही Here. Wingman's gonna plant. वन भी बोलेंगे Cutting their vision. Thanks, Wings. Reloading. Reloading. Block the sight. One enemy remaining. I know exactly where you are. Last player standing. Molly. ये होगा उसके पास देख लो नाइस राइट टाइम पे मॉली करा थोड़ा गलत है बट ठीक है गलत क्या है My smokes can block थोड़ा the लेफ्ट enemy's चला line गया of ना sight. Once they're एकदम blind, परफेक्ट था वो move. उसका मॉलिक का लाइन कुछ है ही नहीं बस एक उस पे कहीं भी खड़े होके वहां पे मार सकते हो लगेगा यहीं चलो ना ज्यादा ऊपर क्योंकि मारेगा आएंगे तो वो। बाउंस बैक हो जाएगा ना Going B. आ जाओ बी आ जाओ बी आ जाओ बी आ जाओ तो मतलब गन मांग ले उसको बोल साइफर आई फॉर यू गन मांगू चल उसने मांग लिया अब क्या मांगेगा अब पहले तो उसने late बाई हो करी गए, दे देना है अब तो लेट हो गए ब्रो सॉरी कोई नहीं ट्रैप लगा देना लेकिन I got strike. Enemy spotted B. सामने वाला कर देना स्मोक पहले कर दिया था कर रहा हूं यार मैं ऑफ लेके वो हाथ में लेके घूमूंगा सामने आके मर गया उसको स्मोक के थ्रू घुस देना था Blow him up, Mosh. मैं गया अंदर और ये लोग कैसे मर गए सामने समझ नहीं आया Stim beacon down. Launching smoke. Bro, already got. Last player standing. वो स्मोक के थ्रू कुछ करते मर गए और They mess Top with one of and, us. They mess with all of us. Right there.
सेव करना है गाइस, सेव कर लो यार, अगले राउंड करते हैं, ये राउंड सेव कर लो। You must have full buy next round. तू ये ले ले, स्टिंगर ले ले मेरे से। चला हाँ, ले। सेल कर दे, अरे सेल कर दे, अल्ट चलाऊंगा, सेल कर दे अपना। फेंक दे क्या भी है, प्लांट हो जाएगा तो पोस्ट करने का Someone's there. वो तय ऊपर जाने दियो क्या कोगे। अरे यार नीचे था यहाँ। I've got your trail. कर दे पहुंच गए हैं। तेरे पास भी आ गया ना एक, रेना आ गया है। Last player standing. Open up the sky. लोडेड भाई मैं तेरे को बोला कि पहले ही कर दे। अबे वो करने से क्या फर्क पड़ता है? अबे अल्ट तो तू जब टैप होगा तब भी तू यूज कर सकता था ना अल्ट को। ना जब अल्ट खत्म हो तब मॉली गिरती है वो। अल्ट खत्म होते ही मॉली गिरती है अगर तुम मॉली के बाद अल्ट कर दोगे। कोई नहीं, एक और राउंड मतलब हो गया था, 2 बंदों ने स्टार्टिंग में ही मार दिया। तो लास्ट में तो क्या ही था, 3v4 था उनके पास गन थी, हमारे पास 3v4 कैसे था? 2 तो पहले ही मर गए थे उनके। 3v3 अपना पता नहीं 3v3 साइपर ही मरे गया था फिर देखो भाई। मेरे को तो 1v3 था ना लास्ट टाइम। उधर साइफर था, चूतिया बंदा पीछे चला गया भोसड़ी वाला। पीछे आ जा, मेरी हेल्थ बहुत कम है। हाँ दूसरा तो हो सकता है मेन पे स्टार्ट तो कर ही सकता है। Our spike carrier is killed. भाई पीछे Spike down A. Who's next? Last player standing. देख लिया यार गया मैं। ये कैसे खोलते हैं भाई, ये रुक अपने बिल्कुल उसी में। पहले जमीन पे रख देते हैं ना, और जैसे ही फोन खुलता है ऐसे ही हम दबा देते हैं। जब अल्टे में होते तभी जमीन पे रख देते हैं, पर खोलते नहीं, मतलब जमीन पे वो प्लेस करते हैं, फिर वहीं खोल के F4 वो साथ में देते हैं। क्या कर रहे हैं बता। क्या करें? मिड पे मैं घुसता हूँ। अरे मैं डैश किया भाई, मेरे पूरा मैंने एक भी डैमेज नहीं पड़ा अंदर से, और साइड से मारा मेरे को किसी ने, जबकि साइफर आगे तक पहुंचा हुआ था तो भी। और भी हमारे पीछे कोई भी नहीं आया। नहीं बोलना ही नहीं है इसमें, क्या ही होता था अपना मारने के लिए उसको, साला इतना दूर खड़ा था 1 किलोमीटर पे। अब तुम लोग बी मेन जा रहे थे यार, मिड किस? I know exactly where you are. सब के सब बी मेन जा रहे थे। मैं अकेला इधर घुस रहा था कि मैं घुसूंगा उधर पहुंचूंगा। Last player standing. मत जा भाई, मिड क्यों साइड कर रहा है? मिड एक ही बार तो गया भाई मिड पे, पिछली बार भी तो गया। मरा थोड़ी पिछली बार, हारे तो की वजह से सारे मिड पे वही हो गए। मैं इस बार भी सबको बोला है बी जाओ, सबके सब ये इधर मिड आ गए, मैं अकेले जा रहा था, अकेले में देख के जाता आराम से, ये सब आ गए तो मैं घुस गया फिर कि चलो घुस रहे हैं सब। कोई था ही नहीं, अकेले घुस जाते। अबे मैं सब तो थे तो मिड पे ही। I'm gonna save. मिड पे थोड़ा बड़ा
कहाँ अंदर जाने वाला? मैं तो डैश करूंगा ना कहीं भी। रेना डिंग। Smoke. Enemy spotted B. इधर ऊपर है। मैं ऊपर देख रहा हूँ। राइट। या तो ऐसा कर स्मोक करके निकला वहां से। लास्ट में लिखो नहीं करा इन दो तक। पता नहीं भाई, बोला भी नहीं। क्या पता मार्शल चलाने का शौक हो अच्छा हो। देखो मुझे स्पाइक नहीं देंगे। तो मैं लेफ्ट साइड जाके क्लियर कर दूंगा। सामने जाना ही नहीं है, रुक जाओ। तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, काट दूंगा। बस कर दिया आवाज इसमें। Reloading. Still in sight. ये किसका गन है? ये हवा में चल रहा है। किस कोई हैक कर रहा है क्या? Spike down A. Bro. मार उसको यार। Open up the sky. Got the spike. नहीं जाना भोसड़ी के। ठंड मरा रहा है अपन। ले रखा है कहाँ ही से लेकर आया वो। अबे उसने अल्ट करा, तीनों बंदे दिख गए कि तीनों बंदे वहां पे हैं। मैं स्पाइक लेके पीछे भाग रहा हूँ। वो कब नहीं गाना मरा रहा। और चलाने लगी। Down you go. Go. 30 seconds left. नहीं सकते इधर से। इधर से होता वो पहले पहुंच जाता। बेटे से आ सकता है वहां से। Spike planted. इस लाइनअप पे खेलना चाहिए था। ये तो तू देख के भी मार सकता है लाइन। पॉप उठाने का बहुत मन करता है। मत कर 2v1 है। गन की आवाज का डर था बस। Stim beacon down. Flash करें। Right here. Molly. One enemy remaining. नहीं उठाता हो। अबे मार देता, तूने वो कर दिया। हाँ ठीक है। एकदम मेरे क्रॉसहेयर पे आया था वो। नहीं था, वो नीचे था तेरे क्रॉसहेयर से, देख ढंग से। अरे मार देता मैं, थोड़ा वो करता। तो पता है वो आसान शॉट था, लेनी चाहिए थी यहाँ पे। नहीं लेनी चाहिए थी, 2v1 था और फ्लैश थे दोनों के पास। दोनों के पास फ्लैश। तो मारूंगा। नहीं मार सकता था, अगर फ्लैश करके आते ना तो एक को नहीं मार पाता ऑफ से। अरे मार देता, उस टाइम मेरे को ऑफ लेता मैं मार देता। ये कर देते वो करते, उन्होंने करा क्या देखा तूने वहां पे? करा फ्लैश किया वहां पे, उसको मार देता रहना को ऑफ से। मैं मार सकता था, मैं जेट हूं ना। मैं ब्रिम होता तो मुश्किल है भाई, मैं कभी लेता ही नहीं। मुश्किल ये शॉट तो वही मारेगा तू, चाहे ब्रिम होता कोई भी एजेंट हो तू, माउस तो वही रहेगा तेरा। तेरे को एक को मारना है। कॉन्फिडेंस और बचने का। तेरे को क्या कॉन्फिडेंस? मत ले ऑफ है सामने, क्यों जा रहा है? आगे पड़ेगा, साइफर भी है, पता चल गया। देखो भोसड़ी का अगर स्पाइक उठा के वहां पे प्लांट कर ले, उसको एबिलिटी दे रखी है भगवान ने। भाई देखो ए पे प्लांट करते यार, मेन पे यहां पर। अब तो करेगा ये तो फट जा। रेना डैमेज। छुप जा भाई, छुप जा। मैं तो छुपा हूं, तो अपना देख रहा हूं ऊपर खड़ा है। Somebody's there. What up? I've got your trail. तोड़ दियो मेरा।
पीछे रह गया। One enemy remaining. My ult's ready. Call out sick next time, yeah? Shoot the bad guys. How's that for a plan? हेड मारा था मैंने साइड पर 75 Need a drop. एक स्मोक बेच कर दिया। दिला दे लास्ट टाइम। हाँ अरे बोलने तो दे बी दबाने दे। छोड़ दे यार बोल तो सही है। कंट्रोल ऑफ हो गई क्यों हम परे यार देखो का फ्लैश कर दे। देखो वो लेफ्ट में हो। आगे वाला करो स्मोक। तीनों कर दे सुन तीनों कर दे। हाँ करो हेवन या नीचे नीचे वो हेवन से हो गया मेरे पास। पहले देखा था ना। स्टार्ट करना पड़ेगा तेरे को। 30 HP है मरेंगे पता नहीं। Spike down B. Last player standing. कैसे मर गए सारे के सारे। Defenders win. भाई हमें पैसे नहीं है भोसले के गन मांग दिया तूने भाई। गन खुद मांगी है उसी ने लिया है गेको नहीं। गेको रेना है पता नहीं किसने गेको ने दी थी। एक तो मैंने बाय किया था एक को तो नहीं किया था। सामने वाला स्मोक नहीं करता था है वाला वो करना था। सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्मोक था। स्मोक होता है अबे लैंड स्मोक होता है। अबे तेरे को लग रहा है देख अगर तू एंट्री चार कर बंदे रहा देख रही होती है तू एंट्री कर तू मर जाएगा लेकिन तेरा प्लेट कोई ना कोई ले लेगा। वो कितना पिक करता है वहां से तू खेल रहा होता है वहां पे डिफेंडिंग वहां से कितनी बार पिक करता है तू चार बंदों के सामने। मेन ऑपरेटर की दिक्कत होती है। ऑपरेटर होती है तो मैं कई बार कर लेता हूं पिक। स्टार्टिंग में करेगा ना बाद में वापस नहीं करता वो। तो उसी लिए तो चाहिए होता है स्टार्टिंग में ही घुसने के लिए तो चाहिए होता है। देख जब मैं डैश कर रहा हूं मैं डैश कर रहा हूं तो मैं सामने ध्यान नहीं रखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं राइट साइड में। अरे तो लेकिन हेवन का दो स्मोक का ऑप्शन है तो हेवन का बेटर है वो बेटर है भाई। मेरे को एक हेवन दे दो और एक इधर दे दो बाकी सारा खुला छोड़ दो मेरे को कोई फर्क नहीं वाला बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो सिटी से तो बहुत मतलब सारे बंदे आते ही आते हैं हमेशा वहां। टेररिस्ट वाला वैसे भी इजी होता है मारना क्योंकि सेम लेवल पे होते हैं। हेवन कर दे और सामने कर दे तो पूरी टीम अंदर घुस सकती है समझ रहे हो। सामने चार बंदे 5 बंदे हैं 5 बंदे सामने देख रहे हैं। नहीं देखते हैं भाई नहीं देखते हैं। एक बंदा ऑर्ब ले रहा होता है एक बंदा छुपा हुआ रहता है एक बंदा वो जो वॉल होती है ना बीच में उसके बगल में खड़ा होता है। एक बंदा घुस रहा है तो बच्चा क्या देखने वाला एक या दो। जो घुस रहा है वो देख ले। अबे तो जो घुस रहा है वो कितना एंगल देखेगा ये बताना। जो पहला घुस रहा है कैसे देखेगा भाई। क्या सेंसलेस बातें मत कर। अरे सीधी लाइन है। जो बंदा सामने घुसेगा वो सामने ही तो देखेगा। राइट में थोड़ा देख के चलेगा दीवार पे। Let's go. देख एज अ जेट मैं वहां देखूंगा जहां बंदे होने की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। मेरे पास दो स्मोक है बेस्ट स्मोक है एक हेवन और एक सिटी। मेरे हिसाब से अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो हाँ ये स्मोक कर। कोई और कर रहा है तो मैं क्या होता है टीम है भाई 5 बंदे हैं। 5 बंदे घुसते नहीं है ना। राउंड जीतना है तेरे को घुसे ना घुसते को राउंड जीतना है। क्या स्मोक बेटर होगा टीम के लिए मुझे नहीं पता। फिर टीम से पूछ 5 बंदों के राय ले जो ज्यादा बोले वो कर। तेरे में नहीं है इतना दिमाग भाई मेरे अंदर नहीं है। मैं कितना एंट्री लेता हूँ बताइए। पीछे खेलता हूँ हमेशा। पर्ल पे तो मेरा सबसे ज्यादा प्लेड एजेंट चेंबर होगा। पीछे रह के खेलता हूँ पर्ल में तो आगे मैं अभी आना शुरू। चुप हो जा हो गया। स्टिंग तेरे बोल रहा है तो उतना प्रूव कर रहा है अपने आप को। हाँ मैं चूतिया हूँ भाई और कुछ लेकिन ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूतिया समझ मत समझ। मैंने चूतिया वर्ड बोला ही नहीं खुद ही चूतिया बोल के खुद ही बोला। ठीक है कोई और वर्ड बोल दे भाई। पर्यायवाची होगा कोई चूतिया का और क्या बोलूं। क्या होगा प्राची पर्यायवाची प्राची।
Spike down B. Spike spotted B. Enemy spotted B. One enemy remaining. छोड़ के आओ कहीं ले। For you. Reloading. 30 seconds left. अच्छा 1v1 हारेंगे और तो शॉट क्या मार रहा है मुंह पे सीधा। अबे वो डिसएडवांटेज है। We were focused. Keep that. ऐसे शॉट लगने लगे ना मेरे, मैं एस मारूं हर राउंड, चाहे बंदे मेरे पास आए कि ना आए। मैं डर गया था एक पॉइंट को, मैं सोच रहा हूँ क्यों मरेगा पहले कि तू मरेगा पहले। मन में हुआ मैं बोलूँ कि भाई डिफ मत होने दियो, पीछे हो जा, फिर ऐसे लेफ्ट घूमता तो केओ के पास ही जा रहा था, अपन देखा एक बार देख लेता वहां पर। Spike down A. One enemy remaining. एक इधर क्या आएगा यार। We got 5. Bingo. Reloading. I will fulfill my purpose. ये कैसे मिल गए इतने बंदे मारने को, कोई था क्या बात पे? अरे बॉल था, बॉल में मैंने गैप छोड़ा हुआ था, वो गैप में बॉल नाइफ चला रहा है, गैप से एकदम बहुत छोटा सा गैप था। पे वो होगा भाई होगा, वो मत करियो। ये छुप के खेल रहा हूँ मैं तो, यहाँ पर छुप सकते हैं। हमने फ्लैश नहीं किया तो भाई स्काई का डॉग वगैरह भी नहीं। भाई साहब मेरे को और भी नहीं है, मेरे को लगा तोड़ेंगे नहीं, वो पूरा अंधा स्प्रे करे जा रहे हैं। 2 बंदे आए सीधा क्राउच एंड स्प्रे। अब रेस को रुकना चाहिए था। मैं सोचा वो रुका हुआ है। Enemy spotted A. Player standing. ओपोनेंट है भाई, उनकी मर्जी। Spike planted. तू बड़ा प्यारा मरा है। तो तूने वॉल किया था तो वॉल तोड़ के मारा तेरे को। अरे 2 बंदे आए सीधा राइट होके पूरा क्राउच करके फुल स्प्रे, वॉल तोड़ी, 2 सेगमेंट तोड़े हैं वॉल के। मेरे को लगा 2 तो कोई नहीं तोड़ता तो वो ले देता हूँ, क्या कहते हैं, और ये और ले लेता हूँ मैं स्टिक करके वहां पे। दोनों रुक ही नहीं रहे, स्प्रे रोक ही नहीं रहे तब भी तू हिला नहीं अपनी जगह। अरे मेरे को 2 सेगमेंट थोड़ा तोड़ देंगे इतने जल्दी, मेरे को लगा एक बंदा तोड़ ही नहीं पाता है, मतलब वो 45 हो जाती है वो। फिर जाओ आप ऐसे पर स्पेंडर लेके मारूंगा इन पे भाई। शील्ड बाय कर ले रेस, शरीर छोड़ दे, शील्ड बाय कर ले, किसी और का उठा लियो गन। फुल शील्ड मतलब था मेरा 800 की जगह। देख फिर 2 सेगमेंट तोड़े है कि नहीं, और उठाता हूं। बार ऊपर से मार दिया बॉल। आऊंगा अगले बार भी आऊंगा। रेस पीछे रखे थे। और नहीं उठा सकता ना, वो पूरा स्पैम मार रहा है। अरे ठीक है भाई, इतना बैक सीट मत कर। भाई इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो गन ले सकता है। कैसी बात कर रहा है, बैक सीट कहाँ, मैं मरा भी नहीं हूँ। अबे ऑलरेडी गन थी उस पे। Nice try, kid.
spoil the party. Do you want to dance? क्या लगता है क्यों देगा बिना मांगे? क्यों भाई करा? क्यों बोल रहा? बोल रहा हूँ भाई। आगे तरफ मिल जाएगा नहीं। Satchel out. फंस गया। तू फंसेगा भाई, तू तीसरी बार जा रहा है। फिर बोलेगा भाई हाँ ठीक है जा भाई। 129 मारा उसको भी मैंने। मारा ना? बढ़िया ना, खुश हो जा। 129 है वो भी। ये बढ़िया करता है। सेक लो है दिखी तेरे को। अब शायद अंदर आ Last गया। player standing. मेरे को इसका डर है, रेना कब मारेगी मेरे को। रेना उधर है सामने। यहाँ कोई तो था, मेरे को मर गया ना मैं। बस मेरे को ये पता था कि मैं मरने वाला हूँ उधर से। हट जाना उधर से। मैं कहाँ हट जाऊँ? आगे जाऊँगा तो लॉन्ग एंगल मिलेगा, सामने देखूंगा तो वो मारेगा मेरे को। अरे इधर खेल तू, मेरे को खेलने दे भी। हाँ क्यों जाना, बॉल बनाना उधर। मार दिए मैंने। 1v1 मार के क्या खुश हो गया? मर भी तो गया। 2v1 में मारा। ओ एक को 186 दे दिया, दूसरे को 130 दे दिया ना। और क्या चाहिए? तेरी तरह सेव कर लो भाई, ये राउंड सेव कर लो। सेव कर लो। जाना कर ले राउंड फिर क्या? तो क्या सुनाई है ये कितना? हाँ तो मैं इसीलिए मैं भी नाइफ नहीं खोलता हूँ अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो। ये देख सॉरी तेरे को टेलीपोर्टर लेना जरूरी था। अच्छा ओनली वन लो। ये चला जा, मेरे को रेफ कर ले, इसको छोड़। Your duty is not ये जाके तेरे को रास्ते मर गया फिर। वहाँ पे तो है ही नहीं। वहाँ नहीं था ना। Spike planted. ये तो कॉल करना पड़ेगा। पता है उसको। रेना का अल्ट है। Shutting them down. No one walks away. Throwing charge. Flash. One enemy remaining. डेप्थ पे वो पीक करेगा। कर ले पीछे है। Last player standing. Clutch. Drink some water, reload your mags, and let's. ईयरफोन निकाले थे तुमने? संचेत? ओ संचेत। चुप हो जा। मेरे पता है मुझे उधर है पीछे, क्या करूं मैं? अल्ट में घुस जाऊंगा उसके। अबे अल्ट से पहले ही वो उधर था, तू सीधे जा रहा था, तेरे को राइट से पड़ी थी। हाँ तो जब उसे मारी तो फिर क्या करूं मैं? एकदम घूम जाऊंगा पड़ते हुए, मैं आगे तो जाऊंगा। आगे जाके घूम नहीं रहा ना, तो पीछे मेन पॉइंट। अबे तो केओ तो मेरा सेफ है ना, मैं क्या करूं उधर से? उसको क्यों मारूं मैं? उसको करने दे। Smoke's down. ओके यार बढ़िया है। मेरे बाहर निकलने के बाद फ्लैश शवर और बॉल है। What if करेगा? back.
Going B. अरे नहीं भाई। You will not kill my allies. अल्ट अब आया है और ये कह रहा पहले ही बोल रहा है कि रिवाइव करेगा। मैं इसलिए आने गया। ब्रेम अल्ट कर दो। 30 seconds left. कहीं पे है मत। अल्ट कौन किया? उसमें कौन किया टीपी में? Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. इसने प्लांट किया तो यहाँ कैसे आ गया ये? दो स्मोक है सामने तेरे को दिख गया है कि प्लांट मेरी साइड का है, उसका नहीं है प्लांट। मैं तो चेक कर रहा 30 एचपी में। अच्छा। दिमाग निकाल के खेल रहा है क्या? भाई स्प्रे कर देता तो मैं वैसे भी मर जाता। स्मोक के अंदर स्प्रे नहीं होता है क्या? स्मोक के अंदर मैं तो भूल ही गया था। बस स्मोक करे तो जरूरी है क्या उसके अंदर गान देनी है? स्मोक दे स्प्रे कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो चलेगा। तो प्लांट 30 एचपी में पिक करने से बेटर ही अल्टरनेटिव है ना। अल्टरनेटिव तो है लेकिन उस टाइम दिमाग में घुसा नहीं है। वही तो बोलता हूँ, दिमाग रख के खेल रहा है क्या? अबे दिमाग है भाई, दिमाग है। सेज को मारा ना दिमाग से। ये है I can. बहुत साल बाद इसने स्मोक किया। वो भी नहीं किया है। अच्छा। Spike planted. जैसे लिखा ऐसे मैंने हटा दिया। Enemy spotted A. Brum brum. One enemy remaining. Aiming. Reloading. Blasphemous. क्या अपना ब्रिम स्मोक क्यों नहीं करता? सामने से आ रहे होते हैं बंदे को। वहाँ था वो शावर। वो बाद में था उधर। खेल बी साइड पे रहा था। बी खेल रहा था ना तो ये तो नहीं होता। हैं? ये मेन नहीं होता। इधर था वो आगे। वो एकदम वहाँ पे आ गए। यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ, स्मोक कर देता हूँ, फिर चला जाता हूँ। नहीं। Need a drop. Solid work. अबे है हम यहाँ पे तो निकल जाना। तो 4 बंदे क्यों फिट रहा है? 4 बंदे थोड़ी थे, मैं था तीसरा। कैसी बात कर रहा है? क्यों खेल रहा है? क्योंकि मैं जज खेलने वाला था। Let's play. आ रहे हैं? हाँ आ गए हैं, साइड पे आ गए। Party's on. Spike planted. Ready. Light deployed. Two suppressed. Blocking sight. एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। Player भाई देख ही नहीं रहा वो तो। लेफ्ट में। Close left. बोलना जज है। मेरे को क्या पता, मैं तो ऊपर से मारा हूँ। लास्ट वाले बच्चे को मारा होगा। नहीं, मेरे को तो चेम्बर ने मारा था ना। चेम्बर के पास उसका क्या बताऊँ, वो मर गया। I'm gonna save. Let's get this done. सेव क्यों नहीं करते भाई बंदे? मेरे को समझ नहीं आता। ये चूतिया अकेला रेस बाय कर रहे हैं। Headshot. भाई निकल ही नहीं रहे मादरचोद के हो। बैठा हुआ है वहां पर। मेरे को लगा भोंकता क्यों है तो कुत्तों की तरह से? अबे वो चूतिया को बेट करते हुए देखता ना तू, तब पता चलता। तो इतनी हेल्पफुल इन्फो दी मेरे को। मेरे पीछे टीपी करा, मेरे को लगा मेरा टीममेट टीपी करा। मैं थोड़ा था तो पक्की थी मेरे पास।
बेट क्या उसका होगा कुछ शॉटी वगैरह कुछ शॉटी का पिंग वो थी भाई, वो तुड़ 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 उसके बगल में खड़ा था, वो क्यों वेट करेगा? मेरे को मारना चाहिए उसको, मैं उसको एक से बचाया, दूसरे मैं नहीं होता ना वो 2 सेकंड में चट गया होता पूरा। उसको मैंने रेस से बचाया, बंदा बहन चो निकल ही नहीं रहा। वो तो छुपा ही हुआ था ना, वो मर जाता उस वहां पर भाई, बूम बॉट से वो डिटेक्ट हुआ था। इधर छुपा है ना। हाँ बूम बॉट से डिटेक्ट हुआ था वो बंदा। हेल्प कर रहा हूँ अपनी, मरा लो बस, वही वाली बात है यहाँ पर। आजा आजा, आएगा तो आजा, मैं चला जाता हूँ। Keep up. मिस कॉल है भी They played anti-flash, bro. ये प्लेयर एंटी फ्लैश, लोग बहन तो आगे जाके एंटी फ्लैश करने की जरूरत क्यों? Spike planted. Right between the eyes. नंबर लो सही है। Go get him. Reloading. Smoke's down. Last player standing. Last round in the half. Half time. Don't save a thing. मुझे बाय नहीं होगा। अरे हम पर नहीं होगा लास्ट तो, अरे इसने सही करा था वो राउंड बाय करके और लास्ट तो। मतलब सारे टीम बाय कर रही है एक राउंड, तुम वो छोड़ के वो राउंड जीत सकते थे, जीत जाते, सबके पास बाय होती, सबके पास 3300 है। सही करा। वो आ रहा है मरने, आ रहा हूँ भाई, जज है मेरे पास, मरने आ रहा हूँ। कैसे मेरे को इतना और फ्लैश करता है ना। ये फ्लैश देगा राइट साइड में निकला। Last player standing. अच्छा क्यों गार्ड मरा रहे हो? टीपी मैंने एक मार दिया तो भाई सबके पास सारे आगे सब मार गए गए मारने के लिए जज से, क्या मार दिया फिर। मारे ना, एक दो बंदों में तो मारे, एक बंदा मारा वो भी है, सब वैसे ही खेले बात। सब पे नहीं थी जज थी भाई, इन्होंने टीपी में उठाई है गन, मैंने 2 बंदों को तो खुद देखा है जज पे। Just let them try to catch अबे me. मेरे पास थी, तेरे पास थी नहीं, टीपी के अंदर, तू टीपी के अंदर था क्या? तब तो 3 बंदे के पास थी टीम में जज। अरे इसके पास तो वो थी, मरने के बाद जो उठाई हो भाई मुझे नहीं पता। इनका एजेंट भी नहीं है अटैकिंग वाला। अटैकिंग वाला एजेंट कैसे नहीं है बे? इनिशिएटर They're not better than me. अरे Launching ये smoke. Stim beacon down. क्या करेगा भाई? वही लौड़ा, वो जो लौड़ा फेंकते ना दीवार पे, वो लौड़ा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फेंक देता, मैं रश करता। बोलता है अबे ये इनिशिएटर को इनिशिएट करने के लिए बोलना पड़ेगा, ड्यूलिस्ट को ड्यूलिस्ट की तरह रश करने के लिए बोलना पड़ेगा, तो हो गया। नोटिंग क्यों ली तूने? मैं जाता हूँ उसके अंदर हर बार, स्मोक में ही मर गया। मैं वो तेरे को मार रहा था, मेरे को मैं लाइन अप से मर गया मैं तेरे। मैं शॉट ही लेके रश करता हूँ, डैश करता हूँ। अबे एक होता है रश, एक होता है आंखें बंद करके गार्ड खोल के जाना है यार। अबे आंखें बंद करके, स्मोक है, स्मोक में तुम मर गए तो क्या ही कर लोगे? तो W दबाएगा, फुटस्टेप देगा तो यही होगा ना। क्या वॉक करके गया था मैं।
वो तो टूटे उन्होंने स्पैम कर दिया भाई मेरे पीछे और भी मदर चोद है जो मार चुदवा रहे थे। कोई नहीं कर रहा था हमारी साइड कोई था गया डब्ल्यू दबा के गया मैं जाता हूँ मैं मरवा लेता हूँ So lucky motherfucker. Out of here. दे दे उसको PRX। हाँ भाई आ जाओ किसी गन चाहिए भाई ले लो कोई गन चाहिए गन हेलो ये ले भाई हाँ कुछ है तेरे पास वो सब प्लास्टिक वगैरह दे दे मेरे को छोटी वाली कुछ Smoke's down. Up somewhere. Brum. इसको पहले मारेंगे रुको I'll get gun. Last player standing. Spike down B. मैं बोल रहा हूँ पहले मारेंगे 30 seconds left. यहाँ बैठा हुआ था वो गया क्यों अंदर अरे मैं ट्रैप कर रहा था मैं ट्रैप कर रहा था घुसा कहाँ गिर गया मैं नीचे ऊपर उसके नीचे ही तो ट्रैप था और मेरे और स्मोक भी खत्म हो गया था बंदे कुछ भी कर सकते थे करा ही नहीं किसी ने अबे उसने प्रेम को मार रहे थे प्रेम को मारते गन मिलती है दो बंदों पे लगा पुश करके तेरे को देख के प्रेम भी आगे चला गया भाई गन दिया इसने इसके साथ से जाना पड़ेगा दोनों के टीम में डिवाइड था वो भी पहले तेरा देख करके वॉल कर रहा है मेरे को कितना फ्लैश करता है Dim beacon down. ये वॉल बोल रहा था उस दिन तो तेरे स्मोक के वजह से नहीं पड़ता ना Spike down A. रेना फ्लैंक आएगा Last player standing. I have the spike. Spike planted. वहाँ खेल One enemy remaining. Removed. well played Nice. Clutch. I am not just your healer. क्या कह रहे हैं What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Let's fly. Suppressing. Bomb buddy. Launching smoke. Block Dim inside. beacon here. Our spike carrier is killed. Spike down A.
क्या करना है? हील है उधर चल। हाँ हील है। आजा 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 बी पे आजा बी पे। मैं हम अटके हुए हैं। अच्छा मेरा स्मोक है। Enemy spotted. Reloading. Healing you. यहाँ बंदा था ऑफ कर रहा था। स्मोक है ना खत्म। रुक जा स्टार्ट करेगा वन वे कर सकता हूँ। Spike drop. Last player standing. दोनों पिक करे जैसे वो करा। मैं उधर देखता तूने स्पाइक गिरा दी मैं स्पाइक उठाने चला गया। आज देखा क्या कुछ कर नहीं सकते। छोड़ना ही नहीं था तेरे को स्पाइक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ा तूने? मैंने तो 3 साल पहले बोला मैंने बोला स्पाइक प्लांट करेगा मैं वहां पे तो मेरे को दे देता ना डायरेक्ट डोप दे देता मेरे को। जमीन पे फेंका मैं नीचे फालतू में किया ना। नीचे एम क्यों करना होता है उठाने नीचे करना ही तो। अच्छा स्पाइक पे तेरे को वो नहीं करना होता है क्या एम? Stay safe. मुझे तो लगा करना होता है। I'm gonna save. Spike down B. Match point. Reloading. Let them try to get through me. क्या फायदा हो रहा है तेरे ड्यूरेशन में एंट्री में? वाह भाई एंट्री में आते नहीं कर दूं क्या? और सामने इतनी एबिलिटीज आ रही है मेरे जाने से पहले तो 4 बंदे और मर जा रहे हैं। मैं अकेला ही ड्यूलिस्ट हूँ क्या? Obstacle removed. Target sighted enemy. My ult's ready. Spike planet. Enemy spotted A. Satisfying. Reloading. The hunt begins. Shutting them down. One enemy remaining. पीछे आ गया पीछे। Fall back. अच्छा ये Reloading. Hey yo. You say something? पीछे रहेगा ना। Sorry. Ears still ringing. गन मांग ले। Need a drop. Need anything? Can I get a drop? Need a drop. ले लेता हूँ इसको दिलवा दे वो। जज ले लेता हूँ। ऑपरेटर बाय मांग ले रेस बाय मांग ले। Let's go. बाय मांग ले। You want to play? Let's play. Satchel out. Smoke's down. Stim beacon here. Here comes this. Ooh. ट्रेन है यहाँ पे राइट में। Prepare for hellfire. अबे
Launching smoke. Spike down B. ये भैंचोद मेरे को इतनी बार फ्लैश करेगा ना। Defenders win. मैं चिल्ला रहा हूँ वहाँ पे, उधर है मेन है, तुम घुसे जा रहे हो अंदर, स्पाइक लेके तू पता नहीं कहाँ ही घुस रहा है अंदर। भाई मैं बचने के लिए घुसा उधर। किससे बचने के लिए? रेना है थी ना पीछे, तूने ही तो वो कॉल दिया, रेना है हट जा। हट गया मैं वहां से। कोई नहीं, आप फ्लैट 1 पे जो लो। क्या स्कोर चल रहा है इनका? Divide beyond that, it's classics. Well, we saw what Jorgamo was able to do on map 1, so maybe don't write it off just yet. But still, stack for Paper X's. Well, they're coming up as the antidote to this round, but man, it's not going to be easy. Write it off just yet, but still, stack for Paper X's. Well, they're coming up as the antidote to this round, but man, it's not going to be easy to make count. EG have been quite careful on their approach on this side. Trying to find that information first, but let's see if they can navigate away from this cluster of mayhem on this side. Expecting aggression, maybe not expecting a 4-man stack in a main. They're going to flash out here with the fight. He doesn't actually have a flash. They're trying to scramble, and there's no one around. D1's in danger, tries to backpedal. It's sensational for Paper X. And now Boostio and Ethan are reeling off the back of it. Yeah, they get the rest of the map, but look at the upgrades, look what they get. A reward for all of that work. But a plant will be had. Can they defend a 2v4 like this? It's a Spectre and a Look at the other side. First, found, second, fourth. Ethan knows what's coming his way. 3 on the other side. First, found, second, fourth. Ethan holding them back. Third, recovering what looked like a lost round. What a performance from Ethan. That's an Arte round right there. Vintage. Sensational 4K. That looked like Paper X's mic all day long. That start To was bail out EG. out of this world. I mean, this third kill. That looked like Paper X's mic all day long. That start was out of this world. I mean, this third kill is beautiful. Then the bait with the flash here. Bounces deep. Forsaken has to commit to turning it. Yeah, take a bow. Paper X need to stabilize here now. Rifles coming up. Oh man, Paper X need you to stabilize here now. Willing to get down. Rifles coming up into this. Gotta keep their heads held high in this one. EG willing to get down and dirty. Scrappy into this. A little bit more of a pace change here. Getting a little bit more progress done early on. Ethan wants to work towards that ult and a little bit more of a pace change here. Getting a little bit more progress done early on. Ethan wants to work towards that ult and well, with the round that he just had, why not? He's very close by. All the way towards Fountain. Team 1's got some space to work with here. Look at the respect given by something. It's close, so there's no all the way towards Fountain. Jump spot anything, but to say that, Jing did actually just satch you up. It's close, so there's no spot. A ton of real need to jump spot anything, but to say that, Jing did actually just satch you up.
Spotting a ton of players inside B main. Someone This exchange of utility here. Demon One! How's he doing this much damage? Jing and somebody trying to hold the line. Demon One's They're doing caught. so well. Someone is serious about this one. Demon One! How's he doing this much damage? Jing and something trying to hold the line. They're doing so well. Something is serious about this one. Trying to dig his heels in here, but Demon One's still standing and still breathing. There are problems. Something wants in, and he's got in. He's taken the round away by something's side. Jorgamo on the other. They're getting aggressive. They're going fast. Something wants in, and he's got in. He's taken the round away from them. EG left in tatters as paper. A furious exchange. Mechanical Blows it. monsters. Look at. I said, given some space, something respecting. Depending on something there, Set up and he. here initially. Beautiful cleanup though between Divide. Beautiful cleanup though between something. And find PRX their first round here in the second half. They come away with that though. 2 Bulldogs, so that was just EG's bonus. Jing's getting a little interested. He's got something walking middle as well. EG aren't really taking that walk. Slowly but surely. Trying to get a bit more curious about what's happening in middle here. There's been enough that's put some question marks around the map. Oh my god, something. I don't think he knows just how close Busio was there. Doing something at Forsaken. Yeah, Demon One's like, what the hell's going on? Like what he found, but this map is not looking comfy. 30 seconds, they have no way in here. Ethan going for the ult. They pushed forward. Profound aggression from. He just spotted him. Oh my god. Oh my good god. He's played ahead of it, and Ethan's still doing damage. Spike is running towards A with 18 seconds. When do they realize? When do they turn already? You can see one of them on the case. Mind Freak trying to come on over with 12 seconds. Oh, this plant could be in. Let's see if that cross is made. Jorgamo's made it over. That should be a plant. But up towards heaven. There's 2 coming on forward. Not denied on the plant, but the follow-up's everything. Something now starting to get closer. Comms found something. Mind Freak couldn't quite get the trade. They've slipped away. And Devi gets a bit closer himself. Jorgamo's got him. And now it's Devi in a 1v3. 2 low, and it's very possible for this man. But look at these angles, brutal to clear, 2 flashes to play with. Can he isolate a fight? What can he do in this? Takes another step, looks for the fight, he's got it! And now the 1v1, but time is against him, and there's a demon on the other side! Here. I don't remember who it was actually caught in B main in the corner there with the Forsaken, I believe. I think the so. flash goes Yeah, through. yeah. No. Which is why they try and get aggressive. As soon as they concede that kill on Forsaken. Commit to the flank. And it's already too late at that point. A piece here. Wow. We're seeing this really kept close. I'm a bit worried about this half though. I think seeing the kind of start we're seeing it from EG looking quite well prepared. The money scenario for PRX, what do they do with this? And the timeout hitting as it is, it's quite indicative they're trying to find adjustments, right? They're trying to find a way forward that's going to work for them here. This composition should be hard to make work, but they're aggressive. They know how this plays out, right? It's not the first time we're seeing it, but
I'm a little worried. I'm seeing a hero rifle on Divine. That's about it. You have the showstopper to play with, but Jing not throwing a shield in the mix here. I don't know if that maybe he's going to try and use that reactor, but he's got to get out of this corner. Spammed up, and a 51 HP. But escapes death. They need to try and feel out where the stack may be, and a quick reaction from PRX is actually putting them in potentially the correct space. Eyeing up towards the A site now. You can see EG on red alert. After some of those moves we've been seeing coming out, some of those aggressive plays, the flashes off the back end. Speaking of aggressive plays, there's the flash. He knows he's drawn attention here. What do EG do now with the information they've received? Very cautious approach here. Saw an earlier example of anticipating aggression. PRX already looking like they're going to lean towards a stack on A. The incorrect read here with what we can see. It's a gamble stack. You gotta try and risk it, but I mean, EG have done really well to deny information across the map, so forcing their hand at PRX in that regard. Yeah, absolutely. So this should be the green light. Shouldn't be any resistance towards the B site here, so it's all on how much can they achieve on the way out. And I already like the readjustment from Com. I love seeing this. I think we just saw a teaser for a future execution there. With the cloud burst up onto the top, the flash out from Ethan. So we do get that employed once again. Com. The timing, get out of it! Okay, good trade. That's a rifle, but they don't have time really to maybe run and grab that. No. Maybe Forsaken can try and give it a go, but they can get a bit dangerous. Hold on, that flash is a bit of an issue, but it plays in Boostio, but still very diligent on the clear. Boostio cleaning him up here. Forsaken, the last one alive. You can hear the timer ticking away. Demon 1 willing, ready and able to remove the final threat. This round was a gamble stack. It didn't work out. G will take the lead. PRX now in a position that feels a little uncomfortable. You look at what's behind this purchase, you look at what's coming out in this purchase, to be honest with you. One enemy remains. Divide down on a Bulldog. You will see the operator coming out for something. A chance for him to maybe get something done here. Become a little more aggressive. Well, just saw him, yeah. He's behind Peter, actually. Wow. So hold a very, very passive angle here. This isn't typical, really, of PRX's approach here. Well, not typical of EG's approach either, but... Com, normally good for it. He's cleared out common angles. He's basically facilitated this whole site hit. So something has to try and hold. And the first shot not landing opens up so many opportunities for EG. Not feeling secure on the side just yet. PRX looking maybe to pounce on this. Waterfall in, and they do. Jing takes away Ethan. This is looking much better here. Holding with 5 alive. Can they make it more? Yes! Mind Freak. Damage done. Good trade. Boostio still bounding away. But the plant's not in. It's held in the hands. Jorgamo not quite there just yet. 24 HP that all the Boostio has to boast. And now looking for the plant. Jorgamo's got Jing. A late lockdown as well. This causes real issues for PRX. They've got to run. They've got to get out of this. This is the plant that they wanted. And now a true 3v3, but that up. Oh, no. Something. Maybe. Oh, my. Wait. Forsaken. Did Boostio try and reflank through mid? It looked like it, but Forsaken was so ready. And now the counter roll. They're going off this one. Jorgamo's in danger. He's screwed. Trying to stick around on the site. He's been noted. He's been seen. How long can he survive? He's going to be hounded down. Dead. Buried. It's all on Com in a 1v3. Tap on the spike. First challenge found. Seconds there. PRX. Perfect to tie it back up to 9 apiece. I love the idea here from EG. Again, the execution, and maybe this is reliant on a kill or two towards short. PRX in that regard, I guess, doing the right thing and not giving anything away. Well, they barrel down Catwalk, find themselves in tree very, very quickly. They're keeping up, Mike. They are clawing onto this game. They do not want this one to go like Split did, that 13-10. PRX showing real resilience here. As said, last dance for Jing. Get out of my way. And it looks like an aggressive start for him as well. Up and over, not quite.
Pain shell going to be left, and Forsaken couldn't quite get around the corner. Chorgamo tries to capitalize on the aggression, TPing elsewhere on the map, but PRX disengage very quickly. Something will find Boostio as well. Finds a little bit of value with that operator in hand now. Where does EG look? Looking at Jorgamo, already clear through Wine. Here. But there's 3 players here. Again, with PRX keeping the numbers up, they get the beauty of just having that additional body they can post towards the site. Mindfreak drifting around towards top middle, noting maybe the vulnerability there, but it looks like maybe Devi's the one who could receive the attention if they furthered the pathing up towards Tree. As it stands, it's only Demon 1. Yes, Jorgamo A main, but indecision. It feels like for EG, waiting to see if there is a re-aggress here. Oh, so something. That was find another kill here onto Com. Mindfreak tucked into this pocket though. This could be deadly. Oh, wait. No. They have no idea. There's no idea. There's no way. Devi even. Not his call on the way up regardless. Beautiful from Devi. Yes, Mindfreak's position would have been the back line if required. But Devi doesn't even let it get that far. Finds all 3 to clean things up, finding PRX double digits here. Huge for them. And a big bailout in terms of the finances. They've been struggling for the last few rounds to find a response. Like I said, the operator finally finding some value here. It's Boostio and Com. PRX well away from the pit. EG, I think really on the brink here for them. Yeah, rifle in the hands of Demon 1 to try and get something done here. An early paranoia though. Mitigated or negated by paint shell. EG don't want to give up the space though. But there's a trade. Forsaken's got to be careful. He's the last standing bastion of this site. Support's on the way, and Devi gets there. But Boostio hands out a haircut to Forsaken. It rolls on the floor. You're looking at Devi, who's been absolutely nuts this map. Does EG continue? They can pause for a little bit. They're still above a minute. This is early fights, and the temptation for that rifle, I'm sure, is just as well. But Boostio knows better. Note Mindfreak here. How far does he go? No, I think he felt the timing out a little bit. For sure, EG though, cut noise behind this. PRX with the correct read though. Got him out of the sky! How did he just land that? Something is activating here. This guy's coming online. The last couple of rounds have been essential to this player, and a fantastic catch on the adjustment from Com. There's no escaping your fate. You've got to stand and fight. And Devi, the final boss of B, not going to give it up, not going to let him back in. PRX looking like they want to answer back here. With a map win on Ascent, will force a timeout hit. Oh my God. Nah. I'll take it back. He does not look like the ready for my ranked game. And it's a timeout for EG now. 3 consecutive rounds from PRX at such a pivotal time. This could be outcome defining here. No key ults to depend upon for EG. This has to be just in the server traditional approach. On the other side, I mean, you've got the Viper's Pit there, 1 away from Devi's, operators in play. I mean, I was talking about PRX having real concerns in terms of the inventory the last few rounds. Now they've strung 3 together. It's not really in the wheelhouse just yet. A few teams obviously playing around with it. But plenty of options here. I think if you look at the other side of things, EG with what's left in the bank, not many. 2 off the null command of their own, 3 away from the lockdown. It's just not feasible. So what's the answer? I've loved what Something's been able to do. Yes, obviously a very flashy shot in the one just gone, but even bigger picture, he has been finding such impact since getting that operator in. But I'm looking like a change-up might be in place here. Forsaken taking over the role. Don't do that to me. I mean, he's just hit that shot. And then you take the operator off him. What is he up to? What is the game plan here? It looks like he's getting into it. They're getting aggressive again. Look at the crunch towards tiles. This puts them on the chopping block. Forsaken not going to land the shot he wanted. EG
running away. They don't want any of what's being sold over there. They've already lost Demon 1. Yes, Jing fell as well. Does the pick come out from Mindfreak now? He has He's every swinging option. ahead of the wall. Mindfreak, are you mad? Get out of there. EG are on the way. It could be pop flash and a swing. That's audacious. And it might be a mistake. They've just given them a 3v2 and an open sight. I think they underestimated who was here and when. Forsaken still has the operator. Something on the Vandal. This seems just bizarre. And with the chance, something slipped forward. The Cove actually helping, but Giacomo gets denied. A 2v2 now on the side. Busio and Com trying to keep control. Swing, a miss, Com on the trade, but he finds Forsaken. That's a shot done. It's huge. Something is bleeding, but he's still standing and still fighting. Ice cold from something. He stared them down. Yeah. He stared them down. That's the brute force you get from a player like him. Look at this, man. Oh my God. Beautiful stuff. That's 2 rounds now. He's had ridiculous impact for PRX. It's given PRX map point here. EG trailing by 3. With the spam already. Not great for Demon 1. He's gone. He's fallen. Jing getting a little closer too. They're scrambling. They can't go along this route any further. Oh my God, Jing. It's PRX. They don't shot. You didn't see him, Busio. How have you done that? He's got a lockdown. He forces out here. Device walking into it. Device walked into it. This is just unbridled aggression. Again and again, they keep retaking the fights. Who's next? Mindfreak down to 70 HP. Something. Position towards mid. Has an operator. No chance to actually swap this weapon out ahead of the retake. He's actually popped his Empress as well. Okay, so finally things slow down. Yeah, that feels just like a mental break for these two. The utility that EG has is quite substantial. But something is here. And that's enough that makes me worry. He's still paranoid about middle. The flash is good, sticks around for the shot, plays in Mindfreak, he waits on the first, he pounces, no he doesn't! Ethan! He's bailed him out until then! Kong stays alive, EG with a lifeline! It's another example of the layering of utility from EG is so good. They cut sound here, wait for the cooldowns to come back. The flash allows the ping to come through. You can see that Ethan actually tanks the Lear. He's nearsighted, but the ping from the recon is perfect. Speaking of perfect. Stop it. Stop it. That's how you stay alive? That's how you get to 10? It feels unfair. Here. But it ain't over yet, Mike. 10 to 12. PRX still on the verge. One more round. They tie up this series. And something getting interested in middle here. Pit will lock down A main. Something not noted just yet. Obviously, Com hasn't invested in utility towards mid. Well, they want to regroup pretty early on outside B. Alarm bot. Leave Jorgemine posted. Does have the TP, an opportunity to regroup later on, but find themselves a fairly favourable engagement here. Lockdown will clear sight as well. And I worry Pain for shell. their exit. Okay. Yeah, it does deal with That'll do. that. Lovely. Well, that's fantastic, isn't it? I don't know if they felt as if they knew where Jing was earlier on. Now they're at 38 seconds, and they ain't got a step towards sight. And look who's on the other side here. Something with a huge opportunity. A step is heard, and it's more than enough for him. And now more information aplenty. Com in trouble, but a great bailout from him. Devi looking to get involved though. A pixel out of place, and he spotted him. But 20 seconds, EG needs to keep going. Devi's gone down. Brought down on his hands and knees as Jing trying to fill the void. Catches on the cross, gonna deny Com. Getting towards the side. Jing, fantastic.
just enough to get into a 1v2. Demon 1 out of this world performance now Forsaken to try and take down the remainders. Sitting pretty, perfect HP, but can he find the double stack towards? Hell no, he can't! EG nearly tying up the series off the back of exceptional work from Demon 1. And I feel like with one round just there, they've just broken the momentum that PRX had established here in the second half on Ascent. Oh, that shot! The second shot to Jorgmo is outrageous. But there was so little time to recover. Come out finally after a string of rounds. PRX forced into a lighter purchase, be it just a stinger. I was wondering if they're up to something off the rip there, Mike. I saw 3 of them stacked up and I get a little worried. It doesn't matter the scoreline. PRX will still do something absolutely demented. They just got the Reckoning off that. That early aggression has rewarded them the Reckoning. Now they have the Showstopper. It's 2 ultimates that can be employed towards a retake here. Devi and Mind Freak getting a little closer makes me nervous. He tried to pop flash off this last time. Jorgmo's so aware of a nicer angle to hold those, he's just not affected. Bait things out. In terms of information, you figured out initially early on where Forsaken is. Now you know where Devi is. Com trying to confirm a third presence. They're waiting for the check, and here it comes. The swing and a miss from D1, and something is just a straight-up killer. 2 back-to-back. Ethan gets a chance to punish. He's not clean enough. Something is absolutely demonic right now. Trying to get across the line. PRX are holding on here. They want to tie up this series, get us back to a 1-1 scoreline. PRX, map 2's theirs. Talking about भाई इलॉन मस्क भी आएगा वैलोरेंट चैंपियनशिप्स पे वैलोरेंट चिप्स नहीं लाइक इज इक्वल टू 1 वॉच पर टी यार प्लस एग्जाम्स में गंदे मार्क्स आएंगे तो तुम लोग को याद आएगा बेंच काश में उस दिन लाइक किया रहता पंक्स बाय का स्ट्रीम समझ रहे हो कल जॉब वॉब पे जाओगे अचानक
से तुम्हारा जो सीनियर है तुम्हें बम्बू देगा, तुम लोग बोला ऐसा क्यों हो रहा है? ओ फक, काश मैं बिग्स बाय का स्ट्रीम लाइक किया रहता। ऐसे सब थॉट्स को मिटाओ, कर दो ना लाइक एक ही चीज, समझ रहे हो? फ्री का जरा सा भी What's going on, everyone? GB here, and I have two special guests yet again on the broadcast. It's Anna Dolan and Alito Fadia. Give it up for them, because literally we're here because of them. Okay? All right, well, I'm glad I got you guys here for a brief minute. Obviously, an incredible game that we just watched. If you're just joining us, 1-1 tied in the series. PRX managed to take ascent. Let's talk, though, about that opening ceremony. Well, Holy moly. Let's talk about the dance cam. Like, Right. I was just on the dance cam. Yeah, it's true. All right, okay. Yeah, no, I treated OC, people to some cake on the dance cam. You know what I'm OC saying? was incredible. We have been planning that OC for a very long time. I think it was, how did you all feel about the OC? Everyone? Yeah. There you go. It was pretty good. People like music and fun and joy. And dancing. And dancing. Who doesn't like Yes, dancing? it was amazing. Well, since I have you guys here for a moment, let's talk about, you know, the game that we're all here for, the sport that we all love, Valorant. Leo, what does the future of Valorant look like for us? Because I feel like we have so many cool things on the horizon, and the year's not even over yet. Very, very true. Yeah, so we're, of course,
concluding the competitive season here with champions, but we still have so much coming. We have off-season starting. We have over 40 events happening all around the world. We have roster mania starting, and we of course have game changers later this year in Brazil, which we're incredibly excited about. Let's go! Yeah. So yeah, and then next year, of course, we're doing so much, bringing events to new locations, Madrid, Shanghai, more teams playing in international leagues. We're very, very excited about the future. Yeah, any hint on where we might be next year for champions? Anna and I are saving that, and we're going to announce it later. We'll keep that in our back pocket. I tried really hard. They keep trying. They keep trying. And what about for you, the future Valorant for you from the game side? Yeah, I mean, I think it's easy to feel like the year's over because of champs right now, but it is definitely not over. We got a lot still going on. We've got Sunset coming out. We just showcased that today. Super excited about that. That's nice. Premiere is finally launching for by the way, realsies. where's Sunset take place at? Oh, that one takes place in LA. Oh, in Los Angeles! In Los Angeles! Who doesn't like that? I know, we are very... Oh, Premiere is finally launching for real. Out. We just showcased that today. Super excited about that. That's nice. Premiere is finally launching for by the way, realsies. where's Sunset take place at? Oh, that one takes place in LA. Oh, in Los Angeles! In Los Angeles! Who doesn't like that? I know, we are very proud of that map, obviously. Premiere is launching officially, very excited about that. We have a Duelist coming out later this year. I think people keep forgetting that I announced that earlier this year. It's gonna really shake up the game. And then all the teams are already working on stuff for 2024. Like, we don't stop. So we are going to kick 2024 off with a bang. Okay. Okay, that seemed, and then you did the thing too. Okay, well look, guys, I want you guys to leave these incredible people here at the Kia Forum with some love. So you have a message for the folks who came out today. I do, yeah. We are so appreciative of all of you coming. We put so much work into this, and it's all for you, fans. We appreciate you so very much. So much. I want to thank teams for playing an entire season. It's been an action-packed calendar. I know a lot of them are tired of playing. But yeah, it's been a great season, and we just are, full of love and appreciation at this moment. So thank you all very much. Yep. Yeah, and honestly, just a huge shout out to the teams all across Riot. Putting on something like this is no small feat, and I appreciate every single one of you. But more than anything, we appreciate all of our players. Without you, we're absolutely nothing. Thank you for coming today, everybody. Thank you. Incredible stuff. Thank you. That's going to do it for us here. Guys, give it up one more time for Leo and Anna. Woo! Thank you. Thank you. Thank you very much, GB, Anna, and Leo. And look who's joining me on the desk for this. Bren, Paperthin, and Saisha, welcome. Yeah, I mean, dude, we've just jumped in the middle of it. We're coming in cold. Thankfully, the Desi guys have been keeping it warm as well, setting up this matchup here in the grand finals. Great game. No time to waste. Yeah, no time. And I'm here to break the Achilles curse for Paper. Oh, that's all there is to it. That's all there is okay, to so it. that's why they won the last map. Let's talk about something real quick, because the Reyna on Ascent, we're going to see it on Bind as well. What did you guys make of it? He played fantastically. I think he was one of the players that was struggling to get value in the previous maps where they've played up against some of the top teams on Reyna, but he really got it going. Big kills on the pistol round, which was what Seth was saying. They needed to win a pistol. They got one here, and even though it was tight, he got value on attack and defense with the Reyna. And what's impressive to me was he was able to play isolation a lot here on Ascent, so that's what he needs to do on Bind. That's where he's often left on his own, covering showers, covering long B, flanks like that. If he can start picking up value there, that's where the map can snowball in Paper X's favor. Yeah, I think it's going to be really interesting seeing if they do end up sticking with the composition. I can't imagine they're going to be changing it up last minute, when they do run the Reyna as we head into Bind. I mean, having said that, they just changed up their Ascent composition. Yeah, that is true. And also EG did change up their split composition last minute. So Potter said she did it this morning. So, yes, exactly. Yeah. I think both of these teams are at the quality right now and have enough of the backing and fundamentals down that they can make small tweaks, right? We're not talking vast compositional changes, but we're talking tiny tweaks. Well, let's take a look and see if we do. Oh, no! Yo! No! Okay! This is my favorite Prime Gaming agent select we've had so far. The Yoru is out. OG Paper X running the Yoru again with the breach. With the breach! I fell in love with this team because of this composition when they ran it all the way back, years and years ago when they went on that run into the grand finals of Copenhagen as well. They were really bringing this one out. It's a heavy hitter. I'm loving it, man. I'm loving it. I just can't wait to get into the game. This is going to be insane. I mean, something, by the way, plays Breach on Fracture when Paper X does play that map. He's very good. He's got great timings with his utility, but it's going to be a very different style. It's going to be completely different than what you're used to seeing from Paper X on Bind. What I'm a little concerned about is when we were watching on Split, I think EG towards the end of that map ended up being able to hold for the defensive aggression really heavily. Well, I can't wait to get into this one. It is going to be map 3 on Bind. Let's send it back to your casters, Pansy and Hypok.
Oh, a vintage composition coming out from PRX. A little bit of a twist of the knife of expectations. And EG now have to walk in against this. One of the two teams has to take the lead here, Mike. Who have you got for this one? I mean, this is just such a bold move to make. It is. To pull this comp out. And yes, we do talk about obviously something filling in the role elsewhere in the map pool, but did he hear the interview with Potter? He was like, yeah, we just sort of changed the comp this morning. PRX was just like, oh, mine's in. I guess we'll do the same. Do you want to do that thing we used to do? Roll it back one time. Oh, here we go. Map 3. One of these two teams has to break the deadlock now, head to head. PRX going to be walking into this off the back of a fantastic performance just a moment ago. And EG have to steady their nerves now. Initially, PRX looking to continue the trend of deathballing. Lots of bodies outside Fountain here. Stimbeacon will come down. Ethan hasn't actually flashed yet, but he will note the Trailblazer. Ethan. Stun comes through. He's going to get double stunned. Look at the assists on that bad boy. He was dead before he could blink. Not a chance in hell. And now Comp trying to get away with, oh my god, he still gets one. That's ridiculous. But again, it's on the aim on the back lines of Boostio doing some serious damage. And the follow-up from Jorgamo. Wait, they're down so low. And Jorgamo on the trade. It's just a mind freak to be eviscerated by Jorgamo. How did EG convert that back? There's such a weird 3 to 5 second pause here on the orb on B long to maybe set up for this flash play through. But it costs PRX everything. EG should have never had a chance to play back in here. Zero. That start was dreamy. Taking down Ethan Marie had a chance to react. The follow-up, yeah, you lose one, but that's fine. How did they get back in there? I couldn't even imagine that going any other way than PRX's. What a ridiculous turnaround. Theme 1 now will be played in. Scope in hand still. Wait, Forsaken actually commits to this TP. Tag comes through, Demon 1 down to 72 HP, but still feeling pretty good about that. Something's chilling. I think I just saw him rub his hands together, basically as if, yeah, I've got a kill here, boys. I'm good. Somebody's definitely taking this TP. Ethan? Oh, I thought he would just flash through to check the TP then. He didn't. He went through towards showers, but definitely leaves you wondering. And EG's starting to get a little antsy. They've drawn over the additional body towards the B site there. It's going to be Jorgamo joining. Forsaken trying to sell him something, trying to indicate presence, but the two players who are left on this A site for EG, well, I was going to say they were playing deep, but Demon 1's looking for a chance. Jin can't quite close that gap quick enough. And something, he actually came out of the TP. Oh no, he's still good for it. He's still good for it. And they're taking the grand tour. So it falls down towards Com, whose position could be pivotal, could be everything. They're gonna waterfall down, bounce once, and they're dead! Com! 3 back-to-back, and hello? Oh my god, Forsaken! As if he got that. But the time and the spike is everything. It's deep in enemy territory, and they're so unlikely to get away with any more. Trying to be a little naughty around the map, and EG keep 3 alive. The Spectre absolutely farms on the back of the Viper Wall decay here. Khan picks himself up, a couple of kills, 1 away from the pit already, actually. That's big. It's big work early. Yeah, a chance here even to have it to play into the bonus round here. I'm seeing the bite. He almost went for a phantom there. Didn't eventually commit to it, but Jorgamo buying a judge down to 0 makes me feel as if he's probably going to play a lot of judge this half. You think so? Yeah. Things we love to see. Well, he's in the right place for it, potentially. He can turn that flash, and he can! He keeps him at the doorway, can't get through. He falls off from this. First blood drawn instantaneous. That's Jin gone. Lots of that burst is now removed. The read is perfect as well. The PRX is going to go for the double satchel flash into showers. Demon 1 now played in on shore. Spotted though. Just to give up the angle for just a moment. Late usage of the trap will go through. Focus their efforts now onto shore. Hold up. Beautiful stun. Let's try and set Forsaken in motion, but let's come through to a kill.
Jogamo's movement is actually a treat to watch at the moment. Still holding a little bit of space, but PRX now starting to carve away at this A site, trying to find themselves some safety for a plant here, but the timing's not good enough. Great trade for Demon 1, Forsaken and Mindfreak trying to break the back line. That is the critical kill. Taking away Boostio opens up this map. They should be able to get a safe plant down. Now, yes, the Vandal fell into the hands of Ethan here, but this is a lot to ask. He's going to play ahead of the volley, denies the first attempt at the plant, a quick flash follow-up. And now you look towards Com. How much value can he get? Not very much. They've taken the TP, they want out of there. No smoke though, and no molly for Mindfreak. It's only a stinger though. I mean, that snake blast should land. It has. It's just outside the orb though. Have to tank a little bit more damage there. Flash to play for Ethan. Could try and maybe allow Com a chance to close the gap, but look at the creep coming in as well from Mindfreak, slowly working around by CT. That's a very favorable fight for him. The flash was, oh my god, the combination, the fake flash, forcing him away, allowing Com the angle, but something still standing. Remember what he was doing on that last map. Remember, this man is a straight up killer. Oh, but he ain't got it now. Ethan and Com, what a combination from them. The fake flash is just beautiful. And Com still lands pretty much every shot with the stinger from that distance. Mindfreak has to be seething after that one. But a beautiful round from start to finish by Ethan. And the play outside the showers ahead of the molly as well. To give EG the bonus conversion here on Bind. Operator in hand for Demon 1 as well. Quick to it on the other side. Full buy, and the ults are very close here too. Plenty on the cusp. Blinded. We'll find members here. Same sort of attempt here with the stun and the flash. TP up long here as the pistol round. Oh, Forsaken's He's got the ult. Yeah, he can investigate right away inside. They can't clear him, so okay. Apparently Jin can. Yeah. Yeah. Shoot my body. Come clear him, but Ethan still with a chance to do some damage. Great trade and a great follow-up. The two remainders in a lot of trouble here, but Jorgo's gone a little ahead. Now, it looks like Mindfreak's keeping a little bit of a watch towards this. Demon 1's not all that invested just yet. A kill. He's got the paint shells and the showstopper online here. Oh, Mindfreak though, very sharp to find it. Demon 1 has to hold on to this operator now. The PRX will find themselves first round here on Bind. On the back of Forsaken's info gathering on the Yoru. Teleport's ready. That's not ready. A gift. Forsaken doing wonders there. As soon as that Viper pit came up, it was just It was instant, yeah. He knew what was going on, and I've got to say, bigger picture as well here. This is going to be a really tough game for Ethan too. You saw that pressure on Long, the amount of utility that's almost tailor-made to catch him off guard. He's going to have to find a way to handle this, because we saw it in the pistol, we've seen it led back to here. Now obviously that's with the supplementing, the ults coming in and everything else, but just straight on through. Yeah, it's tough as well, because Com doesn't want to completely disengage here and allow the pit to fall, but he's in a spot here where it's very easy to wallbang. Yeah. I mean, the only real spot there behind default where it's kind of reinforced, but even then it's risky. Not many options. Still with a purchase, but you're going to see some pieces missing. Ethan on one side of it, down to SMG. Judge back out for Jorgamo, but it feels like he's wanting to run that, but you're looking at the rest of PRX, who are now stabilizing a bit here. Seeing the lean forward from Demon 1. But the pressure once again, I'm looking at this B site, they are going to be tested time and time again here. PRX making no subtleties of this. Team 1 off the showstopper, found himself a kill. Ahead of things here, going to follow up the Trailblazer. They're going. Satchel through. Oh, this Tons of man. space created. Com's found the kill. Com over-delivering, and Ethan trying to keep his head down. Jorgamo dives in, tries to save his boys. But now the spike left in the hands of EG. Device surrounded, he can't get away from it. Boostio the one to put him down. Forsaken overwhelmed. EG respond right back. EG playing with a very different pace today. Across the board, different approach. Happy to take these scrappy engagements, go blow for blow with PRX. We'll force a timeout here with a 4-1 scoreline.
PRX going to be left scratching their heads. Yes, you hesitate. There is a chance for PRX. They will. But, yeah, I was going to say, if Mindfreak keeps the Sheriff, Okay. he swapped out to a Stinger, they are forcing. Yeah. They've got ult, maybe a little set piece in mind they want to bring through. With the ults they have, I don't mind it so much, but again, I don't think any phrase could be more applicable than high risk, high reward. They need a bit of this to work out, otherwise it's 5-1, you've wasted your ult, your money's in the bin. It's the trademark of PRX. Yeah. And a big adjust here, 4 players stacked towards A for EG. Com will hear the boom bot. Curious of what information he's relaying. You can already see Boostio headed back across. I mean, he can sort of just play in spawn if they have something incorporated around the orbital story. Yeah. Look at this. I thought Jorma was going. Yeah, I know. I'm just like, wait, is he actually pushing this one? The flash turn, Demon One back to it. The paint shell, look at the damage that could have done. Already doing a lot. The player who's slipping forwards, Ethan. Sat in the corner, set into motion by Demon One. That's his chance to escape. They've done serious damage. Forsaken now, left in pieces. And PRX have the opportunity closed in this round. Where do they pivot to? They don't have the smokes left now. They haven't achieved anything on the back of the window created of Mindfreak smokes being invested. The flash didn't catch. But look who's here, Jorgamo, get out of it. Cleared, fantastic from something. Next in line, Ethan, this is when the ults become critical key. Counter flash comes in, but the ult gets popped. How's Boostio standing? That look to his feet. Not to be, and the follow-up. So clean with it, Mindfreak now next. Where's Divide? Trying to invest to flash. Great work for PRX. 10 seconds though. They got to get it done now. Plant going to come down and Demon One is watching. Eyes trained on this. Mindfreak looking for a fair fight, and there's not much fair about this 1v2. A molly to play, and a shot missed. A quick slip out though. Mindfreak gets to reposition. Still not certain about Com. 8 bullets. Has to find an opening headshot potentially. He's trying to play a little ahead here. A little bit of a gap to play with, not much, and that gap has been closed. He had to try, and try as he might. EG playing in unison. A nice attempt from PRX, but it wasn't enough to keep control of the map. I mean, it's just heartbreaking that Com still at this stage of the round, there's 2 snake bites to force him out of the corner. Beautiful stuff. Boostio's first shot. Yeah. I mean, this was a headshot as well, by the way. Something. Yeah, Boostio shutting down the showstopper. Down you go. That was a force up. That was, I think, what, 2 of the ults, showstopper there and Rolling Thunder, right? I mean, we have investment again as well, but Divine and Jing have brought down to 302. It just feels a little desperate right now. This makes for very uncomfortable viewing if they don't find a round here, Laurie. See the pressure starting to be building towards the side. 4 players stacked in for EG though. Jorgamo denied on the first try. Jing gonna pick up the mantle. Com though, just stunning in his work. Jing with another essential trade, gonna keep some safety on the site to maybe facilitate the plant, maybe not. Denied this time by Boostio. Pausing for thought as Ethan can now come back around. Something's in danger. He's so low HP. Smokes have dropped as well. Gives Ethan a little bit of an advantage in this situation. That's big from Jing though, identifying the position still. Demon One's still got to do work here. They've got something pinned. And a flash in play for Ethan. Who moves first? Trying to isolate towards Ethan, but Demon One's got him.
Catching that crosser now, Jing with it all to do. Oh, he's found the first, but the follow-up. Oh, up and over he goes. The Demon One puts him down. PRX unable to strike back on the board. Beautiful way to close out. Demon One starting to land shots now with the operator. Com goes huge under so much pressure after Jorgamo falls. Still here to, again, counterbalance this, gets Forsaken and Devi in this situation. Like I said, PRX, unfortunately, it's another example where even in that 20-second window with Mindfreak smokes down, they don't get the plant in. The despair starting to show on the coach cam. A 6-1 scoreline here for EG, who are looking dominant. Fake teleport. Forsaken trying to build that ult back up. Did well for them before. They're being cornered in. The re-aggress EG looking like they want to get into things as well. A 1-for-1 trade. Boostio lost and oh my god, Forsaken's gone down as well. Jorgamo's just unleashing fury. Look at the damage that man's doing. He just keeps peeking. Zero respect, pure confidence. And Com waiting. Smoke's dropped, as is Mindfreak. Devi now. There's nowhere that feels safe. A chance at a plant maybe. 48 seconds. How much can one man do? He would love a kill here. Devi creeping closer and closer. Oh dear. Oh Noted dear. here. 30 seconds left. But you got to feel like he has to have found a kill already, Lauren. Yep, and with Com slipping even deeper towards Showers, not allowing it to be easy, no one is giving Devi freedom. He might have to just take a... It's a gamble at this point. The flash, yes, he now knows there's someone in Shower, but Com, he's not going to let this slip. Look at this. This is just excruciating for Devi. He can't find these kills, and EG slip into absolute discipline as PRX slipping into despair at 1 round to 7. And a beautiful crunching Showers here. Utility comes flooding through. Said Jorgamo just keeps swinging. Refusing to back down. Yep. You like that hole, baby? You like that hole, baby? Will force another timeout here from PRX, burning both by round 9. They're struggling here. I mean, dare I say it's looking at the economy, being a little frustrated with some of the decisions in game. Sure. Because they're in a situation again here. It's going to be Stingers, Sheriffs, maybe. They don't have the same benefit with a similar purchase we saw a couple of rounds ago, but they have a showstopper and a Rolling Thunder off the rip. You're right. They have an orbital strike. What to find for Forsaken and Jing, sure, but that's the first hurdle. I don't feel like PRX have got past the first hurdle in a few of these rounds so far. No, they're definitely struggling to get that activation here. Not even seeing the individuals find that impact. Harder to make it work. Credit to EG for coming out looking fantastic, obviously, but this composition was a little bit of a surprise for us, and I don't even want to blame the comp on this either. It's not been the worst part of this. It's not been able to find what they need. And they go back in, and it's Sheriffs and a Stinger, Mike. 1 orbital strike. I don't know if they've got a pocket piece built around this. We maybe try and get Jing into a position here to find a kill for Stinger. You know, I mean, you know he's good for one. Again though, draws out the pain shell, the boombot, fault line. And Demon One's back on the angle already. I mean, he wasn't expecting somebody to be drifting back up this way. Oh. They're sticking around. They're willing to disrespect the utility and re-clear. The only surprise is Jing is going to close enough towards Jorgamo, and this 1v1 has been going generally Jorgamo's way. That's a nice change, and the flash is fantastic. Forsaken taking over the site now with the back of a perfect flash put into place by Devi. Plant now and the time on their side. A 5v3, a couple of upgrades here and there, but a chance made. You think they're going to catch Mindfreak on the way back out? 3v4 now for EG.
Oh, this angle. Jing could absolutely shut this down. Oh, he's spotted though. He might have just lost that chance. And Forsaken's found team one. This is much better though. Forsaken activating something's there. PRX adjust. Off the back of some wondrous work coming in towards Lamps, clearing on through. Beautiful. Outdoing Jorgamo, forcing him away. I mean, a lifeline here, Mike. Definitely a lifeline. A very slow approach here. With a lesser purchase will net them the first round since round 4. But EG not necessarily feeling the heat in that regard. Financially, maybe. The ultimates here, just missing one for a full deck. Ethan one away from the Seekers already, the pit. Invested here. Shut down towards B long. PRX testing the waters. Steven's anyone willing to take the bait towards Showers? Not the case. Ethan sees nothing. Obviously, going to note the shots, but that's about it. Now they've got to try and figure out where this PRX side is going, and it's cautious and it's slower. This is very uncharacteristic for PRX, obviously. So, do they dare challenge towards the pit? Surely not. Who's next? Forsaken, we're going to pave the way here. A D1 spotted a junk peak. Trailblazer will come through. How long is he standing on this man? He does have. Oh, Forsaken outdoes him! TP on the TP, and Forsaken gets it right. That's the side where. Oh my god, the counter. The ults right on top of each other. Going to deny the plant, going to come through, but Jing holding the line, defending this with his life if he has to. They want to get that plant down. Backline, though, going to be tested by Com as well. Oh, Paint Shopper! Paint Stopper! Oh my god, this is ridiculous. They paused. They paused for a second. Is there a plant? Can Com deny this? I'm seeing the jump up as well. Jorgamo trying to close the gap. Something with a missed shot. MindFreak's got Com. Backline secured. The gap is getting closer, though. Divine now on the swing. He's got one and the second! Divine holding on to this. PRX barely making it out of that. I mean, clinging to life right now, putting everything on the line. These last 2 rounds. Yeah, just to get another 2 on the board. The TP from Forsaken. Just, come on. I mean, it's so well crafted. There was no escaping for Demon One. There really wasn't. Oh. I guess those 3 rounds were enough, right? EG have felt the pressure. No more of that. Barely any more rounds to run into this, but I mean, they've broken the money. Indeed, we talked about coming into that, they were 1 away from the Seekers, and that would have been a full deck in terms of the ultimates. Everything is thrown into that round. What do they have coming back out? Demon One can get a rifle. Ethan can buy. I'm looking at Boostio, who's going to be lacking. Tom might struggle. Obviously, Jorgamo down on the Stinger. He's been sitting with the judge, but still, this is far from ideal. And in a wild turn of events now, PRX have a little bit of a financial cushion, a buffer. Be wild. They've got a full purchase, no ults to depend on. I think they're 1 off from Seekers. A couple away from Rolling Thunder, but that's neither here nor there. Can they keep isolating these fights? They're going back towards the A side here. A 4-play stack from EG. Say, a typical utility, especially Jing's way ahead of it. Jorgamo shuts him down. Now they're going to lose Jing on this one. That's a problem. That's a rifle in hand too. A nice little upgrade. I'm getting curious. Does he catch any of the audio cues or note any of the players? Something will be leaning back here. That's enough. He's in trouble though, because they've taken towards long here. Forsaken's ahead of this and forced away the flash in unison. Buys him a little bit of time. Oh, and Jorgamo, come on. Nice shot, but something's got the trade. A 3v4. Keep in mind the weaponry, the flash to a device, something with a full kit here. He can be critical. He could change this game. But Ethan's aware. He's watching this. The flash through. Perfect from Devi. The site looking safer by the second, but Boostio on the way. And speaking of timing, that's the spike down. Molly to follow potentially. Come on the punish. And now MindFreak
Mindfreak in the 1v2. He's on 13 HP. What's he meant to do with this? Can he find Demon 1? Can he get the clean kill? He's trying to creep a little closer, look for anything, anyone to give him an inch, but they've taken a mile. EG turning it around in a Thrifty. Last round. What a crazy turn of events. EG respond with a round when they basically had nothing to bring in here. They have no right to find an 8th. Give PRX the Rolling Thunder, the Seekers for round 12 here. But EG gonna be loving that. What's the options now? And it looks like a pace change actually from EG. Straight down B long, but Jing's gonna take maybe the space. He's gonna surely hear this. Wait, they're taking a look, but they had no idea the amount of bodies behind this. So much presence down long, they didn't expect it to be 4 of EG. And the trade out is that Devi and Jing go down. I mean, the wild thing is, it's one of the few times you see PRX in some semblance of a default as well. Able to isolate a couple of players on the extremity here, but elsewhere, Mindfreak gonna get an opportunity to find some space on A. Com has just been playing contact towards spawn. So this is the plan all along for EG. But Forsaken could catch Jorgamo. The spike is tripped. Okay, could, but doesn't. And now it's on Mindfreak and something. And yes, Mindfreak's got space, but as you noted, Com has been sat here waiting for this the whole time. And look at it. Look at what's on the other side. Fully prepared, fully aware, EG. Handling this round near on perfectly. And something, it ain't happening. EG on the adjustment here, pumping those brakes right back at a 9-3. And it's such a beautiful read. Even after this, they find the opening 2 kills, they sit in spawn, they're happy to just concede the entire map and play towards their strength in numbers. So well done, and a 9-3 half here for EG, firmly in control of Bind, Lauren. But can they close? Can they get over this one cleanly? We know the fight in PRX. We know these guys can absolutely deliver when needed. But for now, a treat as we hand down to TenZ and GB. Hey everyone, I'm here with the one and only TenZ. Don't we heckin' love this guy? Yeah, we do. Hey buddy, how you doing? You feeling good? I'm feeling really good. Crowd's amazing. The matches are really fun to watch. Hope everyone else is enjoying it. Let's make some noise! It's great, right? Like, look, here, check this out. You can do, like, so long as you say something with confidence, right? Guys, can I get a yeehaw? See? All you gotta do is just say it with confidence. So you try, go ahead. Think of something. What? Lemons. All right, everyone, say lemons in 3, 2, 1. See, you just gotta be confident, TenZ. That's what it boils down to. Hey, I'm gonna get your thoughts real fast on this matchup. It's looking good for EG, but PRX have been known to bring it back in the past. Where are you thinking? Where are the chips gonna fall at the end of this map? So it's definitely looking like EG is going to take this map. PRX cooking up a really interesting comp. Respect to the Yoru. I love that. But yeah, it's looking grim at the moment, but I could definitely see PRX surprising EG with certain like set plays that they might have cooking up in the lab. So definitely have to stay tuned and we'll see something. Yeah, no, I have no doubt about it. Now, obviously, you know, prolific player in your own right, obviously wanting to have these opportunities yourself as well. Curious to know, what's the future for TenZ next season? Future for TenZ next season? I'll just play games. He just plays video games, baby. That's what it's all about right here. Give it up for the legendary TenZ. Appreciate you, brother. See, look at that. It was not that hard, right? We're going to go ahead and send it back over to the casters to get this show on the road and see how this whole baby's going to wrap up. Lauren, Hypoc, over to you. Thank you, GB. Always a treat to hear from TenZ there. And they've got to have a lot cooked up, though, if they want to try and catch back up on this scoreline. 9 rounds is a lot to close in on. They've got 3 to their name. A pistol would be the first step, right, Mike? They need to get this one going. Any plans they have in mind, anything they've cooked up has to come out from the very word. Do we see any form of aggression, any proactivity across the map? EG so far have looked flawless in terms of the reads, in terms of the setups. Even here, EG poised
just in case PRX do decide to put anything out to open up the round. Trap set up early, just the other side of the Viper wall on short, and looks as if EG might drift towards the B site. Okay, so it's Divide and Forsaken. Divide deciding against falling to what happened to Ethan, essentially. Trying to sit a little deeper. Make him work for this. Flash to stall, rotations on the way. 3 players trying to come on over, and Forsaken good for it. Fantastic fight. Bustio goes down, but Com does get the trade, but no follow-up. They've noted that no one else has come out. They still at least have one player watching this push, watching this cross. They've stalled out EG. So already Mindfreak looking to rotate elsewhere. 40 seconds left, so plenty of time for EG to recover the situation. The flash will come through. Here's the pop coming through. Yeah, good trades. Great work from Jing. Back-to-back kills. Keeping this looking good. Jorgamo, the last one alive and barely. Divide doing the damage for PRX. That's the pistol round they needed that could get them back into this matchup. It was very, very similar to the same round we saw from Evil Geniuses here in the first half. Able to create a little bit of pressure onto B side, but the recovery is there for PRX. Divide and Jing will combine. PRX set up here with 2 towards showers. The smoke will go down. Retrieval of the orb. Clone sent through. Something. Oh! Fatality on the push through. Fantastic. But now Bustio and Com trying to do a little bit of something, but I mean, Com's that's a lot to do with the classic. But maybe Bustio with the Sheriff could get another down. I don't know. They've got the spike back, like defended. They've got it to hand. I don't think Bustio's going to get much more play on this. You right? want to try and most expensive inventory here. Bustio trying to pre-aim the jump spot. That could have hurt. Oh, but so can that! That's 3. Now there's a little worry. There's the judge exceeding close by. They have closed the gap. They are literally around this corner. Something. Weathers the storm, gets him out of danger, and the scoreline's not looking so bad anymore. Almost want to see the bonus converted though, and with 3 kills coming through, we'll see how PRX do decide to carry. There's obviously the judge singing here for something in showers. But yeah, it does make it concerning, considering the deficit, the reliance on converting this bonus. Wondering how far Forsaken was going to take that, but it's double stack Tortuga that's getting my attention now. Jorgamo, easy. Be careful. It's a tentative start, caution being shown. Yes, an investment of 2 players here. Flash ain't going to really dissuade too much. Actually going to lean forward. Judge ready. Decides against sticking around too long. Scout destroyed. EG unable to pin anyone down yet on the side of PRX. Well, if I say that, Forsaken will fall. That's Demon 1. Dry up short, actually. I have the spike. That was the rifle. Fortunately, Mindfreak is close enough to be able to pick that back up. Filter it back through. And EG creeping closer. Spike is here. This is the commit. There's still 2 players on this site here. Molly going to go through Mindfreak, hoping that's going to dissuade them a little, make him a touch uncomfortable, and gives him a fight. Bustio gone at a 4v4. Jing on the back lines too, trying to wrap round towards this Mindfreak again. He can't do it again. Jorgamo's got him this time. And now they're looking for the plant. Do they try and close the gap now? Jorgamo trying to get ahead though, getting aggressive. And EG just clean house. Double digits found here. Bustio, the only casualty. I said you're pinning your hopes on a bonus round conversion here because there's still a bit of a gap for PRX to try and close. Where's that from? That can't be from in here, surely.
Is that a bigger reaction than 10's got? Yeah, I think so. Damn. Must be nice. 10-5. Focus back on the game now. PRX, another challenge for them. 10 rounds. This crowd's funny. Ready. I have the spike. I can't quite tell what they're saying, but No, I can't hear it through my headphones. No, thank God. Don't find the crowd. I need more side tone. For EG though, trying to indicate a lot of presence towards the safe side. You can see where the bulk of them are going. And there was a little bit of a glimpse behind that. Yeah, saw the TP. If anything, might sell them a little more, but you can see that this isn't being fully accepted. Forsaken tries to get ahead of that. That's not going to work out. EG get that first draw of blood here. And they follow through though. Stalled. I mean, baiting out, waiting for the rotation, allowing a couple more seconds to pass before committing to the TP, but something hasn't budged. Neither has Jing. Rolling. They've got the rifles. They've got rifles, they've got ults, and now they've got a couple of challenges heading their way. 25 seconds, EG need to stick the landing. And Jing standing ready. Paint shell over towards Showers, but he looks back towards Short. Forced a little deeper, he's got to be careful. And they're going around the map, they're taking the tour. They can cut off the rotation as well, 10 seconds left. The plant will come through with plenty of time. This will give the roll. Oh my God, the rolling thunder is going to cancel. He's got to get the plant. But Team one and Ethan on bodyguard duty, diving on in. EG standing up to the test, holding firm. That ult I thought was the end of them. I mean, it can't get sent any later. That was as late as they could leave it. EG play the timing perfectly here to have 2 chances to plant the spike. But it doesn't even matter. EG find everything they need. That's a prime gaming flawless. To put EG on 11. Let's go. Good. PRX back down to a broken purchase here. SMGs, a couple of Sheriffs, Forsaken's ult, but that's about it. As it stands, it looks like EG might be tipping those scales here. And now they're going to be forced The nade's perfect. further forward. And the spray, it ain't pretty, but the job's done. Jorgamo with 2, Boostio with the 3rd. Mind freaking something in a 2v5. EG taking that last map personally. Didn't like that activation coming out from something. Want to put him right back down. And PRX unable to springboard forward. Not gonna happen now. EG looking for their 12th, looking to get onto that map point. They want this, and they're gonna get it. Flawless round, prime gaming flawless to get them on the verge of taking the lead here. Back to back to find EG on map point. They have just elevated in the last few rounds. Looking to continue those same sort of trends we saw on Split, but they're happy to get aggressive, just look for an engagement and commit to it. And you mentioned that commitment earlier on. EG are doubling down. We're starting to see that come through here. Again, PRX do have a buy. They've got some key ultimates. This could be huge for them. A chance to deny, a chance to hold on. Maybe build back, who knows? But EG relentless. Look at this pace from Jorgamo. He wants this done. He wants the next map. He's looking at Lotus already. EG with 3 more to find. You want to play? Let's Body play. bag starting to get zipped up. Mind Freak looks dead to rights. He is. Oh, Jorgamo! Unbelievable performance. And now it's all on Jing, and it's not going to happen. D1 signs it. EG delivers it. They take the lead in the best of 5.
really struggled to deal with what was going on. They didn't have a great call. They were just sending it into the sights. Whereas this time it felt like the shoe was on the other foot. It was PRX actually that fumbled a little. Yeah, absolutely. I think this PRX comp might have been a little overcooked. I think a lot of this is set to do like anti-chamber things, like the breach stuns and the deep flashes and the teleports. We saw a little bit of that, but overall this wasn't prepped enough. It wasn't worked out enough for success for PRX. Yeah, and a big thing for me, I think, was those gun rounds as well, just getting one out across the board. I mean, just the fact that EG were playing off each other so damn well, and you could tell that the composition was a little bit undercooked, I think, by PRX in terms of them just running into this. It wasn't quite, you know, well-versed or fleshed out compared to some of the other stuff that we're used to, but the coordination is going to be a bit tighter. I've been super impressed, though, with Com throughout this entire run. I felt like he started out really nervous at the beginning. I was watching him in map 1, the way that he was taking fights. I remember a specific moment where he was struggling to be able to get around the corners. I mean, take a look at that all the way on the right. Game 1, dropping just over 100 ACS, really struggling. And then something awoke within him during Ascent. And on Ascent and Bind, he's been unreal. Yeah. I mean, Com, strangely enough, is actually looking like he could be an MVP candidate for the tournament because he was one of the players that got them to finals in the first place. I actually think that's a good take because everybody's talking about Ethan, Demon 1. Yeah. For me, if they're able to take this, Com would be my MVP. Yeah, I think that's very reasonable. I mean, the amount of clutches that this guy is winning across the board. I want to know what was said to him after map 1, in between map 1 and map 2, because it is a completely different game plan. But sometimes you need that, you know. Doesn't matter if you've been playing on the big stage over and over again. This is a very different feeling, I think, when you're into the grand finals. There's not many players on EG with that level of experience in terms of actually being able to perform here. I mean, they were there at Tokyo, of course, and they have earned a lot from that. Maybe that's part of it as well, and just being able to build up that resilience and being able to perform on the big stage. Yeah, the crowd here as well, as you guys can see as they're walking back out, they love EG. They've been cheering for them. But we have you, Paper Thin. You're on the desk. Okay. You are meant to be PRX's lucky charm. They are 2-1 down right now. Come on. What do they have to do? We are doing this for Jing now. We got to at least get to map 5. This is for Jing. At least one more map. At least one more. So we've got some, you know, nice little portraits here to see if we can give them a little luck. See if we can give the PRX boys a little bit more fight. Is this the good juju area? Yeah, this is it. Yeah. This is the no Achilles zone. It's like you stole it from his family home. Like you just got pictures. Pearl is here and she gave it to me. Yeah. But also, it really is like trying to do it for him, right? It's his last event potentially before he goes off to do military service. And also, they've been in this position before where they came into a grand finals, they had the map veto advantage, and they failed. In that series at Copenhagen, when they played against FPX, they locked the Breach and the Yoru alongside the Neon to try and make something happen in the final map. On Breeze, towards the end, everyone was going, this is a wild comp, what's going on? And they weren't able to make it happen. And I feel like I got glimmers of that on Bind again, where maybe they're trying just a bit too hard to close it out and make it come home for them. Whereas instead, if they're just loose and they allow their players to find those individual moments the same way EG are, that might be a better strategy. And that's why I was concerned with something going off the Reyna, because he was really starting to heat up on Ascent, going over the behind, you know, this guy right here. He is absolutely, he's doing great so far, but yeah, we need to do it for Jing. But really, I think going back to the comfort picks here for PRX, I think is probably the better strategy for the rest of this. This sounds stupid to say, but they are such a vibes-based team as well. They don't have a dedicated IGL. They are all about, in terms of the confidence they've got, and Alex calling, you know, a lot of their ideas for them. We know how impactful some of the timeouts are when he gets involved with it. You can just tell it's just the way that their team structure is set up. They are so unlike any other team that we really have in just VCT in general. And I think big knocks to the confidence like we just saw in Bind, it's so damn important now to pick yourself back mentally and get back into it. I mean, is that the soul? What do they have to do on Lotus here to make sure we at least see a map 5? Well, we don't even, at least I don't know exactly what composition they're even going to pull out on Lotus, because they've been trying different stuff over the course of not just this tournament, but, you know, their last few iterations on this map. Whereas EG, they've just made small adjustments and came out and brutalized Loud on here, the team that took down Fnatic. I mean, they have worked on this map. We've heard it from Potter, how much work and effort they've put into making their Lotus not a detriment and making it a real strength of their map pool. So I'm concerned. PRX here need to come out with fire. I'm not sure it even comes down to any large picture strategic things, so much as the individuals feeling it and wanting it and bringing their best when it